Hello, 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 chat. We are live for day number 6 of the Uzbekistan Chess Cup 2025 भाई। दुनिया हमें रोकने की कोशिश कर रही है, हम नहीं रुकेंगे और हम प्लेयर्स को कवर करते रहेंगे भाई टिल द वेरी एंड। एंड चैट, आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज हमने जैसा देखा कि भाई कल अर्जुन जीते एंड टू इंडियंस लॉस्ट, बट कैन वी कवर अप टुडे? एंड ऑफ कोर्स नोदर बेक इन सो लीड राइट नाउ। निधि भाई, कैमरा चेंज नहीं हो रहा है अभी, प्लीज डू चेक। आई एम एरिगेसी अर्जुन बोर्ड राइट नाउ। चैट वेलकम। मेरे गले की बैंड बजी है, बट होपफुली इंडियन प्लेयर्स आज मेरे गले को बढ़िया कर देंगे भाई। कि मतलब इतनी मस्त गेम खेलेंगे कि भाई चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी होपफुली, एंड इट विल ऑल बी ऑसम। चैट शीन जरूर लाइक कर देना। लेट्स गो ऑल इन। वी आर वेटिंग फॉर द गेम टू बिगिन। लेट्स होप सो कि भाई सब चंगा रहे। क्या हाल है चैट? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हाल चाल? कैसे हो भाई? एंड वी आर ऑल सेट। सो फिलहाल के लिए प्रग नंबर 4 ऑफिशियल चेस, योर थॉट्स साहिल भाई? um I think that's very interesting. Freestyle chess में I think Arjun has played well, Prag का भी has played well, Gukesh hasn't, but that's very interesting. कुछ कह रहे हैं? हाँ, okay. So let me try now. प्रग का बोर्ड आ गया है, अब मैं अर्जुन के बोर्ड पे जाऊंगा और अभी राइट राइट, सॉरी 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 सॉरी, आई सॉरी 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 सॉरी। इज इट फाइन नाउ? अब ठीक होगा। हाँ, अब ठीक होगा। अब ठीक होगा। लेट मी स्विच टू प्रग। या ऑसम ऑसम, वी हैव स्विच्ड इट नाउ। आज 2/5/3 होगा भाई। मैं पोल लगा रहा हूं, अभी की अभी पोल लगा रहा हूं। लेट्स सी कितने पॉइंट आज इंडियन प्लेयर्स के बनेंगे। पॉइंट्स फॉर प्रग, अर्जुन एंड अरविंद। विल इट बी 3/2.5? विल बी 2/1. नहीं, 2 आई थिंक विल बी। आई थिंक रुको, आई थिंक ऐसा होना चाहिए। आई थिंक दिस इज मे बी बेटर या 1.5। हाँ, समथिंग लाइक दिस इज बेटर। आई थिंक 1.5 एंड देन 1/0.5। जीरो में तो हम खेलते ही नहीं है भाई। ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते कि इंडियन प्लेयर्स के जीरो। सो लेट्स गो चैट। वो कैमरा अभी आ जाएगा मेरे पास एंड गेम स्टार्ट हो जाएंगी। अर्जुन के वाइट है अगेंस्ट सिंधारोव। देन वी हैव अरविंद अगेंस्ट वोकिडोव, एंड अरविंद के लिए दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैट। ही हैज टू विन टुडे। आई थिंक जो उनकी फॉर्म रही है, इट्स नॉट बिन द बेस्ट, एंड कहीं ना कहीं पे कपल ऑफ गेम्स ही इज लॉस्ट, एंड उनको ये लोएस्ट सीट को आज हराना ही पड़ेगा इफ ही रियली वांट्स टू कैच अप इन दिस इवेंट। अदरवाइज इट्स ऑल डाउनहिल फ्रॉम हियर। एंड ऑफ कोर्स देन वी आल्सो हैव प्रग हु सफर्ड अ शॉक लॉस टू मकसूदलू yesterday. आई थिंक बहुत क्लोज थे वो, I think, to kind of cover up, but yeah, he just missed it. Why is UZCHESS being so? I have no clue. भाई, मुझे zero idea इसके बारे में। ऐसा क्यों है? होना नहीं चाहिए, but God knows यार। I think we'll figure it out कि क्यों ऐसा हो रहा है, but yeah, let's see क्या होता है। अपन रूल्स फॉलो करेंगे भाई, दैट्स व्हाट वी कैन डू। एंड मीनवाइल चैट, द प्लेयर्स अराइविंग सून। एंड रैपोर्ट के अगेंस्ट प्रग खेल रहे हैं। रैपोर्ट नॉट इन ग्रेट फॉर्म, 1.5 पॉइंट्स है रैपोर्ट के इस टूर्नामेंट में। सो प्रग के पास एक सुनहरा मौका टू गेट बैक हिज लीड। एंड नॉट टू फॉरगेट नोदिर बेक हमारे लीड में है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या रहेगा उस बोर्ड के ऊपर, बिकॉज याकूबोव नोदिरबेक इज नॉट द सेकंड लोएस्ट सीड इन द ओपोनेंट। सो नोदिरबेक अब्दू से तरफ चाहेंगे कि मैं ब्लैक से जीत जाऊं और टूर्नामेंट ऑलमोस्ट सील कर दूं। तो अरविंद की गेम स्टार्ट हो चुकी है चैट। वी कैन सी स्पेनिश ऑन द बोर्ड, ऑन द अरविंद बोर्ड। भाई अरविंद गायब है लेकिन मूव्स आ रही हैं। दैट इज that is amazing, actually. So players have found a way to play chess from their homes. Clearly, chats and board is symbolic, clearly, because I can see moves on the board. Prag के कैमरा अभी हो चुका है चैट। D4 ऑन द बोर्ड बाय प्रग। अर्जुन की पे वी हैव द क्वींस गैम्बिट। D4 D5 C4 E6, दैट इज E6, ओके C6 सेमी स्लाव। एंड चैट यहां अगर DC4 आता है तो एक क्रेजी लाइन होती है। बॉटविनिक वेरिएशन को बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक भाई। ओ हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइंस इन एंटायरिटी ऑफ चेस। बट ऑफ कोर्स ब्लैक जस्ट प्लेस नाइट D7, एंड यहां पे हम काफी सॉलिड सेटअप में आ चुके हैं फिर से। अर्जुन ऑरा इज मेकिंग द मूव्स, दैट्स ट्रू भाई। अर्जुन की ऑरा। एंड मैं आ गया हूं फिर से। वेलकम चैट भाई। वही टिक्कू, वही बोर्ड, वही वो। कैमरा गायब है, हम 15 मिनट डिले पे चल रहे हैं भाई। व्हाट अ क्रेजी स्ट्रीम ब्रो, मजा आ गया भाई। वही Abdu has more consistency than Fabi. Yeah, I disagree.
भाई कंसिस्टेंसी और फैबी एक ही शब्द एक ही लाइन में आते हैं भाई। फैबी से ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर सिर्फ मैग्नस ही हो सकता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो आई थिंक फैबी इज द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ब्रॉडकास्ट डिले एज पर FIDE फेयर प्ले रूल्स, आई नो भाई, बट दैट्स व्हाई आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई somebody can stream without delay, but yeah, मुझे पता नहीं है, we'll figure it out, क्योंकि अदरवाइज कहीं भी स्ट्रीम लाइव जाए पहले तो फेयर प्ले रेगुलेशंस तो पानी में गए ना। एंड फ्रॉम माय एंगल, इफ दिस इवेंट does not get rated for the FIDE circuit for some reason, तो अपने प्लेयर्स का नुकसान है। So that's what I'm really worried about. And of course भाई कि भाई हमें लाइव रहना है। CD5 मार दिया है by the way, and ED5 very interesting by अर्जुन। यूजुअली यहाँ पे प्लेयर्स D5 नहीं मारते, but he goes for it. And ED5 आया, and now E3 यूजुअली ब्लैक के लिए इक्वल माना जाता है। ब्लैक विल नाउ प्ले बिशप E7, he will castle, and कोई मजबूरी ब्लैक की पोजीशन में नहीं है। हम एक टिपिकल एक्सचेंज स्लाव कार्लसबाड स्ट्रक्चर में आ चुके हैं। ये कार्लसबाड है कौन? और बाद में क्वीन A5 बाय ब्लैक, सो ट्राइंग टू कंफ्यूज एरिगेसी अर्जुन। नॉट टू फॉरगेट, सिंदारो भी बहुत तगड़ी फॉर्म में इस टूर्नामेंट में, इतना आसान नहीं होने वाला है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे नाइट D2 I think is the move. And क्या पता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग ओपनिंग है। When I played an international master for the first time in my life, I think it was IM हिमांशु शर्मा, I think. उस टाइम पे वो IM थे, अब GM है। मैंने कभी मेरी रेटिंग भी नहीं थी उस टाइम पे। And this is the opening he played against me. And I think ऐसा कुछ था, I think C pawn था and E pawn था, I had not taken. And मैं नाइट D2 मुझे पता नहीं था, मेरा यहाँ पे कुछ टैक्टिक्स से ये बिशप हैंगिंग रह गया भाई। तो इतना दुख हुआ था ना भाई, पहली बार IM से खेला और पीस बनवा दिया भाई, लिटरली इन 10 moves. So बी वेरी केयरफुल। बहुत ज्यादा यहाँ पे हैंकी पैंकी चीज होती है, बट ऑफ कोर्स नाउ यू हैव टेकन ऑन D5, सो इट्स नॉट रियली पॉसिबल। एंड भाई लेट्स गो फुल स्क्रीन अगेन। आई वांट टू सी अर्जुन एक्सप्रेशन आज ही, फिगर आउट कि किस मूड से अर्जुन आज आए हैं, बिकॉज कल जीते, क्या आज भी वो जीत पाएंगे? कैसे हो भाई? भाई कोल्ड से ही हो गया तो गला खराब हो गया भाई, कल बहुत चिल्लाया हूं मैं अपेरेंटली, ऐसा मुझे रात को समझ में आया जब गले की बैंड बज गई। तो गना भी अ बिट स्लो टुडे, बिकॉज चैट डोंट फॉरगेट कल बुलेट चेस चैंपियनशिप भी चालू हो रही है। एंड दो ही लोग इतनी मेहनत करेंगे भाई, एक मैं और एक अर्जुन। बिकॉज अर्जुन भी दोनों खेल रहा है भाई। अर्जुन ऑल्सो प्लेइंग उज्बेकिस्तान चेस एंड देन ऑल्सो बुलेट चेस चैंपियनशिप। सो अर्जुन भाई हाई फाइव भाई, वी आर इन द सेम बोट, करेंगे मेहनत भाई, दोनों में खेलेंगे, डोंट वरी। रेस्ट डे नहीं है स्टूडेंट भाई, रेस्ट, नो रेस्ट फॉर द प्लेयर्स, नो रेस्ट फॉर द कमेंटेटर्स, नो रेस्ट फॉर द प्रोड्यूसर्स। एंड मीनवाइल वी आर गोना चेक आउट द गेम ऑफ प्राग की वहां पे क्या हो रहा है। बाय द वे रिचर्ड रैपोर्ट अभी आए हैं बोर्ड के ऊपर, थोड़ा लेट आए हैं, स्वेटशर्ट उन्होंने पहनी है। सो मेरी तरह वो भी शायद लेट उठे आज, बिकॉज रात तक वो कुछ वीडियो पे काम कर रहे थे। सो ओके, ओपनिंग पे काम कर रहे थे वो लोग, बट ठीक है स्टिल। Gukesh Fabi World Championship depends on Fabi's form. If both are playing their peak, Gukesh is cooked. I would disagree. Gukesh का जो पीक है वो ओलंपियाड में हमने देखा। अगर गुकेश यानी पीक पे खेलता है तो आई थिंक ही कैन इजीली, लाइक नॉट इजीली, बट ही विल बी एटलीस्ट इक्वल टू फैबी। लाइक इन दैट ओलंपियाड आई थिंक जो गुकेश ने खेला, ही कुड हैव बेट मैग्नस इन दैट फॉर्म। सो आई डिसएग्री। आई थिंक पीक पे तो गुकेश को कोई स्ट्रेस ही नहीं है। आई थिंक एवरेज फॉर्म देखी जाए तो आई थिंक मे बी फैबी विल बी अ स्लाइट फेवरेट। दैट्स वेयर आई एम अ बिट मोर वरिड। बट फिलहाल के लिए चाहे D4 नाइट F6 बाय रैपोर्ट। सो ये गेम चालू ही हो रही है, विल कम बैक टू दिस सून। एक नजर मारते हैं अरविंद के ऊपर, जहां पे एक स्पेनिश ओपनिंग है। एंड जैसा मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट गेम फॉर अरविंद। ही कैन नॉट मेस दिस अप एट एनी कॉस्ट व्हाटसोएवर। उसको ये जीतना ही पड़ेगा इफ ही वांट्स टू हैव एनी चांस ऑफ एंडिंग अप विद अ गुड टूर्नामेंट हियर, बिकॉज राउंड 6 आ चुका है, 6 7 8 9 4 राउंड पेंडिंग है, एंड ही इज प्लेइंग द लोएस्ट सीड। ही नीड्स अ विन हियर टू गेट बैक हिज कॉन्फिडेंस, गेट बैक हिज रेटिंग एंड ऑल्सो हिज रैंक। So बहुत important game for Arvind, and he looks a bit confident right now, but let's hope so he can convert. Vokidov, of course, also not having a great event at the bottom of the table with 1 point. So going to the Arjun game, जो आई थिंक फिलहाल के लिए स्पाइसी है, एंड अर्जुन क्लियरली सरप्राइज्ड बाय क्वीन A5। इट इज अ सरप्राइजिंग मूव टू बी ऑनेस्ट। यूजुअली क्वीन A5 यहां पे नहीं खेलते। यू प्ले दिस व्हेन द पॉन इज ऑन C4 एंड पॉन इज ऑन E6, क्योंकि डायनामिज्म रहता है यहां मारने का। अब वो है ही नहीं, तो क्वीन इज नॉट रियली पुटिंग प्रेशर हियर, बट या इट्स स्टिल अ प्रीटी नॉर्मल मूव। नाइट D2 यहां पे मेन लाइन है। आइडिया होता है कि आप नाइट E4 रोकते हो, एंड यू ऑल्सो अनपिन योर C नाइट। That's an idea. You could just play bishop D3 or queen C2 as well. Very logical. Black यहाँ knight E4 खेलेगा, bishop attack करेगा and कहेगा मुझे bishop pair दे दो रे. And that's the point of queen A5 really, yeah. But not ideal, of course. White usually slightly better रहता है in structures में. But of course, it's not like a winning advantage or anything. That's why black played it. And अभी के लिए लग रहा है black की preparation में हम हैं, because look at the time on the clock. Arjun 6 minutes behind, which is very rare. That means हम अभी सिंदारोव की प्रिपरेशन में है।
Guys, I'm telling this once again. Tanya said Gukesh is in classical, not top 5. I don't think so, yaar. I don't think so. Tanya would say that. And kuch hoga to context kuch different hoga. I mean, I've interacted with Tanya a lot, and Gukesh ka, I think she's one of the top fans of Gukesh, jahan tak mujhe idea hai. Literally top 5 fans of Gukesh in the world. Maybe that's the correct statement. So I disagree there. Very unlikely. Arjun is challenger, then it'll be difficult for Gukesh. I think personally, Arjun has a great record against Gukesh. जो मैंने देखा, like in the first, they had a 5-0 record, 6-0 record. But Gukesh has broken the firewall. He defeated Arjun the last time. So maybe, it's not going to be as crystal clear now because आपने एक बार कोई चीज accomplish कर दी ना, next time it becomes much, 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 much easier. So it's going to be a tough fight regardless. And don't forget, Gukesh is practicing right now. I can tell you as a world champion, उसको फ्री स्टाइल में इन्विटेशन आया होगा, उसको 10 टूर्नामेंट्स में इन्विटेशन आया होगा. Everybody wants to see the world champion play at their event. Like he must be saying no to 10 times the tournaments than he's saying yes. तो क्यों नो बोल रहा है? वो पैसे को, रेटिंग गेन करने के चांस को क्यों नो बोल रहा है? He's practicing. He's trying to become stronger. जब imagine you are Gukesh, मैगर से बोला, Gukesh is very strong and he's maybe on track but not ahead of track. There's nobody who's the GOAT right now. That should be the most motivating factor for Gukesh. And the fact that he couldn't win in that last round against Fabi, वो हार गए, उससे ज़्यादा motivating factor उनके लिए हो ही नहीं सकता. He did beat Magnus. That gives him confidence, but he also lost a few games. That gives him motivation कि भाई अभी मुझे और आगे जाना है. So he's practicing right now. वो मजबूर नहीं है multiple tournaments खेलने के लिए just to qualify for the candidates. That's a luxury he has, and he's going to utilize it to become stronger and stronger and stronger. कई लोग बॉडी बिल्डिंग की अभी वो शो में है और वो अभी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है. So yeah, Vegas, though, exactly, I think he must be practicing, yeah? I don't know the exact reason. I can only speculate, but maybe it's because the US बहुत दूर भी है, takes some extra time, and maybe he wants to just work on his chess right now. And maybe his focus is, you know what? I have to defend my world champion title next year. Freestyle की और मौके मिलेंगे. Let him focus on, normal chess for now. It could be multiple reasons, yeah? God knows. Exactly, Rumai. There's no way. I know how Tanya, feels of Mukesh. Yeah, so she's probably the top 5 fans in the world. So there's no way she said that. And anyways, chat filhal ke liye, Max Arjun is like, young Ivanchuk, what's your take? I have not seen young Ivanchuk too much. Like, even though I've been playing chess at 2000 and I think 6 or 7 maybe. But kahin na kahin pe, what happened was ki us time pe Ivanchuk was already not that young. The earliest memory I have is that of that video, yeah, Vishy versus Ivanchuk, जहाँ पे Matin one Ivanchuk ने miss किया था. So not sure. Like Ivanchuk is always an exciting player, but whether he is similar to Arjun, I'm not exactly sure. By the way, Bishop D3 and Knight E4 played, and now Arjun has a choice. Does he want? Actually, he doesn't have a choice now because if I try to save the bishop, Black wins a pawn. I mean, you can play Queen यहाँ पे, but oh, even here you have Knight A2 actually. Wow. Queen A5, Bishop B4 check. Oh, that's very interesting. So you can't really defend the pawn. So I think Bishop dena padega. I think you have to castle here and then Black takes the bishop. I take the bishop. Knight F6. Is White better here? Not really sure. Yeah, not really sure. Because Black ke paas bishop pair hai. And if Black castles, Black could be better, to be honest. So Black playing an ambitious line here. And Arjun को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. And chat, if I'm speaking a bit slowly and taking more pauses, and if my energy is missing a bit, yeah, my throat is basically gone. So I apologize, भाई कुछ कर नहीं सकते उसका. इससे पहले कि डॉक्टर के पास कल जाना पड़े, better to be, pragmatic there. Started playing chess before the birth of occasion. Oh my God, भाई इतना old मत feel कराओ भाई. By the way, Arjun has castled. Great move, very logical there, and puts his king in the corner. And now, of course, if you take here, I think bc3, queen c3, I think this is very risky because I can play rook e1, threatening e4, and you will basically not be able to castle. It's impossible to castle. Bishop d6, for example, e4. And if you castle, for example, then e5, bishop back, already rook e3, threatening bishop h7, check, winning the queen. Queen ko wapas jana padega. And then knight h4, queen h5, rook g3. It's basically checkmate. Like you can resign as Black here. So that's why I think you can't really take the knight on c3 here. You have to take the bishop. And that's what Black has done.
I want to beat Magnus saying won't be possible. Karan bhai, dekho, he has beaten Magnus already once. Now it's not just about beating Magnus, it's about becoming stronger. Like, even though he bet Magnus, we still understand Magnus is the stronger player, right? And you want to get stronger जहां पे आपकी rating इतनी high है कि you are a real contender to Magnus's world #1 title. That's what Mukesh's next goal is. He's achieved everything else. There's nothing remaining. उसने फैबी को ही ओलंपियाड में ही 2 बार हरा चुका है, हिकारू को हरा चुका है. So the main goal for Gukesh now is to become the GOAT. Because he's become the world champion so early, like Fabi up tak being in his 30s has not achieved it because Magnus was there. So Gukesh has gotten the world championship title. So the only thing remaining is becoming the GOAT. And that's what would motivate him, right? And maybe that's why, he's declining many, many wins. And अगर Magnus को हराना ही है, तो there is the Zagreb GCT event जो अभी आने वाला है July 1st week में. So he can beat Magnus there. Who's Ara? भाई ये हमने गाने के लिए रखा है. बोलो आरा आरा. अरे क्या भाई, कोई वो एरर है भाई, छोड़ दो ना भाई. It means Arjun. Yeah, Arvind. I don't know. What do you think about Pragg's form this year? I think it isn't much, much better than last year. 2023 was basically Pragg's year. That's when we thought he would be the next challenger to, the world championship title. And it was a dream year for Pragg. But then 2024 May, I think Gukesh and Arjun kind of outperformed him by a big margin. And Pragg had a decent performance, but the candidates made he played well. Olympiad, he played well. But it wasn't spectacular because Gukesh and Arjun just kind of steamrolled everybody in the world. So now Pragg, I think, is back. In fact, so far this year, if you look at the Indian youngsters, Pragg has had the best 2025 so far. But can he finish it off? Because even though he's played well, साल के सबसे बड़े इवेंट अभी आने बाकी हैं चैट. अभी वर्ल्ड ग्रैंड स्विस बाकी है, वर्ल्ड कप का बाकी है. So unless he plays well there, it might not turn out to be the ideal year for him anyways. If Arjun Sagar is like 2600s, he will become Magnus. Exactly, Shivam, but I think you summed it up better than I did. Like, you want to be Magnus, you want to be at that level, जैसे Magnus 27 को धोता है ना, वैसे ही आपको 27 धोना है. And that's Gukesh's next goal. He doesn't need to play every event. So Arjun now getting up. I think Black का main target उसने achieve कर लिया. And this is where he has to now think, can I even castle, bro? Because Bishop, Knight, Queen coming in, and E4 in the air, there is some, temporary pressure on the Black King. For example, chat, question for you. Let's say Black plays h6. White to play. You want to kick the Knight. What is the best move for Legacy Arjun? Come on, chat. Can you kick the Knight away? Kaun nikalega? Do you think people, Gukesh, if he's someone takes, I don't think so. It's impossible. Yeah, he's 19 years old. So you have to understand that even if he loses the world championship, he will get another chance. Like, you will not forget about Gukesh, Pragg, Arjun in the next 5 years at least. It's very difficult. Unless chess itself becomes learned. Yeah, people stop playing classical chess for some reason after Magnus retires, yeah, Hikaru retires, but that's unlikely. People will not forget about Gukesh, Pragg, Arjun. Knight F2. So I know तुम Counter Strike के fans हो, and but अपने pawn क्यों मारने हैं भाई? Yes, you are correct, by not alien gambit, by beware. Knight f7 is a move, but it's not that great because check के बाद I can go to e7, and afterwards dark square bishop नहीं है. Instead, you can directly play queen h5. And अब क्या है कि ये hanging है ही नहीं because I can take the rook, and I'm playing this without any stress, and there is no way to actually defend f7. So this is completely lost already. So that's why I said कि black पे temporary pressure है. If Black can castle, let's say, plays knight f6, queen c2, let's say bishop e7, you can already see even f4 now is strong. So it's not easy for Black to just develop and castle. Agar Black ne castle kar liya, मान लो white doesn't do anything. Bishop e7, a3, castles, rook c1. Just going with the normal moves. h6, knight f3. This is what Black wants. This is a dream position Black. And dono bishop hai hamare paas. And only Black can be better here. Okay, it's still equal, of course. White is solid. But this is not what White wants ideally. So you want to create an initiative. आपका knight already आधा रास्ता जा चुका है. इसने कहा है कि भाई मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट करूंगा. तो अब तो बिजनेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा. अब तो बिल गेट्स बनना ही पड़ेगा भाई. ऑप्शन नहीं है. So Prague game. One look at the Prague game. Of course, we can have a look. अरे बाप रे भाई.
What is this position? Bhai, I know Rapport is creative, but let's have a look. So another King's Indian, we saw it in Nodibek against Arvind yesterday. B5, H4, H5, castles, and E5. Wow. Chat, इस पोजीशन में सिर्फ दो गेम्स हुई हैं आज तक. D5 हुई थी, white one, King B1, black one. So I'm gonna say, as I predicted yesterday, a result in Nodirbek against um, Arvind. I am going to predict a result in Prague against Rapport. And Prague के पास time ज़्यादा है, so it feels like he might be in his prep. And इसका मतलब I'm going to back Prague for a win here. Rapport not in great form, 1.5 points out of 5 so far. Prague, let's do it. Let's get back in the lead. We want you to win ताकि आपका candidate spot confirm हो जाए. So yeah, Prague has a great position, chat. One look at the Arvind game. Meanwhile, I think कुछ ज़्यादा crazy हुआ नहीं है. One good news, chat. After this variation, Bishop G5, Bishop H4, I just had a look at the games played. It feels like White has a very good record here, like 54% win and 30% draw. That means 84% basically, you will not lose this. That is amazing stats for any opening whatsoever. So iska matlab ki White very rarely loses this position. In fact, 5 गेम में से White 0.8 गेम्स हारता है, 10 गेम में से 1.5 गेम हारता है. दैट इज अमेजिंग स्टैट्स. एंड अरविंद ने एक बहुत बढ़िया सेटअप लिया है. सो लेट्स होप सो ही कैन विन टुडे, एंड ही इज प्लेइंग द लोअर सीड, सो फुल चांसेस फॉर हिम. सो गोइंग टू द अर्जुन गेम नाउ, जहां पे नाइट F6 प्लेड. एंड लुक एट दिस चैट. कौन कहता है अर्जुन अनप्रिपेयर्ड है भाई? अर्जुन लेजेंड है भाई. Pawn to F4. Now he might have misplaced the opening theory here, chat, a bit. Apparently Queen C2, Bishop E7, and yahan F4 खेलना होता है according to theory. But Arjun has played F4 directly, which is not the best move in the position apparently. Now accuracy is 100% still, so that tells me it's maybe not the worst. Okay, still the oh wow. Bhai, ye dekho chat, look at this. I have been looking at this position for at least 5 minutes before we went to Prague's game. Constantly Queen C2 was the best move. जैसे ही मैंने F4 चला, the engine realizes it's the best move in the position. So chat, इसका एक ही मतलब हो सकता है. क्या मतलब है chat? बताओ भाई, इसका क्या मतलब है? इसका ये बोलना कि टिक्कू बेवकूफ है भाई, ये मतलब नहीं है. इसका मतलब ये है कि अर्जुन ने ये भाई एक बहुत बहुत तगड़े कंप्यूटर के साथ एनालिसिस करी है इसकी, बहुत तगड़े कंप्यूटर के साथ. एंड ही इज एब्सोल्युटली इन हिज थ्योरी राइट नाउ. सो सिंदारो भाई, बच के रहना, बिकॉज अपना अर्जुन आ रहा है. Arjun in the game are high quality games. He has shown great wisdom and avoided going at all. I agree. I think he's played amazing chess in this tournament. I mean, he held that draw against Nodibek, and he has not lost a single game so far. The only Indian to not lose a single game so far. It's not a bad engine, yaar. It's a very strong in stock 16 ही होता है, I think यहाँ पे भी. It's just कि मतलब I think many top players have like supercomputers and so on who kind of prepare very very well and very very quickly. So Arjun का जो भी team है, engines है, बहुत बहुत strong है भाई. गंगाधरी शक्तिवान है ये देखो भाई. सो अर्जुन चिल करते हुए, आई थिंक उन्होंने बहुत बड़ी एक्टिंग करी वहां पे सोचने के बीच में 5 मिनट की. तो ऑपोनेंट को लगा अरे वाह, मैंने अर्जुन को आउट प्रिपेयर कर लिया, बट ऐसा नहीं हुआ है भाई. ऐसा नहीं हुआ है. इज इन हिज प्रेप. एंड आई थिंक ऑस्कर लेवल एक्टिंग बाय एरिगेसी अर्जुन. मुझे याद है जब क्वीन A5 आया था, उसने 5 मिनट सोचा था. So maybe he was trying to remember his theory. Of course, he was trying to, but I am sensing there was some element of acting there as well. Arjun's accuracy in his F4 is the highest win percentage move for White. Yeah, and I think I wouldn't say it's the highest because games बहुत कम है यहाँ पे, like single digit या 15 कुछ games है, so it's very small sample size. But still I feel कि like it's the engine first preference, and the fact that it takes so long for the engine to come up with this move is a good sign. मतलब black के लिए कितना मुश्किल होगा उसको पता नहीं है. Just imagine that.
What's your opinion, Mukesh, not playing freestyle? I think I mentioned this earlier as well. I think it might be other reasons, but my take is his next goal is to become the GOAT. And GOAT बनने के लिए maybe he doesn't feel freestyle chess, kind of helps him achieve that. Maybe if I was Mukesh, that's what I would do. Yeah, I would just focus on becoming stronger, and my next target would be world number one, because I've achieved everything else. There's nothing to achieve. The only thing he has not achieved yet is the world number one spot. So I would focus on practice. I would play very important events like the Olympiad, World Cup. World Cup, I'm not sure if he'll play, but he should, I think. That's a very good test of his skills. And I'm just going to kind of play very select tournaments and practice, practice, practice. Plus game is more interesting. I think both games are equally interesting. Prag की game में ये है कि अभी I think they are in theory. So maybe Rapport भाई थोड़ा टाइम लेंगे. As you can see already 15 मिनट पीछे हैं almost, because Prag is still in preparation and Rapport भाई सोच रहे हैं. So because Kings Indian है, as we usually know, यहाँ पे lines बहुत लंबी होती है. Like I personally know of opening theory like which goes up till 30-35 moves in Kings Indian in some lines. So it imagine कहो top player को कितना बताओगा भाई. So Kings Indian is very very scary sometimes, and yeah, Rapport by right now calculating what to do. So meanwhile, chat Arvind की गेम अगर नजर मारे, okay, nothing has changed. Rook b8 played, getting out of this threat. a4 खेला था अरविंद ने लास्ट मूव, एंड फिलहाल दोनों प्लेयर्स काफी बढ़िया खेलते हुए. अरविंद 5 मिनट पीछे, बट नॉट अ बिग डील. उनकी पोजीशन बढ़िया ही लग रही है मुझे. So going to the Arjun game and chat, not forget Arjun right now is leading among the Indian players. So he is half a point behind the leaders. Nidhi bhai, can we have the standings for like 10 seconds? So Nodirbek is on top with I think four out of five, if I'm not mistaken. Yeah, there it is. Nodirbek with 4 out of 5, and Parham after 2 wins, and Arjun after 2 wins is half a point behind. So Nodirbek right now playing one of the weaker players today. So वो जीतने की कोशिश पूरी करेंगे, तो हमें भी as white आज पुश करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके जस्ट पीछे रहे. Because the main goal now should be to improve rapid and blitz. No, I think that's one of the goals for sure. But I think rapid and blitz के लिए आपको you don't need like a year of preparation, right? So I think मुझे लगता है कि that's going to be a part of his preparation for sure, and that would have been a part of his world championship preparation as well. तभी हमें देखा टाइम प्रश्न गुकेश कितना बढ़िया खेला in Norway chess. So that was not the old Gukesh I remember who struggled at rapid and blitz. So that was a great sign कि he has worked on it, and वो तो चलता रहेगा. But at the end I think अगला गोल उसका वही है. युवराज भाई बिल्कुल याद हो भाई, आपका डीपी भी याद है मुझे. I would rather watch two classical games in a day. I watch freestyle event. It's still long. I think I disagree. I think freestyle is new, so I kind of like it. But do I prefer classical chess more? Then yes, because freestyle में I think it's also because freestyle में भी Indian players अच्छा नहीं कर रहे. So I'm a sports हम क्यों देखते हैं at the end, to support our players, right? I think that's one of the main reasons. मेरे लिए तो है. And even though I love chess a lot, I play chess a lot, daily खेलता हूँ मैं कुछ ना कुछ bullet games. But supporting the players is one of the main reasons. And I think uske liye, we have not really kind of aced freestyle chess yet. So I think normal chess, of course, is going to be the main preference for Indian players and Indian fans. Chad, meanwhile, the fact that his opponent is thinking, जितनी उनकी टांगे शेक हो रही हैं, that's a good sign कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि अर्जुन is in the driver's seat. So chat, all set, all set. Meanwhile, chat, Arjun, of course, Indian number one. He is at chat. Do not forget, just rankings have world rankings right now. We have seen a huge shift. Carlson, Hikaru, Caruana top 3 hai. Arjun 4th hai. Nodir Beg 5th hai. If Nodir Beg wins, he's gonna slowly reach 2780. Gukesh 6th and Prag 7th. If Prag wins, he again crosses Gukesh. If Arjun wins today, he crosses Caruana Fabiano by a huge margin of like 3 or 4 points. So iska matlab he could be moving towards the rating of 2800 again. So can Arjun win today and move and cross Fabiano Caruana and become the world number 3? Super, super important day for Arjun. Rapport mistake in bars. Iska matlab kya hai bhai? Oh, by the way, look at this, yeah?
Interesting move. So Rapport plays knight to b6. And the engine says it's a mistake. And Prague instantly plays the best move. But you know what, chat? It's not so clear to me at least. So let's go deeper because ho kya raha hai? Marna padega. And now the only move is c takes b5. While black, I'm assuming, will take and open the rook's file. And now you have to play king b1. But if I'm being honest, it's not clear to me because rook ka file open ho chuka hai. Is it really that much better? I am not completely convinced. I'm going to show you a variation chat jahan pe aapka dimag blow hone wala hai. So now pawn is hanging. Black plays b5, b4. Kya kheloge by the way? Knight b5 is the only move now. Knight has no more squares. And yahan pe Rapport has an insane move chat. And you will see him play it soon. What is the best move for black? So that's why I'm a bit worried about Prague chat. I hope he has seen this with the help of an engine. Otherwise, Rapport ke hum territory mein ghus chuke hain. This is a crazy, crazy move by Rapport. Can you find it, chat? Let's go. Black to play. Prague looks better in bar, but bar, sometimes doesn't tell the entire story, as you will now see. And agar Rapport wahi soch raha hai jo main soch raha hu, engine soch raha hai, then Prague could be under some trouble here. Chat, yahan pe score move hai the insane knight takes d5. That is insane. What? I cannot believe that's possible even. The idea is queen se mara agar, so bishop e6 followed by bishop a2 and you can basically resign. It's over. Chat, ye hone wala hai abhi. And if you take with the pawn now, bishop f5 check. You can't come to c1 because there is queen c8 check and you lose the game. So king a1 and now rook to a4. With the idea of, queen a8, yeah, queen d7, rook 8. And chat, I do not want to be white here. By the way, you can think about rook a2 check, king a2 and queen a8, but the problem is that knight a3 aa raha hai, and also king b3 aa raha hai. So it's not really losing, but you can prepare that. You can play rook a4, and next you can prepare something like this. I do not want to be white here if I have not seen this with the help of an engine. This is extremely dangerous. And we're going to see this over the board right about now. Prague's king will be under fire. So bishop b6 hua, pawn se mara, pawn se mara, pawn se mara, and king b1 played. Rapport, agar b4 खेलते हैं, भाई गर्मी बढ़ने वाली है, बहुत बढ़ने वाली है. Chat question for you. Do you think Rapport finds b4 and knight d5? Yes or no? Come on, chat. 100% still now. I know actually 100% hai. But the thing is, he's playing the best moves and still, black gets an attack. Yahi power hoti hai King's Indian ki chat. That's why King's Indian is very deceptive. ये ऐसी ओपनिंग है जहां पे यू कैन प्ले अ लाइन एंड पहली 25 मूव तक इंजन बोलता रहेगा +1 एंड 26वीं मूव इट विल शो मेट इन 9. Like it's that sort of opening. You cannot trust the engine in a King's Indian opening ever. Like it's very rare it shows the correct evaluation. And काफी लोग yes लिख रहे हैं भाई Rapport भाई मत निकालो यार, because बहुत डर लग रहा है. Knight b5, Knight d5, pawn से ही मारना forced है. Bishop check, King a1, Rook a4 is the only move by the way, because आपको ये pawn बचाना बहुत जरूरी है. And now let's put the best moves. Yeah, Knight c1 defending a2, Queen d7 घोड़े पे attack. Okay, not exactly bishop defense for now, but yeah, Bishop e2 and Rook f8. And look at the bar now, chat. It's showing 0.00. And now the only move for white to not lose on the spot. Let me say that again. After having 100% accuracy, the only move for white to not lose on the spot it is g4.
That's crazy. Otherwise, you lose as white. And now h takes, f takes, and now what does black play? Bishop takes g4. Bhai, this is top level chess. Bishop takes. I don't take the bishop. I take the knight. Now b3 to prevent b3 from black. b3. e4 check. Allowing this check, by the way. King b1 and rook 4 to a7. And now I think the goal is to keep an eye here. Maybe e3 pawn push karna hai. And chat, this is still completely equal. And if you ask me, कि white ये सब निकाल पाएगा over the board, I'm gonna say no. Unless he has seen this at home. If he has, then of course. So extremely difficult chat. So we're gonna come here as Rapport thinks. I think आज की सबसे exciting game हमें मिल चुकी है. So let's go meanwhile to the Arjun game. जहां पे slight mistake by Mr. Yakovi Sindarov. जो मैं कह रहा था भाई. This is what I said, right? Bishop e7 is what you want to play. You want a castle. And वही खेला. But now Queen c2 is the idea. Idea कि अगर आप castle करते हो, I can take on h7. And you can't even take because Queen h7 is mate. So मैं free का pawn जीत जाऊंगा. You can't castle now. अगर आप h6 खेलते हो धक्का लगाने के लिए, I come back to f3, you castle, and then now knight comes to e5. And now it's rook f3 and rook g3, h3 incoming with an attack maybe. So कहीं ना कहीं पे अर्जुन को अटैक मिलने वाला है. And bishop e7, not the best move by Sindarov. That means उसने ओपनिंग नहीं देखी हुई पहले अच्छे से. Amazing, bhai. Things looking great for India today so far, chat. Arjun better. Prague, okay. I mean, Prague का तो पता ही नहीं है, bhai, to be honest. Could be worse. भगवान जानता है. And Arvind, of course, like he's playing the lowest seed, so I'm going to back him to win today as well. Things looking nice as of now. But as Arjun thinks, I think Prague की गेम पे चलते हैं because Rapport भाई b4 खेल देंगे तो बोर्ड पे आग लग जानी है भाई. Rapport came with hard prep. I don't think this is Rapport's prep. I think he's calculating it over the board. Time देखो ना यार. If he has seen this at home, there's no point of thinking for so long. कोई कह रहा है why not b3 in place of knight c1? So you can play b3, and now I'm going to play rook a5, queen b4, so you win this pawn. But now there are other possibilities for black. For example, even rook b5 is possible. Queen b5 and now queen c7. e4 आ रहा है, queen a7, rook a8 आ रहा है, and this is actually better for black. Look at the bar, minus 0.23. So as you can see, this is a dangerous attack, and the white king is stuck with the two bishops. Look at this. Look at this. Look at these bishops. White के पास कोई defense ही नहीं है यहाँ पे bishops के against. So मुझे लग रहा है कि practically this is a better position for black. उसका king safe है. Remember, game का objective क्या है? It's to checkmate the opponent king, right? तो अगर मान लो यहां Rapport गलती करता है, क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगी valuation. But अगर Prague गलती करता है, it is checkmate. So that's why. By the way, chat, तैयार रहो भाई. It's coming. It's coming. Knight b5, knight d5 incoming. It's going to be fire on the board. This could be the game of the year. And played by Prague. Oh my God, let's go. भाई गला बैठ गया मेरा भाई. I cannot shout today, chat. Oh my God, ध्यान रखना पड़ेगा भाई. He has played it. And now it's important. कितना time Prague लेते हैं. It's super important. If Prague plays quickly, he is in his prep. अगर Prague यहां 15 मिनट सोचने लग गए chat, तो नानी याद आने वाली है भाई. This is not going to be easy. Look at the player there who's himself for 26. हंस रहा है भाई वो बंदा, देखा? He was shocked and he was laughing literally. And वो खुद 25-26 प्लेयर होगा. By God, क्या बंदा है Rapport यार. सही में भाई लेजेंड है भाई. I know Prague's accuracy 100% chat. That's my point. Kings Indian पे कभी भरोसा मत करो. 100% accuracy के बाद भी you could just kind of be in a worse position, as you can see right now. Chat, the fact that Prague is thinking, I am a bit worried. I am a bit worried now. Because you want to calculate and remember all of this before you play King b1, not now. I hope Prague plays in the next 2 to 3 minutes. अगर Prague ने अगले 2-3 मिनट में नहीं खेला,
मैक्स 3-4 मिनट में नहीं खेला, that's a huge red flag. And I'll be genuinely worried as Pragnanda here because chat, anybody joining in, this is a crazy position. Just to go through, you cannot take with the queen because bishop e6 loses on the spot. So you have to take with the pawn, but that allows bishop check. King cannot come here because of queen c8, you resign. So king a1 and now rook a4, defending the pawn. You can play knight c1 to defend, but now queen d7, bishop e2, rook a8, and black is actually better. And white key only move to even hope for a draw is g4. And I mean, I'm going to tell you right now, this is looking extremely scary for Pragg. Take with the queen is resigns. Bishop e6, queen back. Bishop takes a2 check. King c1 pe, there is queen c8 check again. Because queen c2 khela, there is bishop h6 check. Are baap re. And if you play king a1, I mean, I don't need to tell you what happens here, yeah? I mean, कोई भी discover check दे दो यार, bishop c4 check, घोड़ा मार लो, bishop b3 check दे दो, king यहाँ पे, and this is where, puzzle rush moments आते हैं, like, rook check, king takes, queen 8, you never know what can happen here. Oh, Pragg takes. That's a good sign. That's a good sign. He took very quickly. Like he took like 2-3 minutes there. So that means Pragg ne dekha hua hai. There is no way he captures this in 3 minutes unless he has seen a chat. That's a good sign. That's a good sign. I am a bit relaxed. Rapport looks a bit confused by that move, which is weird. Okay. He's about to play check. Played. Chat, we are potentially looking at the game of the year now. Be ready. Rook a4 played in a second by Rapport. Wow. Wow. This is a beautiful setup for an exciting game. भाई ये तो मजा आ गया भाई, मजे आ गए भाई. राकेश भाई आ जाओ भाई, गला मेरा चिल्लाने के अलाउ नहीं कर रहा. ओ माय गॉड, कौन बोलेगा? भाई दिस इज अ क्रेजी गेम टुडे चैट. बहुत मजा आने वाला है भाई. पॉपकॉर्न ले आओ भाई, पॉपकॉर्न गर्म कर लो, बिकॉज दिस इज नॉट गोना बी easy for either player. Both players now are forced to play only moves for the next 10 to 15 moves. जिसने गलती करी वो गया. जिसने गलती करी वो गया भाई. सिंपल है फॉर्मूला नाउ. एक्टिव पॉपकॉर्न गरम करना है, मंगाना है. इफ यू वांट टू ऑर्डर अ पिज्जा, दिस इज द मोमेंट, बिकॉज ये गेम पर की अगली चाल के बाद एक्सप्लोर होने वाली ऑलरेडी हो गई है. टू बी ऑनेस्ट, White is a piece up right now, so I don't know what to tell you right now. Pragg already drinking water. He knows the stakes. Ninja भाई, ऐसा नहीं होता यार. Thank you भाई for the compliment, but I think अभी तो मेरा गला इतना खराब है, I'm not able to even speak properly. तो I think Amruta is a great commentator, by the way. In fact, I remember जब हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कमेंट्री करी थी, she was the lucky charm we had during Gukesh's match. So I'm gonna argue with you there, but okay, फिलहाल मैं गला अलाउ नहीं करता आर्ग्यू करने के लिए अच्छे से. बट फिलहाल के लिए चैट, I'm gonna tell you to focus on one thing. अगर आपको दिख रहा है, आपका स्क्रीन बड़ा है, नीचे प्लेयर्स की एक्यूरेसी देखो. रैपोर्ट 99.4, Pragg 100%. He is playing the best move according to the engines. मतलब अगर प्रग के हाथ में, हम वहां पे कई लोग कहते हैं ना कि अगर मैं चीटिंग कर पाता, मैं बेस्ट चेस खेलता, मैं जीतता. ये वो मोमेंट है. अगर आपको कंप्यूटर भी हाथ में दे दिया जाए, you would lose this, because Pragg has played the first preference of the engine in all 17 moves so far. All 17 moves so far, and still Pragg is the one who's feeling the pressure. That's insane. That fact alone is insane, and that's why people prefer the King's Indian. King's Indian is a dangerous opening, जहां पे इंजन पे भरोसा करना अपने एक्स पे भरोसा करने के बराबर है. Sure, you can look back and think it might work out, but I'm telling you it won't. So फिलहाल के लिए chat, Pragg under pressure. I hope he plays quickly. That's important, because जब आप एक घर पे देख रहे हो, you will not stop after rook a4. अगर मैं घर पे ये कंप्यूटर के साथ देख रहा हूं, देखो अब बाकी सारे प्लेस सहज लग रहा है भाई. ये तो ये बंदा सहज भाई. Anyways, the point is कि
यू विल नॉट स्टॉप एट रुके फोर। आपने घर पे सारी लाइंस देखी हुई हैं, आपने याद करी हुई हैं, आपने लिटरली समझी हुई हैं। सो इफ प्रग टेक्स 5 मिनट्स दैट्स ग्रेट, बट अगर प्रग ने यहां पे 15-20 मिनट ले लिए तो भाई फिर यू नो व्हाट, मे बी वी आर टू अर्ली टू ऑर्डर द पॉपकॉर्न, भाई डर लग रहा है फिर। सो हाउ मच टाइम प्रग टेक्स ऑन दिस मूव इज सो क्रूशल राइट नाउ, इट्स extremely crucial. Knight c1 to open the diagonal. Knight c1 is what we saw, by the way. And now queen d7. And do not forget, I am saying Prag could be under trouble. So could be Rapport. Because after knight c1, queen d7 is the only move for Rapport. So Rapport का काम आसान नहीं है, उसका काम equally मुश्किल है. That's why I say both players under huge pressure. Like if I was Rapport, I would be sitting at the board and calculating stuff out like crazy. But the point is the fact that he has played rook a4, I think he has seen queen d7. Otherwise, it would make sense. For example, queen a8, the other move that makes sense, simply doesn't work because white has bishop c4. मैंने a2 defend कर लिया and you are gone. अब अगर मैं queen d7 खेलता हूं, why not bishop c4 now? Because now I have rook c8. And if bishop b3, queen takes b5 मर रहा है. Now you see the importance of queen on d7 जो 8 पे queen नहीं कर पा रही थी. So बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है फॉर बोथ प्लेयर्स. नन ऑफ देम कैन मेक अ मिस्टेक. द ओनली टू मूव्स पॉसिबल आई थिंक आर नाइट c1 b3. g4 भी है but that's lost or much worse. So you have to go on the defensive now. One of these two moves, but knight c1 is the only move that gets equality. Queen d7 कह रहे लोग आसान है. Okay, let's say knight c1 queen d7. White की best move bishop e2. Black की best move rook f8. White की g4 takes and takes. And now white का best move पहले मैं bishop g4 बोल रहा था. And if I leave the engine on for a while, now it's h5. I look at this relation, h5 now. And black ये नहीं मारता, black ये नहीं मारता, black ये नहीं मारता, king को नहीं भगाता, वो खेलता है b3. भाई भाई that's insane. And now you don't play a3, you don't take this pawn, you take on g6. I'm just showing you engine lines to help you understand कितना complicated है. Rook takes a2. अगर king b1 rook a1 is mate, so knight takes, rook takes a2, king b1, bishop f5 check. अरे बाप रे. Bishop d3 only move, king c1 rook a1 is mate, so bishop d3 and now not taking e4. Chat, just look at प्रग के 8 घंटे कैसे हो गए भाई. भाई ये क्या है चैट. आई थिंक देखो देखो ये बनता है, पोजीशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है. भगवान ने कहा प्रग भाई हमने आपको थोड़ा टफ पोजीशन दे दी है आज, तो आज 8 घंटे देंगे. सो राकेश भाई होपफुली यू आर ज्वाइनिंग सून बिकॉज 8 घंटे तो प्रग के पास ही है. भाई ये शॉर्ट नहीं नहीं भाई रहने दो 8 घंटे. भाई सॉल्व क्यों करना है, दीदी भाई सेइंग सॉल्व करेंगे. भाई क्यों सॉल्व करना है, 8 घंटे रहने दो ना भाई. भाई अच्छा है. So now bishop e4 and now gf7 check, queen f7, rook df1, pawn takes d3, rook hg1. And I can tell you ये सब sequence of moves निकालने की probability माइनस में है भाई, माइनस में, not even zero. So I think that's why I'm telling you the position is very complicated and गलती करने के chances बहुत high because both players are out of preparation I think. And जो 8 घंटे दिख रहे हैं चैट, वो हमने चुपके से घुसेड़ दिया क्लॉक के अंदर, किसी को पता नहीं चलेगा. शुश करना, हाँ शांति रखना, हंसो मत भाई. कोई देख लेगा 8 घंटे दे दिए भाई, शुश. ऑपरेंट कोई पता नहीं लगेगा, चुपके से 8 घंटे दे दिए हैं भाई लोग. चैट अगर प्रग को सच में 8 घंटे मिल जाए, तुम लोग स्ट्रीम देखोगे 10 घंटा. तो 10 घंटा ऐड करो, 4 6 2 6 6 12 2 रात के 2 बजे तक. नाइस. Probability cannot be negative. It can be by, as you will realize Pratik bhai, it can be. यहाँ पे laws of physics apply नहीं होंगे. साहिल इस कैमरा शायद नहीं नहीं भाई, आई थिंक मेरा गला खराब है तो मैं कहा आवाज नहीं छुपा पा रहा तो शक्ल छुपा देता हूं. पराग बाय द वे थिंकिंग क्या करना है भाई.
ये मैं कहा कॉम्प्लिकेशन में फंस गया। अगर ये B4 पॉन मिल जाए तो आई थिंक दैट्स ग्रेट फॉर प्रग, बिकॉज देन ही कुड हैव प्लेड A3, बट ये B4 पॉन रोक लिया है। इतना प्रग को भी नहीं पता चलेगा। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। 7 घंटे सोएंगे फिर भी आ जाएंगे भाई, वही तो बात है भाई। वही कहते हैं ना, मेक मनी वाइल यू स्लीप, सो सपोर्ट इंडिया वाइल यू स्लीप, दैट्स द पावर। चैट एक बाकी दोनों गेम्स में ही मारते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन, जहां पे बिशप H3 खेला अर्जुन ने, दैट्स द सेकंड बेस्ट मूव इन द पोजीशन। सो स्टिल काइंड ऑफ मेंटेनिंग सम सॉर्ट ऑफ एज, सो नो नॉट बैड एट ऑल। एंड 10 मिनट की एज है अर्जुन की क्लॉक के ऊपर। एंड अरविंद ऑफ कोर्स आई थिंक इज डूइंग ओके एज वेल। ऑफ कोर्स राइट नाउ द पोजीशन इज इक्वल, बट आई एम होपिंग ही कैन स्लोली ग्राइंड आउट अ विन हियर। सो या थोड़ा 5 मिनट पीछे है, उसका थोड़ा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। गोइंग बैक टू द प्रग गेम, बिकॉज इससे एक्साइटिंग गेम तो कहीं मिलेगी नहीं। एंड नाउ होपिंग कि प्रग यहां बेस्ट चाले खेले। अच्छा हुआ गला खराब इतना टिक्कू भाई का चिल्लाना, अरे भाई आज मैं सच में नहीं चिल्ला सकता भाई। वही चिल्ला चिल्ला के गले की बैंड बज गई। सो आज जो चिल्लाने वाले कंप्लेन करते हैं, आज उनको कोई स्ट्रेस नहीं है भाई। लॉन्गेस्ट क्लासिकल गेम एवर इनकमिंग। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। अरे यार 7 घंटे वापस ले लिए किसी ने। किसने किया ये? कौन है ये? अरे यार, मैं इतना खुश हो गया था यार कि 8 घंटे मिल गए प्रग को। दिस शुड बी लाइक अ हैक, जब भी आपकी पोजीशन कॉम्प्लिकेटेड आए, आप अपने आप ही 7 घंटे एक्स्ट्रा ले सकते हो, लाइफ लाइन की तरह। दैट विल बी क्रेजी। Prag, by the way, is he about to play chat? I sense. Oh no, not yet. But I think the longer he thinks, as I mentioned, the longer he thinks, the more I worry, because that means he's out of prep and moves लिखाना बड़ा मुश्किल रहेगा। संजू बाबा, अच्छा सहज बाबू कहाँ है? आई थिंक वो खुद टूर्नामेंट खेल रहे हैं। He'll be back for the GCT Zagreb tournament, Gukesh Carlson Prag वाला, in first week of July. टाइम ट्रेवल नहीं। बाय द वे चैट, नाउ आई रिमेंबर्ड समथिंग एंड नाउ आई एम जेन्युइनली सस्पिशियस। चैट, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है मेरी। आर यू रेडी फॉर इट? बिकॉज थोड़ी वाइल्ड है भाई, थोड़ी वाइल्ड है। मुझे लग रहा है प्रग इज द फ्लैश। भाई कल हमने देखा, कल हमने एक शॉट डाला था, ठीक है, चेसकॉम इंडिया के चैनल्स पे एक शॉट है, जहां पे आपको दिखेगा कि प्रग कुर्सी पे नहीं बैठा हुआ, एंड सडनली ही अराइव्स द सीट। ये क्या हो गया भाई? सो सडनली ही अराइव्स द सीट, ठीक है। एंड टुडे वी आर सीइंग कि प्रग की क्लॉक में 7 घंटे एक्स्ट्रा है। तो मेरे को फीलिंग आ रही है कि मे बी प्रग इज द फ्लैश एंड ही इज मैनिपुलेटिंग टाइम समहाउ। Maybe that's why he's such a strong and fast player भाई। He is the flash भाई। ये क्या हो रहा है निधि भाई? ये कैमरा आंख में चोली क्यों खेल रहे हैं मेरे साथ? हाँ, नाउ इट्स बैक। अरे, अरे भाई प्लेयर्स गायब। प्रग, भाई साहब, दिस इज अ साइन, दिस इज अ साइन भाई। प्रग हैज ट्रैवल्ड बैक इन टाइम अगेन। कोई व्लॉग भी चल रहा है पीछे। Chat, meanwhile, one look at the Arjun game. कोई move आई है क्या? Castles played by black, so he puts his king in safety. I think Queen C2 का time आ चुका है, and then slowly knight यहाँ पे आएगा, then rook 50. But H3, that's why I don't like, because आपने rook के लिए H3 square ले लिया. Of course, bishop is there, but हमेशा थोड़ी रहेगा वहां पे। So attacking probabilities थोड़ी कम होते हुए, but okay, still a decent position for white. एक बंदा कह रहा है फ्लैश क्या होता है? वाह, वाह, वाह। कोई कह रहा है लेम, लेम नहीं है भाई। कल का यूट्यूब शॉट देखो तुम हमारा, तब तुम्हें पता लगेगा किसकी बात कर रहा हूं। तुमने कल का शॉट देखा नहीं है, तभी तुम कह रहे हो। सो मीनवाइल चैट, गोइंग टू द प्रग गेम, क्या प्रग ने कुछ खेला है? ही हैज प्लेड नाइट C1 चैट। सो ह्यूज अपडेट। प्रग हैज प्लेड द बेस्ट मूव, ऐसा लग रहा है कि जो प्रिपरेशन में है, दैट्स गुड साइन। बहुत जल्दी खेला। एंड नाउ रैपोर्ट हैज टू फाइंड क्वीन टू D7, वरना प्रग कुड हैव अ विनिंग पोजीशन ऑलरेडी। Chat, question for you. Does Rapport find Queen D7 the only move in the position, या फिर वो ब्लंडर करेंगे? Come on chat, let's go. Yes or no?
साहिल भाई, प्रग विल प्लेस नाइट 100%। वाह, वाह बच्चे वाह, मतलब ये कई लोग टाइम ट्रैवल करते हैं, कई लोग टाइम टाइम करते हैं, बस भाई वो लोग टाइम ही करते हैं। How Ivanchuk? Why Ivanchuk is playing that tournament in the other category? There are three categories here. No, no, yes, 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 he should. अरे भाई, बट तुम क्यों चाहते हो? अगर अगर रैपोर्ट गलती कर दे तो हम जीत जाएंगे भाई, तो अच्छी बात है ना भाई, गलती करते तो। हाँ, वी हैव टू गो 4 राउंड्स इंक्लूडिंग टुडे। एंड चैट, कल से बुलेट चेस चैंपियनशिप भी स्टार्ट हो रहा है। सो मेरे गले की तो बैंड बजेगी बजेगी, बट वील सपोर्ट अर्जुन एंड निहाल। आई थिंक मित्रवा गुहा ऑल्सो क्वालिफाइड, सो 3 इंडियन प्लेयर्स प्लेइंग द बुलेट चेस चैंपियनशिप। बट आई थिंक, मेरे हिसाब से आई थिंक निहाल के लिए बहुत सुनहरा मौका है, अर्जुन के लिए भी, टू विन दैट इवेंट। मित्रवा ऑफ कोर्स विल ट्राई हिज बेस्ट एंड आई होप ही डज रियली वेल। बट आई थिंक फेवरेट्स के टर्म्स में, who do you think is the favorite from Indian players to win the BCC chat? Is it like Mitraba? Is it Nihal? Is it Arjun? Dilibhai, I can hear you. For Avanash Culture game, second to get 6 engine moves. I think 6 engine move is very very helpful actually, because 1 hour kya matlab, if let's say somebody can choose those 6 moves, then that will be more helpful for sure. There is no doubt about it. Nihal, I want him to win. Yeah, Firuzan to hai one of the favorites. अर्जुन 2 जगह खेलेगा भाई, जब हम 2 जगह कमेंट्री कर सकते हैं तो अर्जुन 2 जगह खेल भी सकता है, बिकॉज टाइम थोड़ा डिफरेंट है। दिस एंड्स अराउंड 8:30 p.m. एंड दैट विल स्टार्ट एट 9:30 p.m. सो देयर इज इनफ टाइम। अर्जुन, अली रेजा, अर्जुन, चैट स्ट्रीम टू लाइक कर रहा है। आज मेरा गला बहुत खराब है, प्लीज भाई, मैं बार बार बोल नहीं पाऊंगा। प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम, लेट्स गेट टू 500 लाइक जल्दी से भाई, प्लीज लेट्स गो। बाद में पानी बॉटल नंबर 1 फिनिश्ड। आई थिंक काउंटर करना चाहिए। हाउ मेनी वाटर बॉटल्स टू चेस प्लेस फिनिश? सो एक बॉटल खत्म हो चुकी है भाई, एंड इट्स 1 hour इन। सो लुकिंग एट अ स्ट्रीम ऑफ 4 hours 5 hours, आई थिंक 3 से 4 से 5 बॉटलें खत्म। Rapport is faking it. He has seen everything. यार, I'm maybe he has seen it, but of course he's calculating. यार, उसको सारे ऑप्शन कंसिडर करने हैं। क्वीन D7, क्वीन E7, क्वीन A8, E4 ऑप्शन है टू ओपन द बिशप, B3 ऑप्शन है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस हियर। सो क्वीन C8, मतलब he has to consider all of them. It's not easy. 5 लीटर्स, नाइस। रैपर भाई कम पीते हैं, उन्होंने आधी बॉटल कर दी, so उनका 2.5 लीटर होगा भाई। एक बॉटल में कितना पानी? आई एम गोना अज्यूम 1 लीटर तो होगा यार इसमें। रैपर ऐसा क्यों हिस्ट्री का किंग की तरह दिखता है भाई? ये क्या है भाई? हिस्ट्री का किंग क्या होता है? हिस्ट्री का किंग मतलब किंग ही भाई पास्ट में, हाँ। हिस्ट्री का किंग इज अ बिट वियर्ड। हु डिसाइड्स प्लेयर्स इन टूर्नामेंट्स? द ऑर्गेनाइजर्स whom they want to invite. देखो, ऑर्गेनाइज को क्या कहता है टूर्नामेंट, दे वांट टू मेक मनी एज वेल। दे वांट टू सी कितने व्यूअर्स आएंगे, कितना स्पॉन्सरशिप मनी आएगा, किन प्लेयर्स को हम इनवाइट कर सकते हैं। सो आई थिंक दे वांट इनवाइट द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स टू गेट द मैक्सिमम आईबॉल्स। बट ऑफ कोर्स एक फाइनेंशियल लिमिटेशन भी होती है, वरना एवरीबडी वुड इनवाइट मैग्नेस। दीदी भाई, आई कैन हियर यू। ओ ओ, अबाउट टू प्ले। विल ही प्ले क्वीन D7? चैट, फाइनल प्रिडिक्शन, यस और नो? 500 मिलीलीटर। ओ, ही फाइंस क्वीन D7। भाई रैपोर्ट भाई पाइलिंग ऑन द प्रेशर। उनकी आईब्रो मस्त भी ट्विच हुई ऊपर की तरफ, देखा भाई साहब? रैपोर्ट भाई फीलिंग द वाइब्स, फीलिंग द पावर। रेडी भाई, प्लीज म्यूट कर दो। म्यूट म्यूट कर दो भाई प्लीज। कंफ्यूज हो रहा हूं एक्चुअली। थैंक यू भाई। भाई तुम अपनी रेटिंग क्यों नहीं बढ़ाते? फिर हम तुम्हें भी लाइव देखेंगे। भाई मेरे को इतनी रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट भाई। एंड चेस इज अ यंग मैन्स गेम। यंग मैन मतलब यंग मतलब बहुत यंग, मतलब लाइक 20 21 मैक्स। साहज भाई का इवेंट कैसे जा रहा है? उन्होंने पहली स्टोरी देखी थी कल मैंने, वो जीत गए। पता नहीं बिल्लियों के साथ खेल रहे थे वो फॉर सम रीजन। आई थॉट चेस खेलने गए हैं, बट एनीवेज। इज इट प्रेप यार? I think Prag has seen this. I would be shocked if he plays knight C1 so quickly. It's the best move. He has seen this before,
बट आई थिंक उसने मे बी बहुत रिसेंटली नहीं देखा है. दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट, एंड इज ट्राइंग टू रिमेंबर कि भाई क्या था यहाँ पे. सो that's a good position to be in. The position you don't want to be in is when you have never ever seen this before. That is a problem. That's a big problem actually. नहीं अनुराधा यार, नहीं रे. Rapport is an extremely creative player. He's super strong, by the way. Has defeated Magnus as well. So he's very very strong as in classical chess. No doubt about it. I hope also India के पास for the next few years, hoping that as well, bunking master. And I think India के players इतने ज्यादा हैं कि the I had a question for you. What is the probability, according to you, that an Indian qualifies to challenge Ukesh for the World Championship next year? So 8 players candidates के होंगे. Last time 3 players थे India के. What is the probability you think कि अर्जुन प्रग या कोई इंडियन क्वालिफाई करेगा to challenge Ukesh for the World Championship? आरा मीन्स व्हाट यार? वो ऑरा लिख रहा था लेकिन वो गलत हो गया. अगली बॉटल आ गई. सो देख लो एडिटर भाई, देखो 2 बॉटल. बॉटल नंबर 2 हैज स्टार्टेड. I'll tell you why I'm asking this. Because I'm calculating the probability of the World Championship remaining in India after 2026. So Gukesh is already has 50% chance, right? So 50% probability already hai ki it remains in India. Now let's say you agree ki 50% probability hai ki Indian qualifies for the World Championship. So that automatically means ki 75% probability hai ki an Indian will be a world champion after 2026. So that's quite high actually. So इंडिया का फ्यूचर चेस में बहुत बढ़िया है एंड बहुत मजा आने वाला है. सतीश भाई सेइंग यार आप कमेंट पढ़ते हो पर नाम नहीं पढ़ते भाई, ये तो थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक हो गया सतीश भाई. um, थोड़ा सा उल्टा हो गया भाई. वही कमेंट मैंने नाम पढ़ लिया. ठीक है भाई, यू शुड बिकम जीएम एंड डू टेबल स्लैम, कह रहे हैं अमल. अमल भाई कमाल की बात करते हो आप यार. टेबल स्लैम तो मैं वैसे भी करता हूँ, जीएम बनने की जरूरत नहीं है भाई उसके लिए. यू कैन बी अ नूब एंड डू टेबल स्लैम्स ऑल द टाइम. कम ऑन प्राग. या एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एक काम करते हैं, दोनों गेम बाकी नजर मारते हैं वेरी ब्रीफली. अर्जुन गेम में बाय द वे नो मूव सो फार. सो अर्जुन ऑल्सो आउट ऑफ प्रेप. एंड अरविंद गेम में रुक A8 पहुंच चुका है किसी जादू से. एक बार देखे जरा. ओके. बट समहाउ द ब्लैक फेवर्स द ब्लैक पीस, सॉरी द बार फेवर्स द ब्लैक पीसेस. और इसका मतलब अरविंद को एग्जैक्टली exactly वो नहीं मिला जो उसको चाहिए. सो अरविंद, आई होप इट डजंट मेस दिस वन अप, बिकॉज अगर वो गलती से ये हार गए ना, देर इज नो कमिंग बैक इन दिस इवेंट आफ्टर दैट. Because Vokidov lowest seed hai, and this is the chance for him to get that confidence back. Really, really cheering for Advind here. Even though Bar says slightly, I think it's still equal. I mean, Rook 8 pada hai, you cannot really be worse. Material barabar hai. You have the open F file. King thoda sa open hai. So there can be chances, but Arvind, of course, has to be careful. Going back to the Prag game, will Prag find Bishop E2 or Queen E3? And chat, that's a mistake. That's a slight mistake from Prague already. And now you see the power of Queen D7. The rook will come to C8. And chat, important, listen to my words carefully. इस पोजीशन में rook C8 is the most logical move, yes or no? बताओ भाई chat. I think it's the most logical because rook open file पे आ रहा है. You attack the bishop. The bishop cannot go here because the knight would hang. And if bishop comes back, then of course you have wasted a move. So rook c8 is the most logical move in this position. Let's take that as a statement. So Rapport will play this. And now in this position, the only move for Prague, let me repeat that. The only move for Prague, according to the engines, to not lose the game is Queen E2. Or he is lost. Let me repeat that. अगर प्रग ने क्वीन E2 नहीं खेला, he is lost. And then
black plays e4. And chat, we could be gearing up for an insane sequence here. Look at this. E4 opens up the bishop. And now, if you take this, it's again lost for Prague. B3. And black is winning. Because अगर आप देखोगे ये रुक E4 पॉन अटैक कर रहा है. सो अगर आप मानो ऐसे मारते हो, फॉर एग्जाम्पल, रुक टेक्स E4 wins for Rapport. Going back, let me go back. So after E4 क्या खेलना है प्रग को? He has to now find the only move rook h e1. भाई takes and now b3. And look at this. Bishop b3 only move. Rook b4 only move. Knight attacked. Knight a3 only move. Queen a7. Knight b5. Queen d7 draw. भाई कोई कह रहा है इतना डराता क्यों है भाई? Prague is fighting for a draw here. That's what I'm trying to tell you basically. Prague needs to be on point. Unless Rapport makes a big mistake, we are fighting for a draw right now. And practically black की moves थोड़ी ज्यादा logical लग रही है मुझे, white की moves थोड़ी और difficult है. So Rapport right now playing extremely good chess, but पहला step है उनको रुक c8 निकालना है. Yeah, Prague's accuracy is 98.8 now. Bishop c4 was not the best move. But yeah, it's a logical one. You want to defend the pawn, defend the knight. But rook c8 के बाद queen e2 is the only move for Prague. और डरा कहाँ रहा हूँ? कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं देगा तो मैं क्या कोई बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी है, कोई भूत थोड़ी खड़ा है मेरे पीछे भाई. मेरी डरानी शक्ल भी नहीं दिख रही तुम्हें यार, तो डरा कैसे रहा हूं तुम्हें? मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ भाई, फैक्ट्स. बस भाई हिकारू मत बन. क्यों भाई? मेरे भी सपने हैं, मैं ना हिकारू बनूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? Okay, anyways, फिलहाल के लिए chat as Rapport thinks, let's have a brief look at the other two games because यहाँ गेम बहुत स्पाइसी होने वाली है. No moves by Arjun still, so that tells me Arjun is still not sure of his plan. I think Queen C2 तो आएगा, but is he considering moves like G4 as well, just to go all in for an attack? It could be that he's thinking about it. But I think Queen C2 is a logical move right now. Meanwhile, Arvind की गेम में I think no moves by Arvind as well. He's also right now thinking of a plan and कोई clear plan नहीं मिल रहा है. So अभी Arvind की move है of course, but yeah, Arvind also I think is in a very, very critical situation. Cannot make any mistakes whatsoever. So coming back to the Prague game, the sharpest game of today. Let's see what happens. I think Prague gambled thinking Rapport might not know this, but since he needs... And the thing is, I don't think Rapport knows this line that well. I think he's calculating all of this over the board. Look at the clock difference. I think Rapport ऐसा प्लेयर है कि क्रिएटिव लाइंस में ना हो. आपने वो एक दोस्त होगा आपके उस पे ना, एक हर किसी फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त होता है जिसको कहता है भाई वो मतलब ना पेंटर होता है, ऐसे रैंडम चीजें बातें करता है, which makes no sense. मखमली सुबह में चाय पीने में जो मजा है, ऐसे वो दोस्त होते हैं हमारी ग्रुप में ना यार. वेकिंग अप टू द ब्यूटीफुल सनशाइन, क्रिएटिव लोग जो होते हैं, लाइक ऐसा हर ग्रुप में एक बंदा होता है. रैपोर्ट वो बंदा है. एंड इफ देयर इज अ क्रिएटिव अटैक टू बी लॉन्च्ड, उसके दिमाग में पहले वही आएगा. I have a fantastic idea in team chess in Olympia. There are team events. Each team should have only one board. The players must take turns at different phases of the game. वो ठीक है Amavla. I think then it's kind of one game. And it's not serious chess because you cannot decide who is to be credited for the win, right? Because you cannot decide कि किसने main मेहनत करी. And sports का main point यही होता है, decide कि भाई कौन best है. You cannot decide it from that. It's a great idea for fun, but for competitive chess, not really. I am that friend. अरे भाई मैं भी वही friend हूँ भाई, इसलिए क्या तू चुप रह, ठीक है भाई. तो मन्नत जी ने बोल दिया मैं चुप रहता हूं, तो भाई कमेंट्री रैपोर्ट भाई करेंगे. रैपोर्ट भाई प्लीज टेक द स्टेज. भाई यार प्रग ने ये खेल दिया है गेम यार. ओपनिंग थ्योरी में दिखी तो नहीं थी, बट दिमाग कह रहा है कि यार
यार दिमाग तो कह रहा है कि मस्त पोजीशन है मेरी, और मतलब एक रूक सीएट खेलूंगा, बिशप को अटैक करूंगा और ऐसी क्रेजी अटैक लॉन्च करूंगा ना भाई, 100 जन्मांतर तक लोग बोलेंगे भाई रैपपोर्ट की जय, रैपपोर्ट की जय। भाई ये नेपो क्यों आ रहा है भाई, मेरा कैमरा एंगल ब्लॉक मत कर, जब मूव खेलूंगा तो फोटो खींचनी चाहिए यार। अरे भाई खुजली हो रही है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आंखों में भी यार कल रात को नींद अच्छे से करनी चाहिए थी यार, नींद कर ली होती तो भाई अच्छे से सोचता। और दोबारा अरे क्या डिस्ट्रैक्ट कर दिया भाई यार, डिस्ट्रैक्ट कर दिया नेपो ने। ओके लेट मी थिंक। यार ये खड़ा कौन हो गया मेरे मेरे सामने आके, डिस्ट्रैक्ट मत करो भाई लोग। देखो मैं तो पानी भी कम पीता हूँ भाई यार, कितनी बार लोगों ने बोला है हैव 3 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे, मैं नहीं सुनता यार, मैं नहीं सुनता। तो ऐसे क्या होगा, ओके ओके फोकसिंग ऑन द बोर्ड, टाइम, अरे टाइम भी कम है बाय गॉड, टाइम मेरा बहुत कम है। 58 मिनट्स, बाप रे यार इतना कम टाइम पे कभी खेलता नहीं। अरे कोई स्ट्रेस नहीं है यार, 2 मिनट इज ऑल्सो इनफ। अरे वांचुक सर, अरे पेरी पेना सर, अरे ग्लैड टू हैव यू हियर सर। सर आप आपके आगे तो अब तो भाई, अब तो मैं जीत जाऊंगा भाई, अब तो पक्का जीत जाऊंगा भाई मैं। अरे भाई ये प्रग भाई, ये जीन्स, अरे मेरे को पता है नहीं जीन्स अलाउड है भाई। मैं तो पैंट पहन के आया भाई, ये मैग्नस वाला क्या सीन हो रहा है भाई। यार ये क्या फिडे वाले एनफोर्स क्यों नहीं करते भाई, मैं मेहनत करूं तभी मैं लेट हो गया आज पैंट पहनने के चक्कर में, और लोग जीन्स पहन रहे हैं भाई। यार पानी पियो कि नहीं यार, देखो वैसे तो मैं बड़ा कंपेटिटिव इंसान हूं, देखो प्रग ने पूरी पानी की बोतल खत्म कर दी, मेरी आधी खत्म हुई है। यार 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 मेरा मन नहीं, पानी पीऊं नहीं, पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। नहीं नहीं पानी, पहले पानी, अरे नहीं नहीं पहले कैलकुलेट, पहले पानी, नहीं नहीं पहले अरे यार अब ये कौन आ, अरे ये तो टी शर्ट में घूम रहा है भाई। भाई मैं सूट पहनने वाला था भाई, अच्छा है भाई ओवर ड्रेस नहीं हूँ भाई मैं आज, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड, सूट नहीं पहना भाई, ओवर ड्रेस लगता मैं। सो थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, अरे भाई अर्जुन आके देखा, अर्जुन भाई अपनी गेम देखिए भाई, आई नो इंडियन इंडियन दो भाई भाईचारा है बट मेरे को सोचने दो। ओके आगे होता हूँ थोड़ा सा, शायद फोकस करता हूँ, ये लोग तो मुझे कैलकुलेट करने नहीं देंगे, इनका बस चले तो भाई मैं अभी हार जाऊँ 4 चालों में। सो क्वीन डी 7 तो खेल दिया भाई, बड़ी मतलब कहीं ना कोई स्टॉकफिश मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे पता है। कहीं ना कहीं स्टॉकफिश कह रहा है अरे बाप रे भाई रेपट भाई तुसी ग्रेट हो भाई, तुसी ग्रेट हो। भाई मुझे लग रहा है मेरी एक्यूरेसी कम से कम 99.69 तो होगी, आई एम प्रिटी श्योर भाई। भाई लेकिन पता है कहीं ना कहीं कहां पे कोई कमेंट्री करो, कह रहा है रैपोर्ट भाई ने ब्रिलियंसी नहीं खेली अब तक। खेलूंगा भाई, लोग देखते रहो, अभी अभी आएगी ब्रिलियंसी मेरी। देख रहे हो मेरी आंखें, देख रहे हो भाई क्या ऐसे। भाई कौन है, कौन कौन कर रहा है यहाँ पे। चलो भाई गेम पे फोकस करते हैं भाई, गेम पे फोकस करते हैं। चलो भाई होपफुली भाई कौन था ये, तो होपफुली आपको रैपोर्ट भाई कमेंट्री पसंद आई होगी। तो रैपोर्ट भाई काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं, तो द ओनली रीजन ही इज नॉट डूइंग कमेंट्री, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। सो रैपोर्ट भाई थैंक यू फॉर नॉट टेकिंग माय जॉब भाई। सोहानी का गेस माय जॉब था, रैपोर्ट भाई का शो होगा टेक माय जॉब, सो या बच गए। रिचर्ड टिकू चुप हो जा, ओके आ गए आ गए आ गए भाई, आ गए टिकुए वापस आ गए भाई, अब वापस आ गए वापस आ गए वापस आ गए। तान्या की आवाज में कमेंट, नहीं नहीं भाई ये हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं भाई। रैपोर्ट भाई यार देखो, रैपोर्ट भाई को मैं समझता हूँ यार, दिल की बात समझता हूँ कि भाई ये मेरी टी शर्ट पहनी है बंदे ने, व्हाट। भाई ये सामने वाले बंदे ने मेरी टी शर्ट पड़ी है भाई, सेम टी शर्ट मेरे कवर में है। भाई मैंने कितनी कमेंट्री करी भाई, मैं सोच रहा हूँ टी शर्ट कहाँ गायब हो गई भाई, यहां पे है टी शर्ट, अच्छा। शायद फिलहाल के लिए हम वेट कर रहे हैं। कोई कह रहा है क्रिंज है भाई, क्रिंज के आगे जीत है भाई। आई नो आपने वो सुना होगा, डर के आगे जीत है, एक्चुअल क्रिंज के आगे जीत है भाई। दैट्स द पॉइंट। सो चैट फिलहाल के लिए 55 मिनट्स रैपोर्ट भाई सोचते हुए कि अब क्या करना है मुझे। मेरी गेम की तारीफ तो बहुत हो गई बट मुझे मूव्स भी खेलनी है, एंड आई स्टिल थिंक रुक C8 इज द मोस्ट लॉजिकल मूव। सो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए रैपोर्ट को ये मूव निकालने के लिए। आई थिंक रुक C8 उनके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है। द ओनली थिंग ही हैज टू कैलकुलेट नाउ, आगे क्या, आगे क्या भाई। हाउ वाज रैपोर्ट इन इज प्राइम, भाई प्राइम में ही है बंदा भाई। भाई मेरे बाल देखो रैपोर्ट के, भाई प्राइम में ही है रैपोर्ट अभी, ही इज इन इज एब्सोल्यूट प्राइम। देखा यही बात है भाई, द थिंग इज दुनिया में ना हर किसी का अपना फ्लेवर है, किसी को वनीला पसंद है, किसी को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, किसी को भाई रैपोर्ट भाई कमेंट्री पसंद है, किसी को मेरी पसंद है, किसी को भाई सागर भाई की, किसी को नोदिर बेग की, किसी को सॉरी क्या नाम है उसका भाई वो बुलेट वाला चैंपियन कौन है भाई, वो नाम भूल गया मैं, ओ माय गॉड हाउ कैन आई फॉरगेट द नेम ऑफ द ग्रेटेस्ट कमेंटर ऑफ ऑल टाइम, क्या नाम है उसका। नाउद्स यस, नाउद्स यस। किसी को तानिया का पसंद है, किसी को भाई अमृता की पसंद है, किसी को भाई रैपोर्ट भाई की कई लोगों को पसंद है, तो इट्स ऑल अ फ्लेवर भाई, इट्स ऑल स्टाइल भाई, किसी को कुछ पसंद है किसी को नहीं पसंद है भाई। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। किसी को डिंचक पूजा के गाने पसंद है भाई, लाइफ इज जस्ट अमेजिंग। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। एंड वही ब्यूटी हमें चेस बोर्ड पे देखने को मिलेगी जब रैपोर्ट भाई रुक C8 खेलेंगे, बिकॉज रुक C8 के बाद आग आग लग चुकी है यार, आग तो लग चुकी है ऑलरेडी। बाद में रैपोर्ट अर्जुन भाई,
अर्जुन भाई ने अर्जुन भाई ने कहा, हाउ डेयर यू से कि मेरे बोर्ड पे आग नहीं लग रही। भाई G4 फेंक दिया है भाई ने भाई। सो एक रूल होता था भाई बचपन में, मेरे कोच ने सिखाया था कि भाई किंग साइड पॉन आगे नहीं फेंकने चाहिए, योर किंग बिकम्स वीक। क्लियरली अर्जुन भाई ने वो क्लास मिस कर दी बट अच्छा किया मिस कर दी, बिकॉज इट इज द बेस्ट मूव इन द पोजिशन। तो सही टाइम पे मिस कर दी भाई अर्जुन भाई ने, क्लास मेरी बहुत सही मिस कर दी भाई अर्जुन भाई ने। मैं फालतू में क्लास अटेंड करता रह गया भाई। And now he's basically launching an attack on the king. And at some point ये knight घुमा के e5 आने वाला है, and automatically फिर g5 आएगा, queen can come into the king side, rook भी आ सकता है, rook can come to g2, and it's very obvious कि भाई यहां पे एरिगेसी अर्जुन is going to launch an attack. उनका प्लान तो यही है, and black को अब पता लग चुका है। black now knows what's happening. तो चैट, दो बोर्ड हो चुके हैं जहां पे आग लगने वाली है। सो आज बड़ा मजा आ रहा है। अरविंद भाई आप भी आग लगाई दो भाई, आप भी आग लगाई दो। अरविंद -1, नहीं नहीं भाई -1 तो नहीं होगा यार। नहीं नहीं, इट्स -0.4। इतना चलता है, इतना चलता है यार, इतना चलता है। एंड ऑफ कोर्स इट कुड बी जस्ट अ स्ट्रेटजी यार, मतलब ही वांट्स टू गेट वोकिडोव इन अ पोजीशन व्हिच ही डजंट अंडरस्टैंड। इट कैन बी अ स्ट्रेटजी। अर्जुन ने भी कल कितना घुमाया वोकिडोव को, घुमाया मतलब बोर्ड पे घुमाया, ऐसे घुमाने नहीं लेके गया था। एंड चैट फिलहाल के लिए बहुत स्लो नहीं चल रहा चैट। इसलिए स्लो चल लग रहा है बिकॉज द गेम्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड। सो प्लेयर्स को समझ ही नहीं आ रहा खेलना क्या है। दैट्स द पॉइंट, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग सो स्लोली। सो मूव्स बड़ी खतरनाक होने वाली है। तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए रैपोर्ट स्टिल थिंकिंग, आई थिंक रुक C8 तो ऑब्वियस है ही। नाउ क्वीन E2 इज फोर्स्ड, एंड हमें देखा E4 इज द मूव। सो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, व्हाट इफ आई जस्ट पास? व्हाई इज E4 फोर्स्ड? लेट्स से आई प्ले किंग H7। Apparently knight B3 is very strong, and if you now play E4, I have knight D4 and I have blocked the bishop. So ये बिशप जो है ना ब्लैक का प्राइड एंड जॉय है, ये है गोट ऑफ दिस पोजीशन, दिस इज द कार्लसन ऑफ दिस पोजीशन। सो इसको जल्दी से जल्दी खोलना है। सो यू कैन नॉट वेस्ट टाइम एज रैपोर्ट। सो रुक C8 खेलना पड़ेगा, एंड देन E4। ब्लैक की अगली दो ये चालें होनी ही पड़ेंगी। अगर पहले E4 खेलते हो, इट डजंट वर्क बिकॉज आई हैव क्वीन C2। आई अटैक योर रुक एंड आई डिफेंड द बिशप। एंड अगर रुक C8 खेला, नाउ आई जस्ट पिक अप द रुक एंड आई एम विनिंग द गेम। सो आपको क्वीन C2 भी अवॉइड करना है। E4 के बाद मुझे C2 स्क्वायर मिल रहा है, एंड दैट्स अमेजिंग फॉर व्हाइट। So very, very important moment for Rapport. Will he make a mistake and give Prague a winning position, or will he challenge Prague and will be important? Why Gukesh is not there? Gukesh, जैसा मैंने पहले बताया, Gukesh is the world champion now. उनका अगला गोल लाइफ का has to be becoming the GOAT. And if that's the goal he has, he will choose his tournaments selectively. Very, very carefully वो tournaments choose करेंगे. And he will not play any event जो भी उसका गोल उसको पास नहीं लेके जा रहा. So, Norway Chess strong event, he will play. Grand Chess Tour, he will play. And he will play select tournaments. And उनको ध्यान रखो, he's focusing on improving himself right now. बाकी players मजबूर भी हैं कुछ हद तक सारे tournaments खेलने के लिए, because they have to qualify for the world championship. Gukesh के पास luxury है, he can take a break and improve on learning chess. And yeah, even the world champion has to learn chess. Even Magnus learns something new about chess every day. That's how complicated the game is. I know Elon Musk ने बोला है chess is easy, but it's definitely not easy. Chat stream like कर दो. Let's get to 500 likes as we look at Rapport about to play a dangerous move that will really challenge Prague to the limit. Any chance of Prague winning without Rapport blundering? I would say no. If Rapport plays the best move, I think, and Prague plays the best moves, it's a draw. But both players are treading on very, very thin territory. So anybody who makes a mistake loses. There is no room for error. बोलते हैं ना, लाइक जैसे आपको, इट्स सेम जोक अगेन, बट ड्यू के एडमिशन लेना, अगर आपको जाना है ड्यू में एडमिशन लेना है पहली लिस्ट में, तो 100% चाहिए आपको परसेंटेज। 99.8 भी आया तो सेकंड लिस्ट का वेट करना पड़ेगा, क्या पता कोई कोटा लग जाए नहीं मिले। सो आई थिंक
you have to get 100% accuracy from now on if you want to survive now for both players. Do you think the more he plays, the more he will improve? That's not always true, actually. I know of players. There's a famous example, actually. Knew a GM called Preethu Gupta. I don't know if you've heard of that name. I think he taught me something. He played like two events in a year, 2 or 3 events in a year for a couple of years each. Like 5 tournaments पूरे 2 साल में खेले, and he went from like 2100 to 2500 something. That was a lesson for me personally. कि भाई, you can just work on your chess and not just play every event you have to if you really want to become strong. So I think कहीं ना कहीं पे playing helps, but it cannot be a replacement for practicing, I think, which I think many chess players make a mistake with. रैपोर्ट थिंक यहाँ बिशप B2, हाँ, ये बिशप अपने प्यादे को कूद के आएगा यहाँ पे, ऐसे नहीं होता भाई, चेस ऐसे नहीं चलती भाई। भाई डीओ बोल के दुख दर्द पीड़ा करवा दिया भाई। एज एन इंजीनियर, एज एन इंजीनियर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंजीनियर भाई, इसने 4 साल इंजीनियर काटे हैं। तुम्हें लगता है ड्यू टफ है? भाई तुम AIEEE और IIT के पेपर दो भाई, तुम्हें पता लगेगा असली पेन क्या होता है, दुख दर्द पीड़ा भाई। ओह, अरविंद अबाउट टू बी -1.8 भाई, अभी तो -0.4 है, जब तक -0.8 नहीं होता आई एम गोना स्टिक विद दैट। अगर फ्यूचर बताना ही अरुण भाई, तो भाई स्टॉक्स का बताओ ना भाई, कहां पैसे इन्वेस्ट करूं जहां पैसा एक का डबल हो जाए। हेरा फेरी के फैन मैं भी हूं। इवाल बड़ा क्या करूंगा मैं, वो तो मुझे पता लग ही जाएगा। मे बी रैपोर्ट रुकी 8 यार, रुकी 8 में प्रॉब्लम पता है क्या है? इट इज वेरी लॉजिकल, आई थिंक इट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर श्योर। देयर इज नो थ्रेट राइट नाउ, यू आर नॉट थ्रेटनिंग रुक टेक्स A2। मैंने बहुत बढ़िया डिफेंड किया हुआ है। So that's my problem with that move. There is no clear threat. I can just play Queen E3. I control B3. That's not possible now. And you are now lacking a threat. So it is possible though. It is definitely one of the, let's say, the moves Rapport must have thought about. But he might have realized कि भाई maybe it's not the best. But yeah, Rook 8 would be awesome for Prague, I feel. I think Rapport खेलने वाले हैं 46 minutes for Rapport now. That is confirmed कि वो prep में नहीं है. So over the board सोच रहे हैं, इतना confirm हो गया, but क्या वो best move निकाल पाएंगे? समय रहना को लाओ भाई, समय को आज तक कोई रोक पाया है? हाँ, कोई रोक पाया है समय को आज तक? जिसको आप रोक नहीं सकते उसको आप ला नहीं सकते भाई। वो अपने दिल की करता है और आगे बढ़ता रहता है भाई, एट अ कांस्टेंट पेस, कोई नहीं रोक सकता भाई। इंडिया लूजिंग टेस्ट वर्सेस इंग्लैंड, भाई तो चेस में जीत जाना भाई, फिर आज आज चेस बचाएगा भाई। मुझे याद है जब दिसंबर में नवंबर में क्रिकेट में इंडिया की लगी हुई थी, तो चेस ने, गुकेश ने बहुत दिल को अच्छी फीलिंग दी थी। और वैसे भी यार क्रिकेट में भी जीती जाएगी भाई, नहीं बनाती इंग्लैंड यार 371, नॉट गोना हैपन, इम्पॉसिबल। मूव टाइमर इज राइटिंग 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 मतलब अरविंद -1.2, क्या बात कर रहे हो भाई? चैट, Arvind is -0.8 actually, and I'm going to tell you something very clearly. If Arvind loses this, ये टूर्नामेंट तो गया। Like there are some things it's very hard to come back from as a chess player. And Arvind का डिसीजन जो होगा इस गेम से पहले would have been, you know what, this is my chance. This is my moment to strike. If I miss this, I mean, it's not going to get easier. So I'm still hoping Arvind can confuse matters. His confidence must be low right now. But I'm still cheering for Arvind. Hopefully he can confuse Wokidov, whom Arjun did confuse yesterday at the end. So there is some hope, chat. Do not worry. Arjun game पे जाते हैं. By the way, G4 के बाद G6 खेला. That's a hook, by the way. कपड़े टांगने वाला हुक नहीं, अटैक के लिए हुक, F5 H5 के लिए बढ़िया हुक है। एंड नाउ नाइट F3 प्लेड एंड 95, एंड आई कैन इमेजिन कि अर्जुन को यहां पे अटैक करने का मौका जरूर मिलेगा। दैट्स अमेजिंग। सो अर्जुन, आई वुड से स्टिल स्लाइटली हल्का फुल्का, बोलते हैं ना, बिल्कुल हल्का फुल्का बेटर। मीनवाइल प्र की गेम में जाएंगे, नो मूव फ्रॉम रैपोर्ट येट, एंड जितना रैपोर्ट सोच रहा है ना, उतना मेरा प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि वो गलती करेंगे। बिकॉज रुक C8 इज सच अ नेचुरल मूव कि अगर बुलेट चेस खेल रहे होते ना रैपोर्ट, मान लो वो BCC खेल रहे होते, ही वुड प्ले रुक C8 इन 1 सेकेंड, ही वुड प्ले इट इन 1 सेकेंड लिटरली।
सो मेरे हिसाब से द फैक्ट दैट ही इज नॉट प्लेइंग इट इज अ गुड साइन फॉर ब्लैक. ही माइट प्ले इट एट द एंड, बट जितना वो सोचते जाएंगे उतना रुक के चांस कम होते जा रहे हैं. या कार्तिक, एग्जैक्टली माय पॉइंट. यू डोंट स्कोर 350 इन द फाइनल डे. इट्स नॉट पॉसिबल. इफ यू ट्राई टू डू इट, आई थिंक दे विल लूज. सो वो ड्रॉ ही होगा या इंडिया जीतेगी. समय के स्टाइल में कमेंट्री करो भाई. अगर मैं समय के स्टाइल में या कोई भी इंडिया में समय के स्टाइल में कमेंट्री कर सकता तो बैंक बैलेंस सीमित होता भाई. बट व्हाट आई कैन डू इज कमेंटेट लाइक रैपोर्ट. अगर वो देखना है तो जाके देख सकते हो भाई. समय का भाई ही है रैपोर्ट वैसे. कैट की ऑपरेशन कर रहे या जीमैट की भाई? किसी की भी नहीं भाई. वोकी डोकी ये क्या है भाई? आ, आपका नाम मैं नहीं पढ़ूंगा बिकॉज I'm going to butcher the pronunciation, बट एट द एंड मैं प्लेयर के माइंडसेट के बारे में बता रहा हूं. लाइक नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूएशन. जब वो गेम खेलने आया होगा, दैट्स व्हाट इज थॉट प्रोसेस मस्ट हैव बीन. It will not be any different. I can guarantee you that. So Arvind, of course, wants to win that game. There is no doubt. And अगर उसको draw मिलेगा ना, he will struggle to accept that draw because उसको पता है कि उसका like he's lost a lot of rating by the way. He was world number 9. Now he's world number 20. And if he draws today, he'll drop even further. World number, he'll fall below Ding Liren now. So clearly, that will not work perfectly for him. So meanwhile, chat, full pressure. 42 minutes for Richard Rapport. Still no moves. भाई हैरापोर्ट टाइम नहीं बचा. ब्लैक के भी ओनली मूव्स है. आई नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट. जितना वो सोचता है ना उतना मेरा प्रग के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है. बिकॉज उसको फिर बढ़िया मूव्स तो निकालनी ही पड़ेंगी. वो तो है ही है. साथ में उसको लाइक यू नो ही माइट नॉट जस्ट प्ले रुक C8. एंड इफ ही डजंट प्ले रुक C8, प्रग के लिए बहुत बड़ा प्लस है वो. देन इज प्लान ऑफ बिशप C4 वर्क लाइक मैजिक. इंग्लैंड इज नोन फॉर गोइंग आफ्टर ओन बैकयार्ड. अपने बैकयार्ड में सब शेयर होते हैं भाई. बट नॉट अ प्रॉब्लम भाई. आई थिंक बुमराह है ना भाई. बुमराह रोकेगा. डोंट वरी. बुमराह, हैव फेथ इन बुमराह भाई. Arvind having a tough tournament. Have to agree भाई. Have to agree. I think if you showed him these standings before the start of the event, होगा भाई मजाक मत करो. Like it's been a nightmare for Arvind so far. Still hoping he strikes back. Still hoping he wins today. सो गया है वो भाई. गोखेश थोड़ी है. Only world champions sleep during chess games. डिंग का कैंडिडेट चांसेस यार बहुत कम. मे बी 1%, नॉट मोर देन दैट. याप इवांचुक इन द बैकग्राउंड. इनफैक्ट दोनों का बिल्कुल सेम पोज है प्लेयर्स का. ओके, रैपोर्ट फाइनली आई थिंक ही हैज मेड अ डिसीजन about to play. I think he'll play in the next, before the 40th minute. I think he will play before it reaches like 39 minutes. I think he will play very likely. सर भाई इस टूर्नामेंट में बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं कंपेयर टू टाटा स्टील. या एंड आई थिंक दैट्स आल्सो बिकॉज रेटिंग डिफरेंस ज्यादा है. लाइक टाटा स्टील में सारे प्लेयर्स आर इन द टॉप 20 और सो. यहाँ पे देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स हु आर नॉट इन द वर्ल्ड टॉप 20 ना. तो दैट्स व्हाई यू कैन बीट देम एंड गेट अ फ्यू विंस. एंड दैट्स ओके. आई थिंक नॉट एवरी गेम हैज टू बी दैट स्ट्रांग राइट. एंड इट्स ओके. एंड ऑल्सो स्टाइल भी है ना. टाटा स्टील में क्या है कि यहाँ पे रैपोर्ट है, अर्जुन है. लाइक they want to go for wins. Usually they create complications. So that's what I feel is also different somehow. यार 2.2 बेटर है अगेंस्ट अब्दुल सरफ. क्या बात कर रहे हो? If that's the case, that's amazing news. Because if Noderbek loses as black, then that gives every Indian again to win a chance. Like, that's a great chance for Indian players. So for every Indian player, in fact, every player in the tournament, if Noderbek loses, that's great news. Of course, we don't want Noderbek to lose, but from an Indian fan perspective, that works out perfectly. So no problem there. Meanwhile, going back to the game of Prague, because Rapport should play just about now, bro. 39 minutes. वो टाटा स्टील चैलेंजर्स था वासिफ भाई, नॉट द मेन मास्टर्स. आई थिंक, आई डोंट थिंक मास्टर्स में इतने 2600 थे. आई थिंक एक लोकल प्लेयर था. आई थिंक इट वाज जॉर्डन या कौन था. आई थिंक लोकल प्लेयर. एंड सी इट ऑन द बोर्ड भाई, as expected. I think Rapport has played the best move,
but he has taken a lot of time to play it. Will it bite him later on? Because अब now queen e2, so Rapport ने अपना काम कर दिया, only move निकाल दी. And as you can see that chess.com blue arrow highlighting queen e2 is the only move in the position. Will Prag find that? Question to you chat. अब लोग कहेंगे डरा रहा है टिक्कू, मैं डर गया, मैं तो कंजूरिंग देख के भी डर जाता हूं. But the point is chat, do you think Prag finds queen e2? Yes or no? I think he will find it. I think he should. And he shouldn't even take as much time. Bishop c4 जब खेला था, he would have realized कि bishop b3 तो possible ही नहीं है because knight hanging है. So attack होगा bishop, तो मेरे को defend करना पड़ेगा उसको. I don't want to move it back. So queen e2 is an automatic move here, I feel. Especially when b3 is not possible, right? b3 is the other alternative, but there is e4 check. And यहाँ पे आपको 2-3 चालों में resign करना पड़ेगा. Come on, come on, come on, let's go. What song has reversed against something? I don't know, yaar. I think this has just been a nightmare for Arvind. I'm still hoping. पता है कई बार थोड़ी luck चाहिए होती है. If some luck goes Arvind's way and he gets that one win under his belt, I think he will strike back. वो confidence का खेल है सारा. So really hoping Arvind can strike back. Meanwhile, chat, everything looks crazy in the Prague game and also looks crazy in the Arjun game, जहाँ पे we're gonna have a 10-second look before jumping back. Knight f3, and look at this chat. Sindarov makes a slight error already. And chat, Arjun should now start preparing for an attack. Rook f2, king h1, queen c2, rook g1, and just prepare for an onslaught. So, एक प्रॉब्लम है अर्जुन की बुश में, that's the e3 pawn. अगर ब्लैक ने यहां पे नाइट d6 खेल दिया, बिशप f6, बिशप g7 खेल दिया, रुक e8 खेल दिया, and he controls the e4 square. Let me show you how it can work, yeah? Just to show you how it can work. Of course, Arjun will not wait like this, but just to show you what the problem is. Let's say आप e3 pawn हैंगे, मैंने रुक e1 खेला. Now black is better. Because I can put the knight on e4 at any point. आपका अटैक खत्म हो चुका है. You are defending the e3 pawn. Knight e5 पे f6 से मैं लात कभी भी मार सकता हूं. And this is where I think Arjun will struggle. But इसके लिए बहुत टाइम लगता है. And that's what Sindarov might be trying. But it's not gonna be easy at all. So Arjun को बड़ा ध्यान रखना है. He has to maintain momentum here and not give black too much time. I think knight d6 is an interesting maneuver that could stifle down Arjun's attack. So Arjun sochte hue, I think about to play a move maybe. Meanwhile, Prague has played queen e2 chat. Amazing news. Prague has played queen to e2 in just about a minute. But then Rapport also plays the only move e4. And now, chat, we are on the critical moment, possibly of the entire game. This is the moment jahan Prague has to come up with the best move. Has to come up with the best move. There is no option here. Let me show you chat, ठीक है? ये क्या था भाई? मैं सेटिंग्स को चेंज करनी थी, दिखती है क्या बोर्ड पे? दिखती है, फिर छोड़ो. The point is, chat, if you take b3 is losing. It's literally almost lost for Prague. You cannot take that pawn. If you play something like, I don't know, what can you play? If you play bishop b3, I want to attack the rook. Then ef3, attacking your queen. If queen f3, there is queen b5, you lose the knight. So gf3 marna padega. And now simply rook a5 and look at your knight. It's trapped. The only square is knight d4, but then rook takes c1, boom, rook takes and bishop takes, and दो bishop है मेरे पास, and black is really better here, and white is struggling. ये एक bishop जो है pawn से blocked है, there is no attack for white anymore, and black will win this game, very very likely. So यहाँ पे e4 के बाद what should white play? So एक move white थोड़ा engine हल्का सा recommend करता है rook at g1, but I'm gonna guess after b3, bishop takes b3 and rook b4, this is again dangerous. Now knight a3 is the only move, rook a8, and this is a bit difficult. I think the most logical move is actually rook h1, which is not obvious to me, honestly. Why rook h1 is the best move? It's not so obvious, chat. So Prague decision
इतना आसान नहीं है. He has to move one of the rooks to E1. Sorry, not the only the H rook actually, not the D rook. The H rook to E1. Wow. Or F1 actually. It's not even clear to me why moving the H rook is so important here. So super important moment for Prague. Noderbek losing. क्या बात कर रहे हो? By the way, Noderbek has just blundered. That is great news for the Indian players because if Noderbek loses, he loses his lead. So Yakubov playing for the Indian players. Meanwhile, Arvind is -1 now. This is turning out to be a nightmare tournament for Arvind. Bishop e6, and now b3 was a bad move apparently. And black will now play g4. Black has more pieces on the king side. Black could gain the a file whenever he wants. And things are not looking good for Arvind Chidambaram. He needs to strike. He needs to strike today, hoping he can. But फिलहाल के लिए things going south. Arjun meanwhile has played queen c2. Black has played knight d6. And यहाँ पे Arjun has to be precise. Let's play rook f2. Let's bring this rook into the game. Maybe king side step. And slowly he has to decide कहाँ पे मुझे break करना है. Is it f5? Is it h4, h5? Is it g5? वो सब देखना पड़ेगा. Is it just g5 and knight e5? बहुत options है. But he needs to be absolutely clear because pawns cannot go back, chat. And he has decided to play g4. Once you do decide to play g4, you cannot go back. And if you keep the pawns like this, why did you even push these pawns? इनका कुछ फायदा उठाना पड़ेगा, ब्लैक किंग को अटैक करना पड़ेगा, एंड ही विल हैव टू चूज. आई थिंक f5 कुड बी द ब्रेक थ्रू बिकॉज व्हाइट के सारे पीस ऐसे सेटअप है, रुक भी खुल जाएगा. सो कभी ना कभी होगा. विल कम बैक टू दिस व्हेनेवर दैट हैपेंस. मीनवाइल गोइंग टू द प्रग गेम जहां पे e4 के बाद लुक एट प्रग अंडर प्रेशर. ही इज अंडर huge pressure right now. Rapport casually chilling. इनकी भी पानी की बोतल खत्म हो गई अब. सो काउंटिंग द बॉटल्स 1 hour 40 minutes लगे रैपोर्ट के बॉटल खत्म करने में. सो जो मैथ्स के फैंस हैं जो 10th के बोर्ड दे चुके हैं वो कैलकुलेट करें. इफ प्रग फिनिशेस 1 bottle in 1 hour and Rapport finishes 1 bottle in 1 hour 40 minutes, then how many bottles do they finish in 5 hours? Come on, chat, let's go. Sounds like a typical maths problem, yeah, actually. Why not b3? The b pawn is pinned. You cannot play b3 because the bishop is pinning that pawn. Your king is gonna get attacked. So you cannot push b3, chat. Ludwig always comes back. Calm. I know he always does. But I think फिलहाल के लिए good news at least कि भाई थोड़ा pressure में है. Arjun mistake chat कह रही है. I'm gonna check that. Queen g2. Now, chat, it might be an objective mistake, but I think it's a decent one because he's putting the queen opposite the king. It cannot really be a bad move, I think. It cannot be a bad move, I feel. So maybe it's not the best though. So hoping Arjun can still create some pressure. And Sindharovko apparently now has to bring the queen back to d8, which is again not easy. And it's a decent move. I don't think it's a bad move actually. So फिलहाल going back to the game of Prague, जहां पे Prague is still thinking. आंसर Prague 5 Rapport 3 total 8. अरे बहुत लोगों ने बता दिया यार. नाइस. लाइक कई लोग मैथ्स में स्ट्रांग है भाई. क्रेजी यार. तुम लोग तो इंटीग्रेशन डिफिनेशन भाई सेकंड्स में कर लेते हो भाई. मुझे याद है जब मैं पहली बार फिटजी की कोचिंग में गया था 11th में, तो एक हमारे टीचर ने लिखा भाई dy/dx. तो एक बंदा कहता है सर डी कैंसिल नहीं हो जाएगा तो y/x हो जाएगा. सो वही याद आया मुझे भाई मैथ्स से. That's where maths is now. Salva, I think Gukesh's opening is the only problem when it comes to pure chess. He plays well. Based on Norway chess, I have to agree, but I think GCT Gukesh का अच्छा नहीं गया था in terms of chess also. So based on Norway chess, yes, but I think we need more data. Gukesh ने इतने tournament नहीं खेले हैं अभी because he prepared for the world championship. How can his opening prep be so bad? It doesn't make sense to me, at least logically. So थोड़ा और wait करो. We might get more information about Gukesh's play. Queen c2, by the way, Vivek saying, yeah, queen c2, putting your queen opposite the bishop, releasing your knight, and chat, black to play. If queen c2,
what is the best move for Rapport, which will force Prag to resign? That's a good tactic, by the way. Come on, chat. What is the best move for black here? Simple tactic. Not simple, but yeah, nice tactic, let's say. The best move is, there are many moves actually. You can play many moves. I think rook a5 is okay. But the best is queen takes b5. A queen sacrifice. And now it defends the rook. तो आप rook को नहीं मार सकते. आपको queen मारनी पड़ेगी. And आपकी queen भी मर जाएगी next. And if you take this, you feel like I got the rook back. But rook takes b2 and it's mate in one. Literally rook b3 is mate because bishop यहाँ पे है. So you will lose the game. You cannot play queen c2 here. That will be game over. That's why I said like it's very difficult. अर्जुन मिस्टेक यार, एक और मिस्टेक तो नहीं करी उसने. नहीं नहीं, आई थिंक वही एक हल्की सी मिस्टेक थी, हमने देख ली वो. इट्स नॉट अ बिग मिस्टेक, डोंट वरी. Come on, chat. Come on, come on, come on, plug. You need to find, and I think एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है which should not be underestimated, कि अगर प्रग टाइम पे एडवांटेज बना के बेस्ट चाल खेलते हैं, I think that is the best case scenario, because in that case you are really going to make sure कि there is no chance you mess this up. अगर कल को मान लो टाइम आपने यहाँ पे 20-30 मिनट यूज कर ली है, then the chances of you making a blunder go like exponentially high. You can't play b3 chat because king is right now on a1. तो परख सोचते हुए Arjun has not played any. Oh, by the way, Sindaro has gone to d8. So as of now, playing the best moves. And I think chat यहाँ पे white के सारे piece at least कुछ तो कर रहे हैं. The only piece not doing anything is the rook on a1. So Arjun को अब decide करना है कि where do I want to put the rook? That's an important decision. अगर उसको e1 पे रखना है तो he should play rook e1. अगर उसको रुक्स डबल करने हैं, then he should play rook f2 now and then here. Or if he wants to put the rook opposite the king, then king h1, rook f2 and rook g1. So depends on how he wants to play this, but इस रुक का फ्यूचर तुम्हें अभी डिसाइड करने का. 12th आ चुकी है, कॉलेज के फॉर्म भरने का टाइम आ गया है. बता दो भाई, इंजीनियरिंग की भाई कॉमर्स, अभी बताओ. ठीक है, सब बढ़िया. तो भाई कैसे हो द लेजेंड यथर्थ भाई? ऐसा क्या है? Chad, not Chad. Nice, nice, nice. But I think हर स्ट्रीमर को आदत होती है चैट बोलने की. It's like a very heartfelt word. Like as a streamer, I think chat is दिल के बहुत पास होती है भाई. उनकी में ना क्या स्ट्रीमिंग. साहिल भाई, मैं गुकेश इस गेट कीपिंग ओपनिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, व्हाट डू यू थिंक? भाई इट्स टू अर्ली टू गेट कीप प्रिपरेशन बिकॉज़ ही डजंट इवन नो हिज ओपोनेंट येट. जब ओपोनेंट पता लग जाए ना, उसके बाद यू कैन से कि हाँ भाई मैं प्रेप छुपा रहा हूं. बट तो ओपोनेंट ही नहीं पता तो ओपनिंग प्रेप जाने का मतलब ही नहीं है. इनफैक्ट ही वांट्स टू यूज ऑल हिज ओपनिंग प्रेप जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की इस्तेमाल नहीं हुई, बिकॉज अगली बार लाइकली वैसे भी काम नहीं आनी, बिकॉज ओपोनेंट माइट बी डिफरेंट. इट विल डेफिनेटली नॉट बी डिंग 99%. सो मेरे हिसाब से तो ही मस्ट यूज एवरी सिंगल रिपरेशन ही हैज. By the way, Arjun still thinking. So going to the Prague game, no moves by Prague still as he falls below the 1 hour mark. Arjun game दिखाओ. Let's have a look. By the way, Queen B2 खेला and Black ने G4 नहीं खेला. He apparently had a chance to attack on the king side. G4, अगर H4 खेलते हो, knight H5, और अगर बिशप यहाँ पे जाता है तो G3 traps the bishop. तो this would have been amazing. यही है अगर यहाँ पे वोकिडोफ के बदले नोदलबेक होता, उसने instantly G4 खेल दिया होता. And this is why I feel Arvind still has a chance. कि Vokidov has not gone for the critical variation. And now Rook A1 played, and again, I think Arvind is back in the game. That's great news. Rook exchange होगा तो mate करने के chances बहुत कम हो जाएंगे. Vokidov has not come up with the G4 plan yet. And that's amazing. So Arvind still in hope. Going to the game of uh, Purag again. Can he find the only idea of getting one of the rooks to E1 or F1? Why is it the best move? God knows. For example, let's try to figure out, yeah? Let's say I play rook H2. Rook A5 is the idea, apparently. And if I play rook H1 back, like I'm passing the move, takes, and now bishop C2. What?
भाई ये ये बहुत डिफिकल्ट है भाई. बिशप C2. If you take, I pick up with the queen and the bishop is gone. Black will win two pieces. Oh my god. And if I save the rook, then bishop. Oh! This is pure beauty. This is the best maneuver I have seen all year. What a maneuver! Bishop C2, bishop A4 to win the knight. So easy to miss. Yeah, this is beautiful chess. So as you can see, the task that Prag is, been given is not easy at all. And Prag को बड़े ध्यान से यहाँ बहुत टाइम लेना पड़ेगा उसको यहाँ पे. This is not an easy position to be in. So एक काम करते हैं. Let's go to Arjun because Prag टाइम लेने वाले हैं. Meanwhile, H4 paired by Arjun. भाई साहब अर्जुन तो रेडी है भाई. अर्जुन ने सारे पॉन फेंक दिए. And now black plays the best move, king to h8. So very interesting moment, chat. H4, king to h8. Will Arjun continue on the attack with h5? He can launch a fierce attack here, but direct h5 might be a mistake because takes, and there is rook to g8 and you lose the queen. So you have to be very, very careful on which pawn you push. Same for the f pawn. Again, takes, and rook g8, you lose the queen. So how can Arjun move forward is a critical decision here. And Sindarov right now feeling confident about his position. The bar says black is even better, but practically I think white ke paas attack hai. If white can keep attacking, bringing more pieces into the game, launching attack, then black के गलती करने में कोई टाइम नहीं लगता. But अगर black ने गेम बचा ली, अटैक बचा लिया, then in the end game he might just be better or winning. So बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये. Abdu completely losing, really? Yeah, I'm not sure it's completely losing yet. I think he's definitely worse because Black Pawn's weak, but we know how strong Nodirbek is. Sometimes he comes up with a draw. So, but great news for Indian players that he's worse because बढ़िया है. We Nodirbek एक point आगे है, so that is amazing. But Arjun right now launching a fierce attack. And this is the moment, chat. Dono games में actually, Arjun and Prag, we are in the critical moment. This move could decide the game. I think Arjun is about to play something. He has played King F2. Oh my god. What? Chat, that is freaky as hell. That's an insane move, King F2. Wow. He is threatening H5, I think. And let me show you how crazy this position is now. If black passes, let's say plays A6 here. Now already I am ready for H5. Or even just Rook G1 or H5 directly. If you take, I will ignore everything. I will not take the pawn back. I will not even play G5. I will play Rook H1. And if you take this, boom, King G8, Queen H2, Knight bhi maar diya, check and mate. This is Arjun's plan. अगर मैं ब्लैक होता तो, लेकिन मैं ब्लैक नहीं हूं. So the plan is Rook H1 next, H5 incoming. Now Sindarov has to be very careful. The best move for black is actually the impossible move to play H5. There is no way on earth Sindarov is going to play H5 here. I will be shocked. I will be genuinely shocked if Sindarov pushes the pawn. I think Sindarov deserves the win. अगर सिंदारोव ये मूव निकाल सकता है ना भाई, तो लेजेंड है भाई. जीते भाई गेम फिर. This game move is so difficult. You never push pawns on the side you are weaker. Where white not only can push, white can take, white gets the G5 square. This is so difficult to play Sindarov. Chat, I think Arjun has played a great practical weapon. It's not the best plan. It's not the best move. But black ka defense jo hai, that is incredibly difficult. And again, just to show how practical this move is, black's second best move is Queen B6. Which is equally impossible because black abhi Queen D8 लेके आया है पिछली ही चाल में. So both black's moves which give him an advantage is impossible. I will be shocked
I'll be shocked if Sindarov finds h5, and then kudos to him for finding it. So meanwhile, chat, one look at the PRAGG game. Has something happened? No moves by PRAGG still. We can sense how difficult this critical moment is. Arjun has found a great move in the critical moment, but can PRAGG also do so? साहब लगी और आप 100 रैपिड गेम्स खेलोगे. रैपिड पता नहीं, क्लासिकल में आई थिंक आई हैव अ डिसेंट स्कोर. Rapid, I'm not sure. Rapid is not my forte. I don't like playing rapid because you can't really play as blitz. Yeah, you can't enjoy, and you can't really get a lot of time. So classical, me, I think I'll have a decent record. Yeah, I don't know. He'll still have more wins, but rapid, I think he will crush me. Yeah, rapid and blitz, he's too strong. Meanwhile, chat, going to the game of Arjun back because it's still getting spicy by the minute. And Sindarov now in a critical moment. Chat, question for you. Will Sindaro find pawn to h5? Yes or no? Come on, chat. What do you think? What do you think, chat? Will he find pawn to h5? I don't think so. I really don't think so he can. Did Prag play the next best move? He's not played yet. About to play. He's about to play. Will he play the... I think he's about to play the h-pawn. No! He's playing the h-pawn! I cannot believe it. He's about to play the h-pawn. That's an insane find from Sindarov if he plays it. He's about to play the h-pawn. I am genuinely shocked. Wow. I am genuinely bamboozled at the fact that he's about to find h5. Wow. Sindarov is in great form. Great point there, Sakar bhai. And we're going to, of course, come back in a second. One look at the PRAGG game. Has PRAGG played? No moves yet. So jumping back to the Arjun game. Jaisi PRAGG chal khelega, will jump there, chat. And he has played it. Oh my God, bhai. He finds h5. And now Arjun under pressure. I don't think Arjun expected him to find h5. Chad, let's look at the idea. First of all, it completely stops my h-pawn now. I cannot open a file. Threat is h takes, yeah, bishop takes. So I cannot ignore this pawn. For example, how do I ignore this? I'm a knight yahan pe khelu, this bishop h4 check. I cannot ignore this. So my options are limited. Either I take, but then black takes and rook g8 aa raha hai. And if I play knight g5, trying to cement this, bishop g4. And at the correct moment, at the absolute correct moment, I'm going to play f6. Your knight will come back. And I think black is just better in that game. Second option for Arjun is to play g5, at least block this bishop. But he's given up the f5 and e4 squares. I have e5. I get this square, but you get 2 squares. In fact, 3 squares here. I don't think that's a good trade for Arjun. Chat, mere hisab se Arjun saw h5. He thought, and that's how he usually plays, right? He plays the tough move, the second best, third best move, hoping that his opponent doesn't find the best move. And his opponent on this occasion actually found the best defense. So now he has to be careful. You cannot move the knight. h4 hangs. You cannot, taking, I think, would allow rook g8 at some point. So Arjun's hands are tied. And now black is the one who might be attacking. The bishops are absolutely dangerous, crushing pieces here. We need a slight mistake from Sindarov. Meanwhile, has PRAGG played? No, PRAGG is also not played. As of now, chat, all 3 games in a limbo. We have ARAVINDH, who's clearly worse. We have a few moves now. And g4 played by black finally. So ARAVINDH slightly worse, minus 0.6. Arjun slightly worse, minus 0.7. And PRAGG in a critical moment with the only move he has to find, moving the rook to h1 or f1, e1, sorry.
So all three Indian players right now in a critical crunch moment. One mistake, you lose. One mistake from your opponent, you win. It could be 3-0 or 0-3. कुछ भी हो सकता है चैट. भाई क्रेजी दिन है आज यार. Today is an insane day, chat. Wow. Just wow. Meanwhile, we can see Avasov in the back. He also qualified to the last candidates. इस बार करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं. But Arjun, meanwhile, fully focused. G pawn में problem ये है कि यार you are giving up these bunch of light squares and black will now, for example, could play knight f5 or bishop f5, even better. You take, I take. Now, at some point, I'm going to play knight d6 and knight e4. And इसका मतलब कि you are basically fighting for a draw desperately. For example, let's say rook a d1, knight d6. Okay, I can even wait. Actually, queen b6 is also very strong. बाप रे, rook d2 defend करने के लिए bishop b4. Chat, this is typical, yeah? For example, now let's say I try to bring my rook e1 खेला मैंने. I play knight d6, king g1. Now I take, and put the knight on e4. And this is lost. Like, this is going to be very, very difficult. Maybe there's a better move. Rook f8 is actually even better. This is dangerous. If I want to compare this in real life, it's like imagine a war. Imagine Imagine wearing a bulletproof jacket, but you have left the part, where your heart is open. There's a clear point, where your enemy can focus on. He knows where to target. That's the problem here. And you have pointed towards it. He knows exactly what's happening. So I think yahan pe Arjun in under pressure, but maybe Sindarov might not find the best ideas though. So Arjun meanwhile thinking, one look at the game of PRAGG, still no moves by PRAGG, chat. चल क्या रहा है भाई, इतना difficult है. He's been thinking for 20 plus minutes now. So PRAGG still thinking. Arvind, by the way, has played c4. Okay. Decent move, opening the queen's path. Not sure how the bishop feels about this move, but I'm guessing he's calm. Maybe you'll sacrifice it for the knight at some moment. Or if black takes and the bishop enters via this path on a good day. But yeah, the bishop not feeling happy right now. A very, very bad bishop, I will say, blocked by its own pawn. Should be in red, actually. Red color ka hai. And going to the Arjun game back, jahan pe Arjun 38 minutes now to play 22 moves. Arjun needs to play fast. Arjun needs to play quick. Come on, come on, come on. Still no moves. Sindarov's accuracy, by the way, is clearly higher than Arjun's. 97.9 for Sindarov, 96 for Arjun. So black moves natural lag rahe. That's another point, Shreyan bhai. And black's moves look very, very natural now, of course. H5 was the difficult one. So that's what he found. And ab natural moves to nikalna easy hai hai. So if he can find H5, he can find the following moves as well. Chat, stream like kar do. Let's get to 500 likes jaldi se. Jaldi bhai log, come on, let's go. And let's hope the Indian players win. 95 doesn't work here because the knight is defending the H pawn. I can give a check now. And your king is stuck. Next I will also take on G4 here. So it doesn't work that way. 0/3 तो कभी नहीं होगा. I'll be shocked actually. मैंने मजाक में बोल दिया. 0/3 कभी नहीं उसका. 3-0 के chances ज्यादा हैं. Sir. Oh my God. What did I tell you, chat? PRAGG की पोजीशन आसान नहीं थी. मूव निकालना आसान नहीं था. And ये rookie one move is super weird. And PRAGG has just made a big mistake.
He played bishop to b3. It's not like a losing mistake, but it is a mistake if Rapport finds the best moves. And this is the exact endgame we saw. Let's have a look how. Now, e takes f3. Why? Opening up the bishop. You can't take with the queen because queen को घोड़ा बचाना है. So pawn से मारना पड़ेगा. And now the move is rook a5. Idea is I just want to win your knight for free. अब नाइट को बचाना है. कौन सा स्क्वायर है? यहां पे मर जाएगा सब जगह. सो एक ही स्क्वायर है मेरे पास, वो है नाइट टू d4. एंड दिस इज वेयर ब्लैक कैन लॉन्च अ टैक्टिक. Rook takes c1, distracting the rook from defending the knight, takes and takes. And chat, yahan pe black is actually better. It's not loss for Prague. Prague can fight, but as of now, Prague is clearly worse. अगर यहां रैपोर्ट ef3 निकालते हैं and then he plays here. अगर डायरेक्टली rook f5 खेलेंगे, it's not the same because now I can play this. And if you try this check again, rook c1, bishop d4, I take on e4. I win an extra pawn. And now I think white is better. Bishop g4, queen e1, I can also win this. So, super important to first take on f3 for Rapport. Rapport is not in the best shape. Hope he makes a mistake. I know, but he's not in the best shape, but he's been playing fabulous chess in this tournament so far. No mistakes from Rapport so far. Look at the accuracy, by the way. Prague 97.2, Rapport 99.7. It's crazy. This looks practically losing with the bishop pair. And he has played the best move, chat. Rapport on fire. I think pawn takes बहुत जल्दी आएगा. There is no other option. Queen से मारने पे हमने कहा knight यहाँ पे hanging है. And now rook a5 is the only move, chat. If Rapport wants to win, that's rook a5. Everything else is actually winning for Prague. So Rapport still in only move territory. But rook a5 is an obvious move actually. It's not so difficult. So I'll be shocked if Rapport doesn't find rook a5. Yeah, unbelievable accuracy. 99.7 after 21 moves. And abhi chat, तीनों Indian वर्स है. Can we have all the boards एक बार for a second? All the 5 boards on camera. You can see in every Indian game, center top, and right bottom, black is slightly better. So Indians have white on all 3 boards. And they are worse on all 3 boards. They are also behind on the clock in the Arjun game. So भाई थोड़ा डर लग रहा है भाई. Going back to the board now of Prugs. भाई stress हो रहा है भाई. Param Nepo is not as important. You can see it right now. Like it's balanced. It's equal. Itna important. Anyway, let's go to the board now. For full camera wala. Yeah. Awesome. Thank you. And फिलहाल के लिए chat. Rapport about to play the only move that gives him the edge. Man, क्या stress हो रहा है यार. Not an easy day for the Indian players. सारे opponents challenge कर रहे हैं. Rapport is much stronger than I anticipated even in chess file to ding in game 13. I know. Rapport is pretty strong. It's not an easy opponent at all. And one of the rare players who has crushed Magnus, by the way. He won a famous game against Carlsen, जहां पे literally धोया था Magnus को. क्रिकेट चेस दोनों में स्ट्रेस. अरे भाई पोएट्री लिखते हो यार आप लोग तो यार. डोंट वरी, दोनों में जीतेंगे भाई. दोनों में जीतेंगे. डू नॉट वरी. अगर डायरेक्ट जीत जाए तो मजा नहीं आता. एक वो हीरो का ना एक आर्क होता है. पहले थोड़ा लगना चाहिए कि हम हार रहे हैं भाई. यू हैव टू बी द उदय चोपड़ा फ्रॉम धूम. सॉरी टू मेंशन दैट, बट अगर हीरो होना है थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट आर्क होना चाहिए. विन 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 इज नॉट फन भाई. पहले थोड़ा हार, थोड़ा डर, थोड़ा पैनिक, एंड देन यू स्टार्ट विनिंग. दैट्स मोर फन आई थिंक.
वर्ल्ड कप लोकेशन, यार मैं खबीब बनता जा रहा हूँ फिडे को बोलते बोलते, सेंड मी लोकेशन, फिडे भेज नहीं रहा है। बट आई थिंक इट्स 99% गोवा कंफर्म्ड। लाइक फिडे की साइड पे नहीं है, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस एंड ऑल्सो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की गोवा है। बट फाइनल कंफर्मेशन अभी मुझे नहीं मिला है लाइक फ्रॉम फिडे। सो फिलहाल के लिए रुक के 5 इनकमिंग, 33 minutes, 44 minutes, Rapport behind on the clock. That's one silver lining for Prague. Time पे थोड़ा आगे है. But after rook a5 and that variation knight d4 rook c1, I really love the bishop pair, man. Maybe I have queen c4 though. Oh, but I can't play queen c8. Bishop also controls. अरे यार, अगर मैं queen exchange कर पाता ना, maybe there was some hope. But yeah, queen b4 मारा, rook b5, queen c4, rook c5, queen b4. This is difficult. यार queen घुस रही है. This bishop is stupid actually. I would love to have the dark square bishop. ये लाइट्स, काश मैं ये ऐसे कर पाता भाई. That would be amazing. Why would be completely fine then? The bishop on b3 blocked by its own pawn cannot be used for an attack. Cannot be used to defend the b2 pawn. Like it's completely useless right now. Of course, right now is useful defending a2, but after this variation, it's completely useless. हार कर हार जाने वाले को नीमन कह रहा, ये क्या है भाई? अच्छा है हम लोग हिंदी में स्ट्रीम करते हैं, लोग कहते हैं ना हिंदी इसलिए करते हैं हम लोग. अर्जुन ब्लंडर? नहीं. व्हाट? ओ माय गॉड. व्हाट? भाई अर्जुन हैज डिसाइडेड आज आधा पॉइंट लेके मैं नहीं जाने वाला. भाई आई रिजेक्टेड दिस मूव इंस्टेंटली बिकॉज ये चेक आ रहा है. बट अर्जुन क्लियरली हैज सीन समथिंग. Oh, he's about to play the best move, Sindarov. Sindarov looks excited right now and भाई गलत पॉन मार दिया उसने. उसने भी h4 नहीं मारा. व्हाट? भाई सिंधारोव ट्रस्टेड अर्जुन. सिंधारोव ट्रस्टेड अर्जुन एंड अर्जुन ने दगा दे दिया भाई. भाई उसको बिशप h4 मारना था पहले एंड किंग e2 के बाद मारना था. भाई बाल बाल बच गए यार. ही टुक ऑन g4, knight g4, h g4 and अर्जुन बैक इन द गेम. भाई बैक इन द गेम. बच गए भाई, बच गए, बच गए, बच गए. Okay, but still, yeah. So now queen g4 will happen, of course. Bishop h4. But chat, now it's not easy to take this pawn for Sindarov because अगर अब मारोगे, I'm going to put the king to g2 and rook h1 incoming. अच्छा king g7 है लेकिन, oh, that is painful. Oh, it actually still wins for black. Rook h1, rook h8. Ooh, Arjun still actually has taken the pawn on g4 now, chat. Just to point out, bishop h4 was winning for black apparently. But Sindarov misses it, takes on g4. Pawn, knight takes, pawn takes, queen takes, and now Sindarov has to take the pawn. Will he have the courage to take that pawn? I think he will. He has to. No one right point will ever open the h file. No, he could have in this case. Because now he can take chat. He has to. भाई साहब सिंधारो ओपी इन द चैट. भाई सिंधारो ओपी इन द चैट. जीती हुई गेम ड्रॉ में बदल दिया उन्होंने. भाई बच गए भाई. भाई बच गए भाई. बच गए भाई. आंखों में खुशी के आंसू. बच गए भाई. बच गए भाई. भाई इसी बात पे स्ट्रीम लाइक करो, बनते हैं भाई 500 लाइक तो हो जाने चाहिए कम से कम. कम से कम भाई, वरना अर्जुन विल बी डिसअपॉइंटेड भाई. सिंधारो भाई वापस ले लेंगे मूव और बिशप से पॉन मार देंगे तुमने नहीं किया लाइक तो भाई. बनता है भाई. And if Arjun wins, of course, now it's dead equal. But if Arjun can win, he could be the new world number 3 today. But okay, we'll have to see now. I think I would choose Arjun now, actually. Even Queen c8, Rook c8, Rook h1. I would rather be Arjun here.
आई लाइक द बिशप ऑन डी3। आई नो ये पॉन थोड़ा E4 स्क्वायर वीक है, बट आई हैव द गुड बिशप नाउ। आई कुड स्टिल अटैक यू विद माई टू रुक्स एंड देन गो तुक 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 तारा। आई थिंक पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। सो मुझे लग रहा है अर्जुन कुड पोटेंशियली ऑल्सो विन दिस। ऑफ कोर्स ड्रॉ के चांसेस मैक्सिमम है, बट दैट्स अ नाइस टर्न अराउंड। मैं कान लिया था। अरे जयंत भाई, आपने बचा लिया भाई। सहज प्लान बी, जयंत। Meanwhile, chat. So queen c8 is the move. Arjun can trade queens. He can play rook g1. He can play f5 also actually. Also possible. And now knight f5 will be the only move. Wait. अगर अर्जुन ने ये खेला भाई, that will also be okay. मारा 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 किंग e2, बिशप h4, बिशप रुक h1 लॉस्ट है तो नहीं मार सकते। किंग g7, रुक f5, बिशप h4 नाउ, चेक, किंग है। ओ भाई ये तो स्टिल कॉम्प्लिकेटेड है भाई। भाई यहां मिनट हो सकती है यार, यहां मिनट हो सकती है भाई। इट्स नॉट ओवर येट, सो लेट्स वेट। दिस गेम इज स्टिल इंटरेस्टिंग एक्चुअली, ईदर वे any side can win. So very nice development there. Sundar of making a mistake, but going to the Prague game now. Has Rapport played? Rapport has played Rook A5, and Prague is now objectively worse. Chat. अर्जुन गेम बचाते हुए, बट क्या Prague बचा पाएंगे? मुश्किल मुश्किल मुश्किल। प्रग की गेम में चलो आ गए भाई, उड़ के आ गए भाई, स्विमिंग करते हुए आ गए हम। डैम, एंड देयर इज नो वे टू सेव द नाइट। चैट इफ बिशप C4, अगर तुम्हें याद हो मैंने एक बढ़िया सा मनूवर बताया था, कौन बताएगा? ब्यूटिफुल मनूवर विच आई मेंशनड अभी 10 मिनट पहले। तो जैन भाई लग जाओ हिलाने में कान अपने, प्रग को बचाना है। रक्षत भाई कितना पीछे चल रहे हैं भाई, बहुत पीछे चल रहे हैं स्ट्रीम में। आगे आओ भाई, आगे बढ़ो। Chat, it is bishop c2. Yeah, you can't take this because of queen b5, and you lose this as well. So bishop c2, and if I play anything, rook d1, bishop a4 basically traps the knight. So I hope Prag doesn't miss this, by the way. It is possible that he misses bishop c4 and then he completely misses bishop c2. But human logic should dictate कि मुझे एक ही पीस को दो बार नहीं चलना है if possible. So by that logic, I think he should see this maneuver and he should play, चाहे वर्स ही हो, but he has to play knight d4. That's the only move in the position to even continue the game. अगर कुछ भी और खेला, Prag is completely lost. So let's hope so Prag doesn't make that mistake here. Chat, stream like करते चलो. Let's get to 500 likes as Prag thinks. Super important moment. Game deciding moment. Prag is playing with the two pawns there. Calculating variations. Rapport type position लग रही है. I agree. It is. That's why he's playing so well. Look at his accuracy. 99.7 with 6 great moves. I mean, who can say उसकी type की position नहीं है? 6, by the way. That's insane. Noderbek losing. Yeah, we know Noderbek losing, chat. Let's hope so he loses ताकि इंडियन प्लेयर्स को मौका मिले वापस आने का. Uh, not gonna change the camera. Just will show you the board briefly. ये है Noderbek का board and he is clearly worse, but he's not completely lost yet. The game goes on for now. So going to the game of Arjun, कुछ हुआ क्या? No, no moves yet. And now we go to Prag's game again. Will Prag find the only move? Yep, Arjun is fine now. Noderbek losing against Noderbek. That's nice, bhai. पराग भाई 41, टाइम है अपने पास, डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, टाइम तो है। बट ही डजंट हैव एन ऑप्शन, लाइक व्हाट इज ही थिंकिंग? चैट पता है क्या होता है कई बार ना, लाइक यू कैन टेक टाइम, बट द प्रॉब्लम इज यहां कोई और मूव है ही नहीं। देयर इज नो सेकेंड ऑप्शन। सी इफ यू आर द लास्ट man alive on earth,
तो किसी को भी शादी करनी है तुमसे ही करनी पड़ेगी ना भाई, किसी भी लड़की को। दे हैव नो चॉइस। तो सेम वे यहां पे प्रकाश एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, दैट इज नाइट टू D4। सो दैट्स व्हाट वरीज मी अ बिट कि वो कुछ और ना खेल दे। ओ बाय द वे लुक एट दिस, ओ माय गॉड, अर्जुन एरिगैसी इज द एब्सोल्यूट मैडमैन भाई, इनसेन प्लेयर। कहता है भाई मैंने करना है अटैक, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई किसी चीज से, हार गया तो हार गया, फर्क नहीं पड़ता, मैं करूंगा अटैक। भाई ऐसे प्लेयर्स के लिए बहुत इज्जत है मेरे दिमाग में भाई। क्वीन टू G2, एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर चैट, यू वांट माय ऑनेस्ट ओपिनियन, आई थिंक दिस मूव इज गोटेड भाई। साहब का डायलॉग कॉपी कर रहा हूं, दिस मूव इज अमेजिंग, this move is beautiful because it maintains the attack and gives only a slight edge to black. Knight e5 में problem क्या था? It was completely lost if black finds the best move. That's why it was a mistake. But queen G2 is only slightly worse. And now I am threatening H5, rook H1, and you can't take this time. King E2 and rook H1 is much stronger. मेरे हिसाब से, एंड ऑल्सो ब्लैक ने कहा भी है 2 बार कि मैं नहीं मारना चाहता ये। मुझे लग रहा है क्वीन G2 इज अ गुड मूव। आई लाइक दैट मूव फ्रॉम अर्जुन। इट रियली पुट्स अप अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड ही इज गोना अटैक हियर, एंड सिंदारोव प्रेशर फील कर रहे होंगे, आई कैन टेल यू। ग्रेट मूव, आई लव दिस मूव हियर। अगर लड़का बचा है तो भाई वो अब हो गया, एनालॉजी एक ही बार होती है भाई, दो बार नहीं होती। So going to the game chat, let's have a look. Meanwhile, Sindarov struggling. प्रग ने अभी भी चाल नहीं खेली है भाई, खेल दो नाइट D4 प्रग भाई, कम ऑन। आई एम रियली वरिड नाउ। I don't think that's a mistake from Arjun Monkey Master. That's not a mistake from Arjun. I like that position from Arjun. It's an attacking. He's going for an attack at the cost of slight risk. That's how Arjun plays. It's his style. That's what got him to 2800. And if he wins today, he crosses Fabiano Caruana and becomes the new world number 3. And कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में हिकारू नाकामुरा कह रहे होंगे, अरे यार ये बंदा मुझे टूर्नामेंट खेलने में मजबूर करेगा ही करेगा। आ रहा है मेरा स्पॉट लेने कैंडिडेट्स का। सार्थक जॉनसन प्रसाद, क्या नेम है, वाह। नाम तो यूनिक है भाई। इफ सार्थक मैरी स्कारलेट जोहानसन तो यही सरनेम हो, यही नाम होगा ना उसका भाई, फिर मेक सेंस। बट स्टिल थिंकिंग, ही हैज लकीली, देखा वो टाइम कितना काम आ रहा है जो पहले उन्होंने फास्ट खेला, दैट इज रियली हेल्पिंग हिम नाउ। बट कब तक हेल्प करेगा, कब तक, बिकॉज ऑप्शंस है नहीं। दैट्स व्हाट वरीज मी, एज आई मेंशन, इट इज वरीइंग फैक्टर कि इतना सोच रहे हैं जब ऑप्शन एक ही है। Chat question for you. Does Prag find knight D4? Yes or no? Or are we in for a pain of, a journey of pain for the remaining game? Knight D4, yes or no? Come on, chat. Easy for Prag कह रहे हैं भाई। I know it's easy, but why is he not playing it then? That's my question ना, वही stress हो रहा है। I think he realizes knight D4 is worse, but there's nothing else. Yeah, he doesn't look happy at all. He doesn't look happy at all. That's the look of, oh man, what did I just do? How can I be in this position again? What about Queen Sack? कैसे करोगे क्वीन सैक भाई? हाउ? आई थिंक प्रग डरा हुआ है भाई, पूरा इंडिया का समाज डरा हुआ है भाई कि प्रग गलती ना कर दे। प्रग का क्या है, प्रग तो डरेगा, वो खुद खेल रहा है। इजी। व्हाट इफ रुक D2? भाई रुक D2 से क्या होगा भाई, हमारा नाइट मर रहा है मेरे भाई, घोड़े को बचाओ, घोड़ा बचाओ आंदोलन चालू करना पड़ेगा क्या मुझे? He's analyzing and yeah, that's the point, right? I think he's not happy with any of the options. Pawn to A4 भाई साहब, you know, बार ने जो छलांग मारी है ना, fully deserved भाई, fully deserved।
लगता है भूल गए हो, बहुत चालें हैं यहाँ पे जीतने के लिए, बट एक n% नामक चाल होती है। एंड आफ्टर यू टेक नाइट टेक्स a3, इट्स मेट इन 4। बूम चेक मारा, बूम चेक यहां, बूम चेक एंड बूम मेट, शकरा का बूम बूम। विराट ने क्वीन से कैसे, उसने अटैक करने के लिए किया था भाई, लेकिन उल्टा लग गया थोड़ा सा भाई। दैट्स द प्रॉब्लम। प्रग कंप्लीटली लॉस ब्रो, आई होप ही प्लेज 9d4। चल क्यों नहीं रहा है भाई, चल प्रग। बाय द वे चैट, इन द अर्जुन गेम वी हैव डेवलपमेंट क्वीन g2 के बाद क्वीन e6 खेला उसके ओपोनेंट ने, बेस्ट मूव। एंड नाउ अर्जुन आल्सो प्लेस द बेस्ट मूव, रुक टू h1। एंड रुक ए e8 खेलने वाले सिंदारोव, दैट्स आल्सो द बेस्ट मूव बिकॉज e3 पॉन हैंगिंग है एंड यहां पे उनको उसको बचाना पड़ेगा। सो नाउ मे बी रुक ए e1, बट रुक ए e1, ओ ही प्लेस रुक h3। बाय द वे इन अ सेकेंड खेला अर्जुन ने यार। भाई अर्जुन वो अटैक लगा रहा है जो मतलब हम सपने में सोचते हैं कि कुछ भी खेल के हरा दूंगा यार इस बंदे को। होता नहीं, कभी हम किसी दो बंदे दोस्त से खेलते हैं, आई प्लेड अ फेमस गेम अगेंस्ट अ स्कूल फ्रेंड इन अ टूर्नामेंट, स्टेट टूर्नामेंट। फर्स्ट राउंड में मैच लग गया ना, वाज लाइक अरे भाई सॉरी यार तुझे आज हराना पड़ेगा, आदित्य नाम था उसका, सॉरी भाई हराना पड़ेगा तुझे आज, सॉरी भाई अब तू हारने वाला है, इसके मजे ले रहा हूँ मैं, ठीक है। लास्ट में मैं ही हार गया भाई। सो ये वही मोमेंटम लग रहा है मुझे, लाइक कुछ भी खेल के मेट कर दूंगा भाई तुझे मैं। तो दिस इज एक्सट्रीमली रिस्की फ्रॉम अर्जुन यार, चाहे जो बोलो। ध्रुव भाई, गुड पॉइंट। 3 फ्रॉम वर्ल्ड कप, 2 फ्रॉम ग्रैंड स्विस, 1 फ्रॉम रेटिंग। बट सर्किट से दो लोग आते हैं, एक 2024 के सर्किट से, एक 2025 के सर्किट से। तो 24 वाले से फैबी हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड, एंड दैट्स व्हाई दैट्स द स्पॉट यू आर मिसिंग। वो अबाउट टू प्ले, अबाउट टू प्ले जैसे चलेगा फिर हम प्रग की गेम पे जाएंगे, जहां प्रग बाय द वे स्टिल नॉट प्लेड यार। सिंदारो भाई थोड़ी गलती शलती करने का यार, मतलब थोड़ा सा कोऑपरेटिव रहना पड़ेगा यार आप लोगों को। कम ऑन सिंदारो भाई, थोड़ी छोटी सी गलती, छोटी सी, मतलब किंग को उठा के बस बोर्ड के बाहर रख दो। मतलब कापा हुआ किंग है भाई, रुक के ऑपोजिट का है यार, डरना चाहिए, डरना जरूरी है। या बिशप c4 इज लॉस्ट बाय द वे, लुक्स लाइक अ समय वर्सेस बीट्स गेम। आई एग्री एक्चुअली, सीओबी गेम लग रही है यार लिटरली। एग्जैक्टली भाई, लिटरली। गुड पॉइंट देयर। बाय द वे नाइट चलने वाले हैं वो, नाइट e4 वुड नॉट बी गुड हियर, बिकॉज आई कैन जस्ट टेक एंड आपने अपनी ही मेरी ही वीकनेस ब्लॉक कर दी। दैट विल बी अ हॉरिबल मूव हियर आई थिंक। ये पॉन मर ही रहा है, बट इवन अगर नहीं मर रहा होता आई थिंक दिस इज अ हॉरिबल मूव। Knight f5 maybe is the plan, I think. Maybe that's the plan, to attack h4 and attack e3. That is a good move. Yup, knight h5, knight f5 played. And now how does white tackle? So does he take? I think taking feels a bit risky to me, because मारोगे क्वीन से मारा, आई विल हैव क्वीन c2 चेक। सो अगर अटैक ही करना था तो फिर बिशप 5 डजंट मेक सेंस। इफ यू वांट टू अटैक, यू हैव टू काइंड ऑफ बिल्ड अप इट। सो आई थिंक क्वीन f3 कुड बी अ मूव, प्रिपेयरिंग h5। रुक भी गेम में ला सकते हो ऑलरेडी, बट क्वीन को तो हिलना ही पड़ेगा, बिकॉज वेन एवर यू प्ले रुक के h1, आई थिंक ब्लैक रुक g8 खेलेगा टू पुट द रुक opposite the queen, ताकि h5 पे there is some sort of g5 and he opens this up. Apparently, there's a better move. Oh, bishop h4 is even better. Wow. So whatever, you get the point. Yeah, I think queen को f3 पे आना ही है. So maybe queen f3 is the better move here. At least Prag now understands the importance of playing limited. Man, I already thought he would perform terrible if he plays tournaments. I don't. I think tournaments की commitment जो होती है बहुत पहले होती है. Sometimes you have to commit to playing events like 6 months, 1 year prior to the actual event, and you don't know how things will be going back then. So you, as a player, let's say look at Prag, who wants to qualify for the World Championship. He has to qualify ideally via the FIDE circuit spot, जहाँ पे he is doing well. So he will commit to as many tournaments as possible. He doesn't have an option here. That's why I said Gukesh is, in a very comfortable situation, because he can choose to play the events he wants to. Other players might not have an option to take rest. Oh my God!
चैट, प्रग ने वही ब्लंडर किया जो मैंने किया था। ओ माय गॉड, प्रग इज लॉस्ट। ही फेल फॉर द सेम ट्रैप आई फेल फॉर। चैट, दो बार मैं लिटरली स्ट्रीम पे खुद बोला वाई नॉट बिशप C4, बट देर इज बिशप C2 एंड इट्स ओवर। भाई यार, आई टोल्ड यू चैट, द फैक्ट दैट प्रग वॉज थिंकिंग made me feel he has not seen that. And Prague is now losing. Prague came up to world number 5, 2779.9 rating thi, and now he could drop to 2767, I think. 12 point in 2 games. Ab, chat. Now the thing is, how likely is it Rapport finds this? So there is a chance Rapport might miss Bishop C2. I'll tell you why. Because even Rook C4, Queen C4, and Rook B5 is better for Rapport. So maybe because of this, he might not go deeper into other variations. That is the only hope Prague has. So कई बार ना आपको होता है ना, like imagine यार, you're trying to let's say you're trying to get married. आपको सामने से प्रपोजल आ गया, तो यू माइट जस्ट से ठीक है भाई, आई एम नॉट डेटिंग एनीवन, लेट मी गेट मैरिड, या लाइक इट मेक सेंस। सो ये वही है, ही ऑलरेडी हैज अ ग्रेट ऑप्शन अवेलेबल in rook c4, so he might not go deeper and try to find the best move. But Rapport has enough time, so I'm hoping he doesn't. But bishop c2 is a killer move. Rook attacked hai, you cannot take it because of queen b5. आपने एक पीस मारा, मैंने एक पीस मारा, एंड अब आपका दूसरा पीस मर रहा है। B3 नहीं खेल सकते बिकॉज पॉन इज पेंड। इफ यू टेक द क्वीन, आई टेक द क्वीन, एंड यहां रुक B2 आ रहा है, एंड दैट्स गेम ओवर। सो बिशप C2 इज विनिंग। सेकेंड बेस्ट मूव इज रुक E8। बट ये मूव तो 100 साल में नहीं खेलने वाला रैपोर्ट, बिकॉज अभी रुक C8 आया है, द बिशप इज हैंगिंग, रुक E8 मेक्स नो सेंस टू मी, एब्सोल्युटली जीरो सेंस। सो आई थिंक या तो वो बिशप C2 गेम जीत जाएगा, या फिर रुक C4 आएगा, दो ही ऑप्शन है। Come on, come on, come on. Ooh, this super, super tricky moment, chat. This is the moment we have all been waiting for. Will Rapport find the best move here? Think why you not think okay, he's 19 after this world. I think 10 years, Cuba. He could be the GOAT in 2 years. In 1 year, he could be. Like he's not there yet, but because he's the world champion so early, he can really, really focus on his chess improvement and become the GOAT in like maybe 1 year is too early, but 2 years could be possible. बिशप आ रहा है, आई कैन सेंस इट रोहित भाई। सो कुछ और चीजें भी सेंस कर दो भाई, दुनिया में पीस कब होगा? Why didn't Prague play the obvious move? Yeah, it was not obvious, yeah, because the thing is, logically, knight d4, you will suffer in this game. You know कि you are worse. पूरा अगले 4 घंटे, 4 घंटे तो नहीं, 2 घंटे आपको डिफेंड करना है। You don't want to do that. So you try to come up with a different move, जहां पे the defense is easier. But इसमें obvious है, Prague has missed bishop c2. That's just winning on the spot. He completely missed bishop c2. 100 की एक्यूरेसी को नजर लग गई भाई, 92.7 हो गई है यार। एंड लुक एट रैपोर्ट्स एक्यूरेसी 99.7। So as Rapport thinks, let's have a brief look at both the games. Arvind, first of all, still worse. We have a bunch of moves. Yeah, अरविंद स्टिल वर्स, उसका ओपोनेंट किंग साइड पे अटैक लगा के बैठा हुआ है। आई एम स्टिल वरीड फॉर अरविंद, जीतना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है गेम। एंड नाउ गोइंग टू द अर्जुन गेम, जहां बाय द वे नाइट डिफिकल्ट अर्जुन इज स्टिल थिंकिंग, सो नो मूव्स बाय अर्जुन, 20 minutes to play 16 moves. I think it's not super difficult as long as the position is in control. अगर पोजीशन खराब होगी ना, then Arjun could lose. Like you will not have a chance to come back basically. I don't think Prague's match is gone, Satya. I think the thing is, वो Bishop C2 move आसान नहीं है. Like I mentioned this earlier. That's one of the best maneuvers I have seen in my life. Definitely the best this year. So it's a rare maneuver. So Rapport could miss it. भाई अर्जुन तो मतलब
कुछ मिस नहीं कर रहा, कह रहा है भाई एक एक वन किंग प्लीज। उसका उसने अपना ऑर्डर डिसाइड कर लिया है। कई लोग कहते हैं कि भाई कई लोग वहां पे रेस्टोरेंट पे जाकर चूज नहीं कर पाते कि भाई मैं क्या ऑर्डर करूं, बिरयानी खाऊं, पनीर खाऊं। अंत में दाल मखनी और पनीर मखनी और शाही पनीर और मंचूरियन, बस यही तीनों चीजें खानी पड़ती हैं। बट अर्जुन का ऑर्डर क्लियर है भाई, मुझे चाहिए एक किंग, बस अभी के अभी चाहिए भाई। चैट फुल प्रेशर, मीनवाइल जंपिंग टू द प्रग गेम, रैपोर्ट की शक्ल देखने का मन है। रैपोर्ट कहां चले गए भाई? आह, भाई प्लेड, ही प्लेड इट। कैन वी कैन वी सी द एक्यूरेसी अगेन, एक सेकेंड। भाई 99.7 से बढ़ क्यों नहीं रही है भाई? उसको प्रधानमंत्री मेडल दे दो ना यार अब। 99.7। भाई ही फाउंड वन ऑफ द बेस्ट मूव्स आई हैव सीन ऑल ईयर। आई वुड से द मैन्यूवर इज ब्यूटिफुल, and as you can see, Prag is realizing it in real time. And unfortunately, chat, Pragnanda is completely lost now. I think Prag ने जैसी मूव खेली ना, इंस्टेंटली रियलाइज कर दिया होगा क्या मिस किया मैंने। इट्स ओवर नाउ, इट्स ओवर नाउ। आई डोंट नो द गेम ऑफ द ईयर तो शायद ना हो सकती है, एक्चुअली इट इज अ कंटेंडर। बट मनूवर ऑफ द ईयर 100% फॉर मी। व्हाट अ मूव एंड व्हाट अ गेम सो फार। वाओ, bishop to c2, and unfortunately for Prag, two losses in a row gearing up, and that's what happens chat। कल एक मौका मिला था प्रग को ड्रॉ करने का, एंड वो मिस कर दिया लास्ट वन टाइम प्रेशर में, एंड नाउ fate is having its cruel way again। So, and now thought, let's have a look at, is there a way to defend? The problem is rook is attacked। let's say I say कि भाई प्लीज रुक ही मार ले तू भाई, मैं अपना रुक बचाऊंगा भी नहीं। Now it's even worse because I can first take on d1, rook takes d1, and now take on c4। तो मुझे सब कुछ मिल गया भाई। क्वीन मारी, रुक मारी, and in this position, look at the pawns 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। So pawn up black, d5 hanging है, so I can't play knight d3, rook c5 आ रहा है, and there is no defense, I think। And very important, bishop f6, bishop takes, and h pawn runs। I think that's the major reason why this is completely lost। You can't defend d5 and h4 both। And आप d5 बचा लोगे तो h pawn क्वीन करेगा, rook h1 खेलोगे तो d5 मार के मैं घुस जाऊंगा अंदर, and this will be made soon। Unfortunately, chat, Prague is completely lost now। There is no defense. There is no defense for Prague there। So what we can do is admire this move from Rapport, and as Prague thinks, which he will think for a while now, let's jump to the Arjun game, जहां पे Arjun is better। Oh my God, Sindharov has made a mistake। Arjun का idea has worked। The madman is insane। कैसे कर लेता है ये बंदा भाई हर बार, मुझे नहीं पता भाई। आई कांट बिलीव आई हैव ड्रॉन अगेंस्ट अर्जुन। कैसे किया मैंने ड्रॉ यार? क्या खाया था उस दिन? अर्जुन इज क्लोज टू नॉट विनिंग बट डूइंग एक्सट्रीमली वेल नाउ। लेट्स हैव अ लुक हाउ इट हैपेंड। हमने नाइट एफ5 देखा, रुक एच वन देखा, किंग जी सेवन बेस्ट मूव, नाइट डी वन वीकनेस बचा ली, एंड नाउ एच फाइव इनकमिंग, एंड यहां पे नाइट एच फोर, हॉरिफिक मिस्टेक्स ऑन सिंदारोव। सिंपल यहां रुकेश खेलने का था उसको, सिंपल रुकेश h5 पे बिशप f6, एंड अगर मारा तो पॉन से मार दिया। कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिंदारोव पैनिक्ड, उन्होंने डर डर लग गया उनको यहां पे, और उन्होंने नाइट टेक्स h4 मार दिया।
और अब जो वहां रैपोर्ट को मिल रहा है वो यहां अर्जुन को मिल गया। उसको मिल गए दो पीसेस रुक और पॉन के बदले। एंड नाउ रुक H8 प्लेड अनदर मिस्टेक, F5, एंड अर्जुन इज डूइंग वेरी वेल नाउ। लेट्स हैव अ लुक। अगर आप डायरेक्ट यहां पे देखो, अब आपके पास दो पीस है, अगर ये नाइट यहां होता, सिंधारो वुड रिजाइन। The only way Sindharov is even playing right now is because ये knight passive है। अगर knight यहां होता, Sindharov would resign. So he is hoping कि मान लो rook h8 आया, rook h8 आया, now I can try to bring my queen in, and before you can develop, I'm gonna quickly try to create some counterplay here. But हम खेल सकते हैं f5 यहां पे। यू कांट टेक विद द, अरे अर्जुन भाई गलती कर देता। F5 कितनी स्ट्रॉन्ग चाल थी यार। Idea was chat queen f6 only move, and now you play rook to f4. Difficult to spot though, difficult to spot. And अब ये मरने वाला है, so g5 खेलना पड़ेगा। And now you had to play rook f3. Extremely difficult to see this though. Yeah, very difficult actually. But okay, Arjun is still better actually. Rook h8 मार दिया उन्होंने, slight error. Rook h8 and now king to e2. Hmm. चैट इट्स नॉट अ ब्लंडर, इट्स आई थिंक जो बेस्ट मूव थी वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी देखनी। एंड नाउ आई थिंक क्वीन एस खेल दिया सिंधार ऑफ ऑफरिंग अ क्वीन ट्रेड। एंड चैट यहां अर्जुन इज प्लेइंग फॉर टू रिजल्ट्स। सो बेसिकली या तो अर्जुन विंस या तो इट्स अ ड्रॉ। सो दैट्स द गुड न्यूज चैट, अर्जुन इज स्लाइटली बेटर, टाइनी बिट बेटर। एंड अर्जुन के मूव्स थोड़े आसान रहेंगे बिकॉज दो पीसेस से खेलना इट्स ऑलवेज इजियर देन प्लेइंग विद रुक, अनलेस ब्लैक हैज अ पास पॉन। ब्लैक के पास पास पॉन नहीं है, इसका मतलब अर्जुन की पोजीशन बढ़िया है। सो आई वुड नॉट वरी एट ऑल। अर्जुन स्टिल हैज डिसेंट चांसेस टू विन दिस गेम। अर्जुन कैनॉट लूज दिस नाउ, कैनॉट लूज दिस नाउ, दैट्स गुड न्यूज। So Arjun, very, very likely he could win today. And if he does win today and Nodubek loses, Arjun could get so lead in the event. He could also cross, Fabiano Caruana and become the new world number 3 and maintain his India number 1 spot as well. बहुत कुछ दाव पे यार. If Arjun wins today, he like creates a lot of records, to be honest. Tournament number 1, India number 1, world number 3. बढ़िया है भाई. लाइफ हो तो अर्जुन जैसी, लेट्स गो। बट जीतना पड़ेगा उसके लिए। ड्रॉ विल नॉट डू। ड्रॉ में कारुआना रिमेन्स अहेड। सो अर्जुन भाई कम ऑन, वी नीड योर मैजिक अगेन। Arjun will be happy with the draw, but I think this should be possible to convert. Now, the only question is whether he should trade queens. That's an important decision, right? Because queen trade करते हो अगर आप, तो उसके बाद आप checkmate नहीं कर सकते opponent को, आपको queen लानी पड़ेगी। अगर आप queen f2 पे, लेकिन this queen h2 anyways, so black can force a trade, so might as well trade queens, I think. Yeah, he takes the queen. Good decision, I think. No way to avoid. Rook h3 mara. And now I think knight f2 could be the move. Knight d3, knight d5. Slowly you can bring the knight. Yeah, knight f2 played. Great move. And Chad, why is white better here, even though bars is equal? Because black के moves मुश्किल है. I'm going to ask you a question, Chad. Rook attacked. Where do you go? Before we go to Prague's game, one last question. Where should the rook go? And that will tell you कि difficult है black के लिए यहाँ पे खेलना. What is the best square for the rook? दुनिया भर के स्क्वायर है भाई, दुनिया भर के। कौन से स्क्वायर पे रुक को जाना चाहिए? मैग्नस ब्लंडर्स भाई, मैग्नस यहां नहीं है भाई, आओ कैसे बता। द बेस्ट स्क्वायर इज रुक g3, विच इज नॉट क्लियर टू मी व्हाई। सो रुक h4 भी नॉर्मल लग रहा है, रुक h2, इनफैक्ट रुक h2 लुक्स नॉर्मल, राइट? यू पिन द नाइट, बट दैट्स नॉट द बेस्ट मूव इन द पोजीशन। सो यहां पे ब्लैक के मूव्स इतने आसान नहीं है। And as you can see, chat is also confused. Yeah, h2, g3, h8.
H4, सी कितने सारे ऑप्शन है, सी इट्स नॉट इजी, ब्लैक के मूव्स डिफिकल्ट है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि अर्जुन स्टिल हैज अ चांस टू विन, दैट्स व्हाई ही इज नॉट कैलकुलेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्विकली, नाउ ही हैज टू रियली थिंक डीप एंड कम अप विद द प्लान कि मैं कैसे ये ड्रॉ कर रहा हूं, एंड लकीली ही हैज नो पास्ट पॉन्स. बाय द वे, रूक G3 played the best move, so as of now Sundarov playing amazing chess, but कब तक, कब तक. So meanwhile, one look at the Prague game. क्या वहां कोई chance है? By the way, Prague has played Rook D2, but now Rapport plays the beautiful move Bishop A4, and goodbye बोलना पड़ेगा अपने घोड़े को यार. Now it feels like Knight D4 आ रहा है वैसे. At first glance, कि भाई Knight D4 आ रहा है. You know, my knight is safe now. If you take, I take with the queen. बढ़िया है भाई. There's no Rook C1 anymore. But the problem is Rook A to C5 chat. Attacking the bishop. आप बिशप नहीं हिल सकते बिकॉज इट्स मेट, खत्म, resigns. So if you can't move the bishop, and how do you defend it? You can't. There is no rook c2 because उससे मार दूंगा. So the only move is knight c6 कि भाई आपने उसका रुक ही ब्लॉक कर दिया. But now bishop takes, pawn takes, queen takes. अलग खाइन की बड़ी सी गन हमारे पीसेस पे मंडरा रही है, and there is no defense chat. I think we could be maybe 2 to 3 moves away from resignation, even for Prague. This could be resigns in 3 moves. What a game. What a game. Again, said Rapport is the modern Tal master of mistake art. That is not far away from the truth here. I think the game उसने आज खेली है, and this tournament was not going well for him. Look at his scorecard नीचे. 99.7 accuracy, 1 brilliancy, 7 good moves, and compare it to Prague's. Like there's a world of difference. Like complicated position mein, I think Rapport has proven to be the stronger player. What a game by Rapport, man. Just beautiful. I think Prague will not be happy with this. Going back, he will really need to understand where he went wrong, because this is a hard loss. Yeah. Yesterday, you can convince yourself, the moves were weird. Queen Knight ki end game thi. I also fought back. I really fought back in a lost position. There were a lot of positive signs. This game was just pure annihilation by Rapport. Like कोई मौका ही नहीं मिला यार प्रको. Like he played amazing chess for a long while. It was his preparation, Prague's preparation, but somehow Rapport came out on top. So this game will hurt a lot more, I feel. Lot more than the Leicester one. Prague will be he's already India number 3 right now, and he will remain India number 3 after his loss. Chad, meanwhile, one look at the game of Arjun again. Kuch hua kya? What? E4. Oh my God. Chat, I don't know कौन सी limitless pill अर्जुन ने खाई है. But when you look at this position, it doesn't feel like E4 is the best move. Engine doesn't recommend it. But once you play E4, Engine कहता है यही बेस्ट है भाई. Engine बाद में कहता है यही बेस्ट है. That is freaky to me. That is freaky. That is really freaky. I don't know how top players do this. And now D takes E4. एक pawn exchange हो गया. That's good for black. अब bishop से मारेंगे, I think. Most likely वो. Yeah, bishop takes has happened. But what now? But that does exchange one pair of pawns. So draw के chances भी बढ़ते हैं. So I hope Arjun has, got something interesting here. Have you cried over a loss in a chess game? Asks Smiley. Yeah, I remember it. Feb 2020, I think, just before COVID started. तो I think Rochefort कोई tournament एक जगह है फ्रांस में, वहां खेल रहा था मैं. And I had a horrific loss. भाई साहब क्या रोया था उसका, crazy भाई. Meanwhile, chat, Gandhivam thinks true, but okay, it's still close to a draw. I think बहुत मुश्किल है. You need to reach these pawns somehow. आपको एक पास पॉन चाहिए. वाइट से भी जीतने का तरीका है पास पॉन निकालना. So if, for example, b4, a4, b5 takes, I get the d pawn as a pass pawn, I'm very happy. But black का problem है कि black will also try to create his own pass pawn.
G5 के साथ. And if you start pushing these pawns, वो quickly switch कर देगा यहाँ पे. And then he will harass your pawns. And if you lose these pawns, you could be lost. So that's why it's not easy. Maybe the plan is knight d3, knight d5, or knight d3, knight c5 maybe is the plan. That looks more logical to me at least. सारे विशेष सर said Mukesh is a tactical player, Plug is a positional player. Do you agree? I mean, विशेष सर ने कहा है तो सही कहा होगा भाई. I think it's hard to disagree with विशेष sir, a five-time world champion. But I think both players are good at both. It's very hard to say कि Plug tactics में अच्छा नहीं है, but हाँ आज के दिन में अच्छा नहीं था. आज के दिन में तो clearly भाई, you know, Prague was not good at tactics. Meanwhile, chat, knight d3, knight c5 incoming, I think. Black has got his pass pawn, but the white king is very close. So it's not a dangerous deal. Meanwhile, chat, let's have a look at all the three games. Round up karte hain. Arvind, first of all, still slightly worse. Kuch change nahi ho raha hai. His opponent is doing the same thing Arjun did to Arvind. I really hope he doesn't make a mistake here. Maybe knight h2, trying to exchange some pieces could be a plan. Slightly worse. Arjun, meanwhile, is completely equal. At least a draw in hand, I would say, with some chances to win the game. And Prague, of course, is completely lost. And he only has 17 minutes to play 16 moves. I think we are like 3 moves away from Prague resigning, I feel. Rapport is the only reason why Ding formed well with Black in World Championship. I mean, not the only reason. Yeah, Ding को खेलना भी था. Rapport was one of the reasons for sure. Draw is fair for both. Yeah, draw would be fair for both in the Arjun game, but we are technically losing in the Prague game and we are worse in the Arvind game. So I don't want half point out of 3. I want at least 1.5. So that's why I want कि Arjun जीत जाए. कि at least Arvind का draw, Arjun जीतता है, Prague maybe is lost and we get 1.5. अगर current accuracy game 99 and consider we do a blunder such that this blunder lives in a draw, does the accuracy will drop exponentially? Yes, it will. It will drop exponentially because evaluation change kitna hota hai also should affect how much the accuracy drops. So it will affect it. But will it go down equal to what the opponent has? I don't know. Not necessarily. Like your accuracy can be lower and you can still win a game. It is possible. Parag, by the way, has no moves. He's trying to find one, but Rapport not even at the board right now. It's completely lost. Chat question for you. पोल में मैंने डाला है, but उसमें maximum लोग 3 2.5 कह रहे हैं. So how many points do you think Indians will score today now? Just for perspective, Prague is lost. Arvind is now close to equal, by the way. I think he has kind of simplified a bit, but okay, it's still slightly worse equal. And Arjun is slightly better. And जितना Arvind worse है, उतना Arjun better है. तो ऐसा कुछ है. So how many points do you think we're going to make today? Super important game, chat. I don't think Prague can equalize. I don't think so. He can equalize. I think we'll get 1 point today. That's my guess. For now, 1.5 would be awesome. Actually, that will be really amazing to get 1.5 from here. Also important is Noderbek winning, because if Noderbek loses, and Noderbek is losing right now, by the way, if White plays Queen B4, that would really help the Indian players. Otherwise, Noderbek just runs away with it. अगर Noderbek जीतता है, then that could be a problem for the Indian players to basically win the event. So hoping he also loses ताकि Indian players का chance बना रहे. 1.5 hopefully. That's what I'm hoping for, yeah. By the way, knight d5 played by Prague. The best move, but what can you do when the best move is also not enough? Rook c5 wins for Richard Rapport. The only move though on Rapport by camera अटक रहा है. नहीं, back, camera is back. After Prague should have slammed the board. I mean, he can do that, but after the game, I don't think during the game आप कर सकते हो. If you slam the board, pieces fall down, it looks weird.
याप इंस्टेंटली भाई, रैपोर्ट तो सोच भी नहीं रहा भाई। भाई उसको 100% एक्यूरेसी दे दो ना यार उसको। आई थिंक ही डिजर्व्स दैट 100% एक्यूरेसी भाई। ही डिजर्व्स इट फुली। भाई 8 गुड मूव्स नाउ। 8 गुड मूव्स, 1 बिलियन सी बंदा गुड मूव्स पे गुड मूव्स खेले जा रहा है भाई। नाइट सिक्स प्लेट एंड नाउ बिशप C6 इज द ओनली मूव। वो भी निकालेगा रैपोर्ट। प्रिटी श्योर ही फाइंड्स इट। ओनली मूव फॉर रैपोर्ट चैट, दैट्स द ओनली मूव। एंड ही इज प्लेइंग इट, वाओ। भाई क्या बंदा है यार, कुछ नहीं छोड़ा भाई। कुछ भी नहीं छोड़ा भाई। नाइट B3 नाउ, रुक C4 विंस। ओवर। Rook C4, Queen C4, and Bishop B5. And if you calculate the material chat, I have two bishops, you have one knight. You are essentially a piece down. And this is where I think Prag will resign. I think he will just resign. There's no point playing actually. So, oh, I mean, he has a rook extra. My bad. क्या बोल रहा हूँ भाई? He has a rook extra actually. So why is it so bad then? Wait, I also messed up. Wait, why is it so bad then? Queen B4, Rook C4. Queen A3 and Rook A4 traps the queen. Arey baap re. Rook A4 traps the queen. So maybe not Queen B4 then. Okay, let's say I come to Queen E4. What's the plan? Okay, Rook C4 anyways. And if Queen E3. You just try to get to B2 now. Oof, this is difficult. Okay, maybe no resigns from Prague yet. He will play on for a longer while, I think. Maybe it's not over yet. It's not over yet. 99.8, बाप रे बढ़ रहा है 100 की तरफ भाई। 99.8, what a game. 1 brilliancy, 7 good moves. He's just owning the game right now. And now Rook C4 is winning. Bishop A4, by the way, also winning. Knight C5, BC5. This also seems to be very, very strong for Rapport. So multiple ways to win. That's a good sign. Yeah, Vice Bishop to Batsman, too weird, right? The king on A1 is going to be attacked soon. He can force a draw from here. यार जिस हिसाब से रैपोर्ट खेल रहा है उस हिसाब से मुश्किल लग रहा है. Like Prag also came back yesterday, right? कल भी he was lost. I would say yesterday he was even more lost, but he came back. But Rapport जिस फॉर्म से खेल रहा है, it just looks like impossible. Meanwhile, one look at the Arjun game, I think we saw this, right? Knight D3 played, I think, as expected. Rook H5 and now King to E3. So getting out of any checks. So I want to play Knight C5, but Knight C5 there is Rook H2. So पहले मुझे शायद ये पॉन्स पुश करने पड़ेंगे. आई थिंक ही पुश लाइक A4, B4, A5 एंड देन नाइट C5. आई थिंक अगर ये पॉन यहां आ जाए और ये पॉन यहां आ जाए एंड देन ही प्लेज नाइट C5, आई थिंक अर्जुन कुड बी विनिंग. आई थिंक ही कुड बी विनिंग दैट गेम. सो ब्लैक को काउंटर प्ले क्रिएट करना पड़ेगा F5 के साथ. आई थिंक ही हैज टू क्रिएट काउंटर प्ले क्विकली और ही हैज टू कॉन्स्टेंटली हरास दीज पॉन्स ताकि ये पॉन आगे बढ़े ही ना. ही कैन नॉट सिट टाइटल. अगर ब्लैक आराम से बैठेगा ना, किंग F8 रैंडम मूव, it's already knight C5 is better. Wow. And if rook H2, oh, this is so much better. Wow. I thought this should be okay because do pawn mare. But this is already what? This is so strong. And bishop knight checkmate देखने को मिलेगी यहाँ पे शायद. बाप रे. So the position is more dangerous than I thought actually for Sindarov. So Sindarov under pressure and that's what he's calculating. Time भी बराबर है चाहे 36 moves हो चुके हैं. Only 4 more moves to go for time control. So Arjun under no pressure whatsoever. One look at the Arvind game. King G1, Knight H5. I think both players are moving around. यार ये Knight क्यों नहीं मार देते हम लोग यार, तब से ये तंग कर रहा है actually. Okay, Arvind still thinking, still moving his king, which is not a good move apparently. King H1. Yeah, yeah. Still, both players playing it out. Likely a draw, but Vokidov is the one who's pushing, if anybody's pushing. So going back to the Prague game, can Prague somehow confuse Rapport here? I think Rapport possibly could have missed knight B3, but it's still winning for him. So that's the good news.
प्रग मास्टर में भी यही हुआ था. Actually, Maksudlu, Rapport, and Duda have had a great record against Indian players. So, it's not a surprise. Meanwhile, Nodibek game में कुछ crazy हुआ है apparently chat कह रही है. नहीं, as the same, we saw this. Queen B4 and Nodibek is losing apparently, but the game is still not over chat. So I think जब तक resigns नहीं करता है Nodibek, we cannot say कि okay, that's good because yeah, if he loses हमारे chances बने रहेंगे tournament जीतने के. By the first result chat, Param Maksudlu and Ian Nepomniachtchi have drawn their games. So that's the first result today. Um, yeah, a decent draw for both players. Logical tha. And now jumping to the Prague game, जहां 18 मिनट है Rapport के पास. He is also slowly going down on the clock. अरविंद आज चेयर से उठा भी नहीं है. ही नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम चैट. आज जीतना तो अब दूर की बात, ड्रॉ करने के लिए मुश्किल हो रहा है. सो ऑफ कोर्स ही स्ट्रेस्ड आउट एंड ही इज नॉट गेटिंग अप फॉर अ रीजन. द गेम इज सुपर कॉम्प्लिकेटेड. जब प्रेशर में होता है ना यार, उठा नहीं जाता यार. चैट, लेट्स डू अ चैलेंज. आई एम गोना टेल यू 1 2 3 नाउ. देखते हैं चैट में कितनी यूनिटी है, कितने लोग साथ में उंगली दबा सकते हैं. लेट्स डू अ चैलेंज. 1 2 3 नाउ पे सबके सब लाइक बटन दबाना. ठीक है. 1 2 3. एंड नाउ बेस्ट मूव प्लेड बाय रैपोर्ट. बाय लोग जल्दी से लाइक बटन दबाओ. एंड रैपोर्ट अगेन इन द ड्राइवर सीट. क्वीन C4 एंड बिशप B5 विल हैपन. यार मोमोज खाने का बड़ा मन कर रहा है सडनली यार. तुम इतनी बार चैट में लिख दिया ना, पता नहीं क्यों लिख रहे हो तुम, बट मुझे मोमोज खाने का बड़ा मन कर रहा है यार बहुत टाइम से. आई थिंक लास्ट आई हैड इट वाज ड्यूरिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप. मुझे याद है राकेश भाई के साथ मैंने खाए थे. और राकेश भाई का नाम याद, राकेश भाई कहाँ है भाई, आ जाओ भाई. बट मोमोज वर ऑसम भाई वहां पे. लास्ट टाइम मैंने वहीं खाए थे, बहुत टाइम हो गया. ओके, प्लेड क्वीन C4 एंड बिशप B5 ओनली मूव प्लेड बाय रैपोर्ट. भाई रैपोर्ट का गुड मूव काउंटर 9 पे पहुंच चुका है यार. डबल डिजिट पहुंचने वाला है. 99.8 एक्यूरेसी भाई. रैपोर्ट नॉट कुकिंग बट बेकिंग भाई साहब. क्वीन E4 बेस्ट मूव बाय प्रग. सो ही स्टिल फाइटिंग. आई थिंक चैट द प्रॉब्लम इज एक बार क्वीन गेम में आएगी ना, दैट्स द प्रॉब्लम. लेट्स लुक एट दिस. आई विल शो यू समथिंग. ठीक है. लेट्स से मैं क्वीन D8 खेलता हूं. And let's say you don't take this pawn, random, just want to show something. And queen F6 now, for example. Okay, rook hanging here. Let me play rook G1 instead. Queen F6. I think this is a huge blow. ये कांस्टेंट थ्रेट, यहां से थ्रेट, यहां से थ्रेट, सब कुछ काटा पीटी हो रही है भाई. It's not working right now because the pawn is hanging, but you get my point. Like it is going to be very difficult. आपके pieces सारे passive हैं. You cannot really attack. Attack तो कोई है नहीं. So it's rook C4 भी आ रहा है of course next move to stop save this pawn. So what's your plan? You don't have a plan. That's the issue. Wait. Bishop C4 played. Okay. He now wants to take and open up your king completely. And that's a very, very practical move by Rapport. Also saves the pawn on B4. लग गई भाई. रिचर्ड नीमैन, ये क्या है भाई. साहज अगर गुड लक का चाम भाई, यहां पे कोई साहज भाई नहीं बचा सकते भाई. How Prague he is pieces up है. I know it is for example queen against queen, rook against rook, knight against bishop. तो लग रहा है कि भाई rook against bishop Prague should be winning this. But पहले white के 1 2 3 4 5 pawn है, उसके 6 हैं. So black has a bishop and a pawn for a rook. Technically Prague is material up, but his king is weak. For example, let's say I play rook E1. I can simply even take here, or I can play queen A4. You are already losing the game. In fact, इंजन की थर्ड बेस्ट प्रेफरेंस क्वीन C4 है यहाँ पे to give up the queen. That's how bad it is. So if your king gets checkmated, ये extra रुक का क्या मैं अचार डालूंगा भाई? It's not gonna work.
ब्लंडर कर दिया रैपोर्ट ने, 99.8 से 99.2 हो गया। ओ नो यार, क्या करेगा रैपोर्ट भी, अब डीयू में एडमिशन नहीं ले सकता यार। शिट, सो सैड फॉर रैपोर्ट यार, इतनी कम एक्यूरेसी भाई। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, Prag bhai, is there a trap? Is there something you can do to complicate matters? Looks difficult. 30 minutes, by the way. Let's have a look at the Arjun game meanwhile. By the way, f5 khela black ne, so he did play the best move. Bishop drops back, attacks the rook. Tempo liya, rook h2, and now a4. And surprise, surprise, he's going for my plan with a4, f5, b4. But black ne rok diya. Arey yaar. Black ne plan hi rok diya yaar hamara. B3 played, okay. Knight c5 coming. Oh, chat, look at this. King f6, only move for black. Is it that bad? Wow. King f6, only move for black. भाई खेल दिया यार, यार मूड खराब कर दिया यार, खेल दिया बंदे ने। ओके, आई वाज अ बिट सरप्राइज बाय दैट यार, इतना स्ट्रांग था भाई साहब। गेम गेटिंग स्पाइसी। आई थिंक अब थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज आई वांट टू प्ले नाइट c5। Knight c5 you can play, and rook h7 खेलना पड़ेगा। Oh, that's the idea of king f6, to get the rook here and defend the pawn. यार बाल बाल बच रहा है यार, ब्लैक बाल बाल बच रहा है लिटरली। That will come in last 3 rounds. He has to come back, because I think if he wins this event somehow, with Nodibek losing, his chances are back. If he wins this event somehow, then he maintains his chances to qualify for the candidates. Come on, true Nandish bhai, true. Chat, come on, let's go to 500 likes. Meanwhile, one look at the Arvind game. कोई अपडेट नहीं है। आई थिंक वोकिडोव जो अर्जुन से कल सीखे वो यही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट adaptive learning there. Going to Arjun, no moves yet, and going to Prag now. Let's see what happens there. Prag, by the way, 11 minutes to play, 11 moves. So a minute a move for Prag now. And this is turning more and more difficult. He can qualify candidates, यार। The thing is, उसका एक फ्री डे सर्किट का स्पॉट है जहां पे ही इज लीडिंग। जितने इवेंट वो जीतता है उतना उसके चांसेस बढ़ते रहते हैं। So that's why I think winning this event would almost seal that spot. Almost. He will not come back after last 3 rounds. आज तो मुश्किल है। He'll come back after last round. There are flights from... अबे ये क्या है बे? शर्म करो थोड़ी सी। Okay, Prag about to play. What will he play now? Rook c2. Okay. Now he should take. I think that's a big mistake, because rook takes, queen takes, ab3. मैंने आपका rook exchange कर दिया, and because the rooks are traded off, you don't have a mating idea. Like queen c2 allowed in a. I think Prag can draw this. So great practical move, and now b5 has to be played. यो यो। ओहो राकेश भाई, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल क्या हाल। भाई यार, प्रग को क्या हो गया भाई? सदमा लग रहा है यार। भाई सडनली मतलब कल भी वो बिशप F1 था ड्रॉ, और आज भी भाई मुश्किल। थोड़ा तो डर लग रहा है भाई। भाई बहुत डर लग रहा है भाई, बिकॉज आई थिंक रैपोर्ट ने आज गेम जो खेली है उनकी एक्यूरेसी 99.8 थी लिटरली एक साल पहले। एंड ही इज प्लेड लाइक वन ब्रिलियंसी, 9 गुड मूव्स। लाइक कोई गलती करने को तैयार ही नहीं है बंदा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड जहां पे लिटरली पीस ब्लंडर हो रहे हैं, बंदा कुछ भी गलती नहीं कर रहा है। लाइक इट्स जस्ट स्टाइल या। Yeah, very true. And Rapport, very strong player himself, and also, more famous for being Ding Liren ka second during the World Championships. So
काफी strong player है and definitely not an easy player, and he plays the only move in the position to retain the advantage. रैपोर्ट भाई थोड़ा सा दिखाने के लिए कि आप इंसान हो, एक गलती तो कर दो भाई, कम से कम हमें थोड़ा अपने बारे में बुरा ना लगे। राकेश भाई क्यों बुरा लग रहा है भाई? मुझे चेस खेलना ही नहीं आता भाई, ऐसी फीलिंग आ रही है। बिल्कुल, और जस्ट स्टार्ट टू एंड बहुत ही सही तरीके से क्रश किया, Prag down on time, and suddenly Rapport making a very nice comeback in the tournament. और देखो भाई, प्रग जिसका टूर्नामेंट बहुत सही जा रहा था पिछले 2 गेम के बाद, सडनली इट्स ऑल डाउन द ड्रेन इन अ वे. Yeah, absolutely. And he's losing a bunch of rating, 12 rating point, दो गेम में हारना, and you go from first in the standings to literally in the lower half. That will hurt a lot. And Rakesh, I want to get your opinion on all three games. अर्जुन की गेम पर क्या सोच रहे हो आप? Because technically he has the two pieces. He should have some chances here. Like I think because usually black cannot imagine winning this, but कितने प्रतिशत chances आप दोगे कि अर्जुन converts this? Or do you think it's just a draw? No, I think there are a few chances for sure. Something like 20% कि Hmm. अर्जुन जीतेगा, एंड बाकी 80% आई वुड बेट ऑन अ ड्रॉ. इट जस्ट लुक्स दैट मच मोर इक्वल. एक हल्का सा अच्छा चांस है व्हाइट के पास, अर्जुन के पास, कि जो कोने का पॉन है A4, दैट विल क्वीन ऑन अ लाइट, Hmm. एंड जो एक उसके बिशप के साथ कॉमन है. और ऐसा भी हो सकता है, ठीक होता है, इनफेमस, द वेरी Yeah. डिफिकल्ट टू डू बिशप एंड नाइट चेकमेट अगेंस्ट द किंग. ये भी Yeah. एक चीज है जो अर्जुन चैट को दिखा सकता है आज. या चैट, आप में से कितने लोगों को बिशप और नाइट से मेट करना आता है भाई? सही सही बताना भाई, सही से बताना, ठीक है? राकेश भाई, इफ यू हैड 30 seconds with a 2 second increment, can you mate with bishop and knight? या 2 सेकेंड इंक्रीमेंट, या है ना? एंड30 सेकेंड्स इफ नो, ओनली पे नहीं होगा, हाँ नहीं गारंटेड. होगा ना? नो इंक्रीमेंट तो 1.5 मिनट तो चाहिए, 30 सेकेंड्स में नहीं होगा. आपका आपका क्या हाल है, मतलब चैट को पूछ रहा हूँ. देखो भाई, आपको वही कितना सेम, अच्छे आई से आता थिंक है बिशप एंड 30 नाइट चेक? मिनट्स और 2 seconds होगा तो कर लूंगा, 30 सेकंड में करना इम्पॉसिबल है। किंग दौड़ता है यार उतने नर्व्स में ना। यू ब्लैक तो पता है, ब्लैक को बस ऑपोजिट हाँ, कोने में जाना है। इट्स वेरी इजी, बट वाइट को थोड़ा घुमाना फिरता है। इट्स नॉट इजी टू गेट दैट डब्ल्यू मनूवर यार, उसमें टाइम लगता है बेसिकली। ट्रू ट्रू. पर चैट में बहुत सारे लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट चीज बोल रहे हैं कि 2780 का कर्स है क्या इंडियन प्लेयर्स में. जब भी कोई इंडियन वहां पे पहुंचता है, दे स्टार्ट लूजिंग रेटिंग. But maybe not. Yeah, I think Gukesh 2785 कुछ पता था, and also Arjun तो already 2809 पहुंच चुका है peak live rating, so I don't think it's a curse. I think it's just कि भाई he lost yesterday. Yeah? He got outplayed yesterday. Prag also getting outplayed today. And कल तो at least the moves were a bit weird. आज तो I think Rapport has just kind of cruised through. And Knight C1 now played. And now, for example, राकेश भाई 16 मिनट Rapport टाइम पे भी आगे है, पोजीशन में आगे है, मटेरियल में कई या लोग कंफ्यूज है भाई। Plug is an exchange up. Why is he lost? भाई किंग की लगी हुई है, लुक एट द टू बिशप्स। इट लुक्स सुपर डिफिकल्ट. यू नो वो देखो ना, वो दोनों बिशप्स ऑन दैट डायगोनल आर लुकिंग सो स्ट्रांग, एंड जस्ट अ सिंपल पॉन ब्रेक, या अगर एक फाइल खुल गया, समथिंग लाइक रुक A8, rook A2 is also threatened. So Prague has to be afraid of and be worried about all this. And sadly, कुछ काउंटर प्ले नहीं है व्हाइट के पास. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फील इन व्हाइट्स पोजीशन. व्हाइट कैन नॉट या अटैक एनीथिंग, एंड इवन मटेरियली देयर इज जस्ट टू मच प्ले एंड टू मच कॉम्पेंसेशन फॉर Rapport. या वेरी डिफिकल्ट। एंड फाइनली योर ओपिनियन ऑन द अरविंद गेम, बिकॉज अरविंद जो अर्जुन, अगर आपने कल की अर्जुन गेम देखी, घुमा फिरा रहा था पूरा 1 घंटा, वही घुमा फिर रहा यहाँ पे ब्लैक कर रहे हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट अरविंद? Like Arvind basically had such a dream run, and ये event तो पूरा nightmare बनता जा रहा है उनके लिए. Like he lost 2 games, he's worse against the lowest seed of the event with the white pieces, जहाँ पे he would have loved to win, right? This was his game जहाँ confidence वापस मिलता, and यहाँ पे भी he's stuck defending. So what do you make of this game, and what do you make of Arvind's play in this tournament?
I think Arvind got a good मतलब decent start, but पिछले like 2-3 गेम में थोड़ा सा फंस रहे. एंड लाइक यू मेंशन, देखो ये गेम ना उन्होंने जब भी पेयरिंग्स आई होंगी डे वन के पहले, उसने सोचा रहेगा हाँ पक्का ये लोएस्ट रेटेड को तो वाइट से मुझे तो हराना ही पड़ेगा. हाँ. But now looking at this position, and मैं क्या ही बोला, I feel this. I'm hoping this ends in a draw, but I'm not fully sure. But Arvind के last 5 move were King G1, King H1, King G1, King H1. That just shows Tiku he's not in the best of positions, and I mean he's playing for a draw. Let's be honest in this one. या आई थिंक अगर यहाँ ड्रॉ पूछेगा ब्लैक तो अरविंद विल टेक इट एंड ब्लैक विल ट्राई फॉर अ while, बट एट सम पॉइंट होपफुली अ ड्रॉ शुड बी ओके. विद प्रग लूजिंग एटलीस्ट 1.5 पॉइंट तो मिले. अगर अरविंद ड्रॉ करता है, अर्जुन जीतता है, तो एटलीस्ट 50% स्कोर इंडियंस का आज रहेगा. एंड ऑफ कोर्स वी आर इन द सेकंड हाफ ऑफ द इवेंट नाउ चैट. राउंड नंबर 6 से आज ओनली 3 मोर राउंड्स टू गो. एंड राकेश भाई, कल से बुलेट चेस चैंपियनशिप भी चालू हो रही है एज वी जंप टू द प्रग गेम. सो वी हैव, ओके लेट मी गो टू अर्जुन गेम फॉर अ सेकंड, because Arjun has to play this in the morning and then he has to play bullet chess championship at night. So भाई ये क्या है भाई, ये ब्रूस वेन बैटमैन का रिश्ता अर्जुन का कल से जो चालू होने वाला है, दोनों काम कर पाएंगे ढंग से या इट विल इफेक्ट ईदर? नहीं नहीं, आई थिंक वो तो प्रोफेशनल है तो वो कर लेगा मैच. प्लस ऑल्सो शाउट आउट टू अर्जुन, जो ऑफकोर्स इनवाइटेड प्लेयर था, बट मित्रपा गुहा एंड निहाल सरीन हैव क्वालिफाइड. सो वी हैव नॉट जस्ट वन बट 3 इंडियंस इन निहाल द also बुलेट चेस qualified भाई. चैंपियनशिप. निहाल also was invited I think. He did not. हाँ. ओके ओके, सो हाँ, तो हाँ. मित्रपा क्वालिफाइड, सो टोटल हाँ. 3 इंडियंस. हाँ. तो बहुत ही मजा आने वाला है. सो दैट्स अनदर इवेंट आई थिंक स्टार्टिंग टुमारो. बट Tomorrow. अपना कल कल 2 स्ट्रीम होंगे ना, मतलब देखो भाई. हाँ, 2 स्ट्रीम होंगे और मेरे गले को मैं इंश्योरेंस आज ही करवा रहा हूँ शाम को, बिफोर इट फॉल्स अपार्ट कंप्लीटली. सो मजा आएगा चैट. करेक्ट. और सहज भाई भी कन्वीनियंटली ऐसे टाइम पे टर्की भाग गए. भाई बिल्ली के साथ खेल रहे हैं वहां पे भाई, स्टोरी डालते हैं बिल्ली है हॉल में. भाई हाँ. चेस खेलो भाई. नीति भाई, कैन वी जूम इन नाउ फुल स्क्रीन इनटू द कैमरा? लेट्स लुक एट सिंदारो एक्सप्रेशंस. फिलहाल के लिए थोड़ा स्ट्रेस में तो लग रहे हैं. आई थिंक ही रियलाइजेस कि द गेम इज नॉट ओवर एंड अर्जुन स्टिल वांट्स टू प्ले ऑन. एंड इन फैक्ट एक मोमेंट था राकेश भाई जहां पे अर्जुन हैड ब्लंडर्ड एंड सिंदारो हैड अ चांस टू गेट अ विनिंग पोजीशन, बट ही डिडंट हैव द हाँ हाँ हाँ. करेज. एंड बहुत सारे प्लेयर्स आई थिंक वुड हैव नोटिस्ड इज दे, अर्जुन इतना बोल्डली खेलता है ना, इतना अग्रेसिव चेस खेलता है कि दे आर अनेबल टू चैलेंज हिम समटाइम्स, एंड दैट जस्ट वर्क्स फॉर हिम सो वेल. ओलंपियाड भी एक बहुत एग्जांपल है उसका. या यू डोंट एक्सपेक्ट, मतलब एक इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर ब्लंडर या गलती करेगा, By the way, also important chat. Abdul Sattarov Nodirbek seems to be close to losing. Either a draw or a दैट्स win. बिग. Yeah, so if he loses, in that case, Indian players के लिए अच्छा because they get a chance to finish first still. जीतते तो नहीं वाला मतलब, either it's a draw or he loses. So बहुत important update. Pawn up है यहाँ पे याकूबो सही टाइम पे स्ट्राइक करते हुए, and now heading off to the Prague game जहाँ पे just Rapport ने फिर से best move खेली है, rook to e8. And chat, believe it or not, the best move in the position is already to sacrifice your rook and your queen. So rook c4, and uske नो baad वे. black will not take the queen. He can just take the rook. That is how strong his position is. तो चैट में ना किसी ने लिखा है प्रग प्लेइंग अगेंस्ट स्टॉकफिश, एंड आई फुल्ली एग्री विद दैट. मतलब ऐसे ही लग रहा है भाई, रैपो इज जस्ट अ बीस्ट टुडे. या चैट होता है ना, अपना स्टाइल होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपका एक फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन है. लेट्स से शिमला आते हो आप टॉय ट्रेन में बैठ के हर बार, आपका फेवरेट है वो. तो शिमला आपको गली गली आपको पता है उसकी, भाई कौन सी कहाँ पे कहाँ सी दुकान है, कहाँ पे मुझे चढ़ाई ज्यादा है धीरे चलना पड़ेगा, कहाँ पे ट्रेन रुकती है, आपको सब कुछ पता है. सेम चीज रैपोर्ट को ऐसे शार्प पोजिशन में, क्रिएटिव आइडियाज में रैपोर्ट अपने घर में फील करते हैं भाई. एंड नाउ चैट इट्स क्लोज टू लॉट्स ऑफ. प्रग ने रुक c4 नहीं मारा, he just put the queen away, of course a decent move. But now Rakesh bhai, queen a7 seems to be the end of the road. For example, आपने कुछ random चाल के लिए, I don't know, rook d1, then I think bishop takes a2 का threat है, because knight a2 there is b3 and you have to resign. व्हाट अ टफ गेम. एंड
कल अर्जुन का भी पोजीशन ना जो आज के जैसे ये वैसे ही था, तो अर्जुन कैन मे बी कन्वर्ट दैट वन, बट प्रग गोइंग डाउन 2 games in a row, टिकू, दैट वुड रियली hurt his rating and that important candidate's qualification spot. Yeah, and his confidence, right? I mean, you are a guy who's Yeah. played so well this year. I think 2024 Prag का अच्छा नहीं गया. 23 इतना epic गया था. If Prag continued on the path he was in 2023, he would be the GOAT by now, Rakesh bhai. Like, he would be at 28, 30 right now. But 2024 perfect nahi gaya. Gukesh and Arjun, kind of outperformed him. And 2025 started off perfectly, like a dream for Prag. Played well at Tata Steel. Played well at GCT. I think jahan pe even Gukesh struggled. And every event has gone well. But yahi ek event, pehla event. And he started off so well. He was leading with no Dirbek. And suddenly 2 games. Just 48 hours, Rakesh bhai, can completely put your entire year in question, yeah? Just 24 hours actually is insane. Very true, very true. And सारे रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, रैंकिंग्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो just very very tough right there. Chat, as we look at this game, do like the stream. Let's get to 500 likes. And Rapport about to play. Chat, question for you. How many moves more do you think this game will last? Rakesh bhai, what's your guess? I think seven moves is my prediction. Oh, wow. उसके बाद तो 7. बहुत मुश्किल है. I Yeah, it's think like 5 maybe. minus 5 is. 4, 5. अच्छा, इतना कम बोल रहे हो आप? चैट क्या हाँ, I लगता है? think. चैट, how many more हाँ. moves will it take? 6 कह रहा है चिंता कोई. मत करो, Rappo will blunder. कुशल भाई बड़ी ऑप्टिमिस्ट है, but I hope he is true कि ताकि हाँ. वो हो जाए. सारे आप किसी हॉरर मूवी के वॉइस ओवर देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो. तो अंशुल के घर में रात के 1 बजे कर सकते हैं. अंशुल आई थिंक मेरे को पूछ रहे थे कि वेयर एम आई फ्रॉम, तो मुंबई भाई, आई एम फ्रॉम मुंबई. ठीक हो भाई, आप दिल्ली हो या अभी मुंबई हो? फिलहाल कहाँ पे बिल्कुल भाई, अगर थाने वाले मुंबई हो गए तो फरीदाबाद वाले दिल्ली हो गए भाई. हो? ट्रू दैट, ट्रू दैट. भाई यही यार करना कहाँ से पड़ता है यार, भाई. मतलब मेरे को लगता है सब काफी लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं. हाँ यस, टिको, कैन 6. यू प्रेडिक्ट वेयर इज आवर ऑडियंस मोस्टली फ्रॉम? आई थिंक चैट तो 6 ही लिख रही है. 6, 8, 3. एक बंदा 3 लिखा भाई, लिटरली 2 से 4 इसका ये लोग लिख रहे हैं. सो बहुत लोग ऐसे लिखते हुए, बट आई 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 थिंक काफी इंटरेस्टिंग है. रिगार्डलेस, आई थिंक जितने भी मूव्स लगे, unless Rapport makes a big blunder, like a ridiculous blunder, there is no coming back. And he's about to play something. I think he's about to move the bishop, or no, the queen. The queen, yeah. Oh, he plays the best move, Rakesh भाई. यार इसको 100% एक्यूरेसी दे दो ना भाई. डिजर्विंग है भाई इस गेम के लिए. वो चेंज कर दो पीछे से और 100% एक्यूरेसी दे दो भाई. क्या गेम खेली बंदे ने यार. इट्स बिन इनसेन. Like a very top level game, and I don't know a lot of accuracy with 100, मतलब पूरा exact accuracy game, but नीरी भाई ने खेला हुआ है. Do you know this, Tiku? हाँ, आई नो, आई नीरी नो. भाई has played a एक tag Tuesday game with 100 accuracy. How या cool is एक that? आर्टिकल था जहां पे उसमें 5 गेम है. हिकारू की गेम है और हाँ नीरी भाई की गेम है. हाँ दैट्स क्रेजी भाई. हाँ. And Chad, on that note, what is the highest accuracy you have ever received? मतलब चैट तो gotten? बताएगी. चैट करिए. And फोकिटो मेरा I think ब्लंडर. 96 या 7 है. अच्छा, चैट करिए What? वोकिटो अच्छा, ब्लंडर, बट आई सी नहीं. एन इक्वल पोजीशन राइट नाउ. चैट, आई डोंट सी वेयर इज अरविंद बेटर. एज ऑफ नाउ तो नहीं है. मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू सर्विस ज्यादा मूव्स, if हो सकता है, everybody हो सकता followed the rules, है. then you कुछ would लोग not ना have these फ्यूचर problems. प्रेडिक्ट करते हैं ना. हाँ, कई लोग फ्यूचर पब्लिश भी कर देते हैं भाई यूट्यूब पे, तो या क्या करे भाई. फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना. हाँ, प्रेडिक्ट. हाँ. तो आई मीन, आई वुड प्रेडिक्ट, somehow I feel Arvind is going to win this, Tiku. आपको क्या लगता है? Nice. Nice. भाई, I hope Arvind wins this, because पता है, he needs that luck right now. He needs that luck right now, because when everything is not going our way, वो एक lucky break चाहिए होता है यार. ये उस एक्टर की तरह है, when you are an actor, you need a first break in a movie, right? ये वही situation है. This tournament has not gone his way. He needs that lucky break. And फिलहाल के लिए तो I think Black is playing good moves. Let's see what happens. As we wait for the blunder chat जो तुम कह रहे हो यहाँ पे होगा. Meanwhile, प्रा की गेम में फाइनली बिशप A2 देखते हुए
प्रग को वो रुक देना ही पड़ा बिशप के बदले. Pawn takes c4. He will take that pawn, but the problems won't end. After queen c4, chat question for you. What do you think is the best move for Richard Rapport? Come on, chat. Black to play. Oh, okay. I think something like, मतलब मैं सोच रहा हूँ या तो B3 खेलो या क्वीन F2 खेलो, ऐसा कुछ. Because I really want to open up lines against that B2 pawn. I think queen And f2 is a meanwhile भाई, great move. या क्वीन हाँ, F2 is राकेश. really strong. मैंने भाई बहुत लोगों को चैट में 98 100% भी एक को मिला है. तो रियली इम्प्रेसिव. मतलब मुझे नहीं लगा था कि अपनी चैट का एक्यूरेसी इतना ज्यादा होगा. भाई चैट स्ट्रांग है रे. चैट अपनी ये तो ही बताओ भाई, कितनी रेटिंग है तुम्हारी हाईएस्ट. बस चैट यहाँ पे तो आइडिया क्वीन से मार दिया है प्रग ने. So the best move is queen f2 is one of them, but also queen to a3 using this pin and threatening queen ओह, b2 checkmate. And ब्यूटीफुल. अगर आप queen b3 खेलते हो, I play rook e3. Look at these moves, Rakesh. That's insane. And the idea is after you take the queen, I don't take with the rook now, I take with the pawn and it resigns. Wow. And knowing Richie's form today, I think Richie will play this. Yeah. Richie rich for a reason, bro. And फिलहाल के लिए कोई इंतजार करते हुए 3200 एक बंदे की रेटिंग है भाई. 3000 रेटिंग वाले भी चैट में घूम रहे हैं. ओ ही प्लेज योर मूव Wow. राकेश b3. Oh, it look super strong. क्योंकि प्रॉब्लम है टीकू पॉन से मार नहीं सकते. क्वीन से मारा तो रुक B8 आ जाएगा. And हाँ, that दैट्स ओवर. rook also gets in. A3 खेलोगे then queen takes A3 है भाई. That's another ओह beautiful checkmate. वाओ. The pawn is pinned. And And chat, knight से yeah, मारोगे, the problem is the queen cannot defend the b2 pawn now because पहले queen b3 आता. Queen f2, you could play queen b3, defend the mate. So that's why correct, correct. b3, ताकि जब knight से मार दो, now queen f2, there is no queen defending the pawn. And अगर rook b2 आया, तो maybe rook e2 or rook e1, and it is game over. Yeah, over. Wow. This is this is just amazing game. I think this is one of Richard Rappo's best games, I think, ever Yeah, in his career. yeah. I think it's a contender for the game of the year, actually. Beautiful game, black pieces, Kings Indian, full on attack. Accuracy, I think it cannot be higher than this. Richard Rapport has really, and वो form में भी नहीं थे इस tournament, so what a game by Rapport, yeah? Yeah, Black से ऐसा game जीतना against one of the tournament leaders. It's a great boost, and I'm just keeping an eye out. Wokido का भी blunder मेरे को लग रहा है अगले 6-7 मिनट में कर सकता है blunder है. So कोई कह रहा है आई एम we'll be ग्लैड माई रेटिंग ready. इज इन 2186. सही में भाई, आई एम सो ग्लैड आई एम नॉट सिटिंग इन बिल गेट्स मैंशन राइट नाउ राकेश भाई. आई एम सो ग्लैड मेरे पास इलॉन मस्क इतना पैसा नहीं है. काश भाई, काश होता यार. Sorry, काश नहीं होता राकेश भाई. थैंक गॉड ब्रो. ये मतलब थोड़ा 2186 थोड़ा पर्सनल हो गया ना मतलब. Our फायर whole आर्म chat को is better than the engine. वो सही है भाई. वो सहाज भाई अभी आए नहीं है, तो फायर आर्म ने टारगेट दूसरा पकड़ लिया है. बट फिलहाल के लिए थिंक वी गोना सी रेजिग्नेशन फ्रॉम प्रग pretty soon. I don't think this game will last more than 3 to 4 moves. Like unless there's some because knight b3, queen b3, a3, everything loses. So you have to allow this, Rakesh bhai. I think that's the only way to play on. But then I can't imagine rook b8 के बाद you will survive for long. There's just no chance. And बोलो बोल रहा है अर्जुन बोल रहा है या अब्दू का गेम दिखाओ. I'm really curious. अब्दू Yep. सत्रो हार जाएगा. Then that totally opens up the tournament, Sahil. Yeah, as of now, Yakubov is still winning, finds the only move, so good chances for him to convert. Let's hope so he does that. Arvind, meanwhile, still playing. We have a few moves there. उन्होंने एक okay, I think अभी भी बार कह रहा है black is better. So wonder if he's going to magically make a mistake here. I don't know what white could have black could miss later on, but फिलहाल के लिए ये position है. And finally, in the Prague game, of course, oh, sorry, in the Arjun game, uh, Rook A2 played. So as of now, Black still planning to harass these pawns. But we have Bishop D1.
So it's not a big deal. As of now, we can easily defend our pawns. तो अर्जुन सोच रहे हैं कि भाई कैसे 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 मैं यहाँ पे इस pawn को attack करूं. सोच रहे हैं. I think knight c4 could be one plan. And but then black I think is planning b5. Maybe that's an instant draw. जितने pawn exchange होंगे उतना Can draw I के take chances ज्यादा. bishop takes pawn? Take a last position when Knight we go there, c4 please. b5 bishop takes pawn ये तो takes मतलब मैं ही knight. रिस्क ले रहा हूँ, ऐसा हो रहा है. देखो, हाँ, हाँ ये तो लेना लॉस्ट ही पड़ है भाई. रहा ये तो लॉस्ट ही है. बिकॉज हमारे पास एक पास pawn है. And rook a3 check. I push your king back. I think this is lost actually. है. Yep, ये yep. Not gonna तो do this. So going back to looks the game tough of for. yeah, yeah. Going to Prague's game. I think the game जहाँ पे Is Ooh, it possible that we won't see an Indian win today at all? possible, totally possible. By the way, Rook D1 played, and now maybe just take on A2 or Rook A8. Both moves are possible, but Rook A8 I think feels okay. Pawn takes A2 feels so natural. Yeah, एक बार मार दोगे. The idea is not to grab on A2 actually, but just to reveal this pawn. And now I हाँ, can pressure this heavily. correct, correct. Rapport मस्त पानी पी रहा है बाय द वे. तीसरी बॉटल रैप सॉरी तीसरी नहीं. या वो तीसरी भी बॉटल है रैपोर्ट. प्रग के अगेंस्ट पानी पी रहा है यार. सही में भाई. प्रग द इन्वेंटर ऑफ द मीम, उसके अगेंस्ट आप उसको ऐसे हरा रहे हो. कोई ना. अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन चैट. यू नेवर नो. यू कैन बी 181 फॉर 0 एंड देन 205 फॉर 5. यू नेवर नो चैट. एनीथिंग कैन हैपन इन लाइफ. या एंड प्रग बाय फिलहाल द वे. भाई हाँ 181 फॉर 0 है ना स्कोर इंग्लैंड का. हाँ या उसमें हाँ. भी कुछ 15 मिनट पीछे दिखा रहे हम लोग. भाई नहीं नहीं नहीं. मैं तुक्का लगा रहा भाई. तुक्का नहीं मतलब इट्स अ वेल एजुकेटेड गेस. ओके ओके, तो ठीक है. अगर आई बी बैक इन जस्ट 1 मिनट. या मैं गेम को रिफ्रेश कर दिया है. या श्योर श्योर. So chat, let's see what are Richie's options. I mean, pawn takes pawn तो एक मार ही सकता है, मेरे को तो लगता है. Then bishop b2 जैसे टेको भाई ने बताया, that's a huge threat. प्रग बोल रहे प्रग छोटा सा ब्रेक ले रहे. 3.5 minutes on the clock for him, so he's still figuring it out what to do. Rappo looks extremely confident, and I think looks difficult by for Indians today. सर रेन डिले. अच्छा विवेक भाई, इंग्लैंड में बारिश, टेस्ट में बारिश हो रहा है. ओके, ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा. मैंने खुशहाल भाई, देयर इज नो चांस रैपो इज डूइंग एनीथिंग लाइक दैट, बट ही इज जस्ट अ सुपर स्ट्रांग ग्रैंड मास्टर. ही प्लेड अ ब्यूटीफुल गेम, तो कांग्रेट्स ऑन हिम. 181 एंड रेन दिल्ली इन इंडिया टेस्ट. ओके, हाउ मेनी ओवर्स टू गो? मतलब कुछ है चांस इंडिया के पास टू विन और टू ड्रॉ, और लेट मी नो. Use Google, okay. Sure. But can he make a comeback though? It looks really, really tough because the pieces are just very badly placed. And pawn takes pawn played by Rappo. Bishop b2 is a huge threat. Prague has to stop this bishop coming to b2 and capturing that, because उसके बाद king has to move. King हटने के बाद then the a pawn pushes itself and that becomes a queen. So Prague has to watch out and has to take control, has to be aware of that threat. He has played, okay, plays queen takes pawn. He's captured the pawn, but now, even that rook file, the open file on the leftmost rank, is gonna be a big problem for Prague, क्योंकि Rapona just queen बाजू में हटा के दूसरा रुक भी ला सकते हैं वहां पे. So that's gonna be super super tough for Prague to defend. Yo, Tico bhai, welcome Okay, back. I'm back. क्या रहा.
So we saw b takes a2, queen takes, oh, queen takes, I thought this would be a good shield, right? Queen takes a2 feels a नहीं, bit बट risky, no? बिशप B2 का वो बहुत बड़ा थ्रेड था. Queen knight d3 then. But okay, he takes with the queen and queen f2 now. And now, chat, I think rook e1 could be a move. Queen h4 simply, yeah. Matlab, why not just grab the pawn? Lots of possibilities. And the queen is tied to defending this pawn now. Yep. Rook B2 is a massive threat. Just so Nidhi bhai, many questions. video. Black. So I know we can't beat Rapport today, but I think उसको ऐसे time में अटका देंगे तो Plug using his flash abilities, as you can see, chat. आज पता है राकेश भाई, एक बार प्लग की क्लॉक में 8 घंटे दिखा रहा था. भाई वो कल वाला उसका शॉर्ट भी रहेगा, रील भी रहेगा एज द फ्लैश, जो गेम के हाँ, कुछ पहले सीन है तुरंत भाई. आके बैठ गया था ना. कुछ सीन है भाई, आज भी देख लो. देख लो, अभी भी टाइम ही रोक दिया भाई प्लग ने. मेरी भाई, कैन वी गो टू द फुल बोर्ड प्लीज, ताकि वो एटलीस्ट हम बोर्ड दिखा पाए. मैसेज कर दिया मेरी भाई को. दैट शुड बी ओके सून. मीनवाइल चैट, क्वीन f2 के बाद रैपोर्ट अटक गए हो बेशक, ही डजंट हैव मेनी मेनी ऑप्शंस. सो वेट कर रहे हैं हम लोग, क्या होगा राकेश भाई. सो फिलहाल के लिए, with Nordirbek losing, with Prague losing, with Arjun fighting for a draw, it feels like कि कोई भी like clear cut winner नहीं निकल पा रहा है यार. या यू डू नॉट एक्सपेक्ट, मतलब Prague to lose 2 games, Nordirbek to lose today. So none of them, like, tournament के लिए it's like one of the best news for the tournament hype. By the way, Arjun is under 2 minutes, but I think chat they have reached the 40th move. I don't think they have this much time. हाँ. So they have gained 30 more minutes on the clock. So nothing to worry there. Don't worry. Like Arjun has more than sufficient time. The only thing is, can he win or not? That I'm not sure about. And that's why you see Black like मुश्किल chilling. लग रहा है. Uh, you needed like more people. Yeah, you need more people, more pawns. You need a couple of more pawns to create some Yeah. chances. But यहाँ पे मुश्किल लग रहा है. But you never know. कुछ वीकनेस तो चाहिए ना, तो उसका ध्यान डाइवर्ट कर सको आप हाँ. ब्लैक का. तो अर्जुन हैज जस्ट नॉट इनफ वीकनेसेस इन द ओपोनेंट्स कैंप टू प्ले फॉर अ विन. कोशिश तो पूरी Yeah. करेगा अर्जुन, बट यू सी, लाइक टिको मेंशन, Sindano looks confident to hold this. Agreed. And meanwhile, chat, one look at the game of Arvind, who's actually, in an interesting position because Queen G5 यहाँ पे देखा था कि E3 check आया था. Bishop F2 Ooh, D3 pawn मार let's दिया. go to Prague's game. क्या 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 क्या? Please. Game, Oh, game Prague has over, game resigned. over. Prague has his. अबे ये क्या है भाई? निधि भाई. अच्छा, ओ हो गया, हो ठीक हो अरे गया. हो गया. बढ़िया. By the way, Queen B3 happened and Rook E3 and he resigned because there is no defense. F3 मर रहा है, Rook A3 check आ रहा है, Queen ज़्यादा हिलती है. तो what a beautiful game by Rapport. Yeah, just absolutely crushed Plug today. 99 accuracy, 9 good moves, 1 brilliancy, just beautiful. Just, I think one of the best games of his career. क्या crushing win था with black pieces, but also very good on Prague. You know, he loses an experienced GM, analyze कर रहा है, सोच रहा है, seeing what he can do better, and I think that is what makes him a great player and a great human being. देखो. I think कहीं ना कहीं पे this is also a learning for Parag कि भाई, this is clearly something like attacking play in terms of this defense or whatever. Attack defense is something he can work on maybe. Like this game was just like Rapport felt like he was another level today. Yeah. Yeah, he was much more at home, Rapport, Yeah. than Prague. Exactly. You said it better, Rakesh bhai. I think these kind of positions, maybe there's something to work on for Prague. And you can see his hands are fumbling right now, just in the pieces. Like he's a bit distraught what just happened. So Prague losing 2 in a row, chat. Can Arjun and Arvind compensate for that with a few wins for us? Let's figure it out. First of all, Arvind, quick look.
This is where we left it. Bishop e3, threatening queen s6. Knight goes back, check, check. And Arvind now has a draw in hand. So, wait, have they drawn? They have Yeah, drawn yeah, yeah. already, That is kya? the blunder chat was talking about. Yeah, yeah. Oh, Let's तो head तुम there. अरे भाई ब्लंडर भी करके ड्रॉप मुझे लगा कम से कम क्वीन ब्लंडर किया होगा ओकी डोप कम से कम. भाई कुछ तो किया होगा मतलब जीत रहा है भाई पीपल सेड ही इज विनिंग बट इट्स जस्ट अ ड्रॉ या Yeah, yeah. but ठीक है draw is good enough draw is good enough I think of course king f8 आता है तो we can give this check and there is no escape from the checks so Arvind draws not the ideal result but he was slightly worse so that's two results for the Indian players Rakesh bhai Pragg loses to Rapport Arvind draws against Vokidov Noterbek completely losing, by the way, against sorry, Yakubov. That's great news. But Arjun, that's where it boils down to now. One game, one man, half a point behind the leaders. Noterbek is losing. If Arjun wins this, he could be in sole lead. Rakesh Bhai. Mhm. Yeah, yeah. That is definitely possible. He will be trying for that, and it's a very, very tough, position for him to convert. But you know, if there is one player you would kind of hope that he converts it, that is Arjun. So Yeah. he looks confident, but Tiko bhai, as you mentioned, थोड़ी weaknesses कम है यार position. And F4 check played. So अगर आप ये मारते हो तो रुक D2 आएगा. And that just leads to exchanges and I think that's not what Arjun wants. So king d3 खेलते हैं and this pawn cannot go anywhere. So it's not really a risk for Arjun yet. You keep properly controlled है. And now maybe again the question for black is how is he simplifying the position or is he? Because there are two approaches for black, right, Rakesh bhai? Either he sits and waits. He let me see what Arjun does or he tries to exchange as many pawns as possible. Both strategies possible. Which one would you take here? Um, I don't know. मुश्किल है. Go after भाई मुश्किल तो है ही b5 भाई also. मुश्किल तो है ही वो तो पता ही है राकेश भाई मुश्किल है भाई आई थिंक वो सिंधारव जी सोच लेंगे अच्छा और बताओ भाई मसाले डिनर में क्या बना है I think ये ना F4 के बाद एक आइडिया दिख रहा है टिको which we have आओ to be aware is ये ना Bishop G4 Bishop C8 is a very interesting plan which was not possible क्योंकि pawn was on F5 so या Sindaro has to be a little careful because once the bishop goes to let's say rook a2 again time pass कर रहा है black bishop c8 now suddenly वो pawn कैसे बचाओगे आप yeah basically you have to play b5 तो now so if you have to play b5 then why not do it क्या हुआ निधि भाई हेलो हेलो मेरी भाई निधि भाई क्या बोले आप भाई क्या चल रहा है यार कुछ तो चिल्ला के निकल गए भाई कुछ समझ में पता नहीं अजीब सा भाई बस दीदी भाई मजे लेते थे भाई ऐसा एज वी नो सो मीनवाइल किंग d3 and now chat it is Sindharov thinking let's see what happens ha now it's back Nidhi bhai it had vanished earlier camera had vanished are you able now it's back yeah chat full pressure again on Sindharov क्या हो रहा है भाई राकेश भाई नहीं बोल नहीं रहे नहीं ये वो जो बीच में हाफ सेकंड के लिए हाफ सेकंड के आगे चिल्ला के गया ना वो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ अच्छा अच्छा Plug is only किंग 20 d3 Rapport बाय has अर्जुन हाँ बट नोडिनबेक हारा के नहीं अभी तक नदरबेक नहीं हारा भाई चल रहा है गेम उसका भी इट्स गोइंग ऑन या उसको भी टाइम लगेगा दे Plug जस्ट is रीच्ड मूव 40 सो Plug is not 2780 chat. Plug is प्रवेश 27 20 yeah 2768 now. So he lost a bunch of rating and he's back to world number 7. And Noterbek, if he loses, then he will also go down to world number 6. But Arjun, of course, if Arjun wins, he goes to world number 3. So lot at stake for the madman. Can he come up with some sort of tricky ideas? I think 2 minute, 3 minute clock पे है, but they have gained 30 minutes. So no time pressure yet. राकेश भाई, I feel कि यहाँ पे अगर actual time ये होता ना,
That would give Arjun some chances. करेक्ट करेक्ट, ये टाइम चाहिए था, बट ये अभी तक आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल क्या दैट दे गेन्ड 30 minutes एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 30 minutes. सो Hmm. आई थिंक सिंदारो का जब भी क्लॉक जीरो होगा या अर्जुन का, देन दे विल गेट, बोथ ऑफ देम विल गेट 30 minutes Yeah. एडेड इसके बाद. Chat wants to see you, निधि भाई. Chat ये दिखाओ कौन है निधि भाई, हमें देखा कौन है निधि भाई. चैट आपको देखा जाती है निधि भाई. तो meanwhile, it would not be easy to defeat Nodrbek. It's never हु easy, इज भाई. दिस It's इनविजिबल निधि भाई? That's my pronunciation. Niri, Niri या bhai, या not Niri. Niri. Nuremberg is Niri. very tough to beat. By the way, he has played something. Ooh, King G5. भाई Interesting move निधि तो by. विदित की वाइफ है. अरे क्या बोल रहे हैं यार. राकेश भाई क्या बोल रहे हो. Anyways, so नाइट okay, ऑफ, back to the अरे चैट back भी to चैट ही बोल रहे हैं, बट एनीवे यार, नाइट F7 चेक. भाई अर्जुन के लिए चांस बन रहा है क्या कुछ? आ यार फिलहाल तो ब्लैक अपने चांस बनाने में लगा है. कह रहा है भाई मैं यहाँ बैठ जाता हूँ जीतरी पे. कभी भी नाइट अगर वॉक वॉक करने जाएगा तो F3 F2 F1 विंस. सो maybe the Black भाई King wants to थोड़ा come to डर तो G3. लग रहा है अर्जुन के लिए. हाँ. यार हाउ डू यू स्टॉप इट? आई डोंट थिंक यू कैन. I mean, it's not a risk if you want नाइट to keep the F3 pieces चेक तो like दे this, right? सकते हो. नहीं, if the pieces stay like this, then it's not a risk, right? Because Black can never push F3 until the knight and bishop are here. But if you move the pieces away, then it's a problem. तो अर्जुन को अगर जीतना है, तो if the king comes to G3, I don't think he can win anymore. It's gone then. I think it's a draw at least. यू नो डोंट वरी, 40 seconds ही है, नहीं है अर्जुन के पास, 30 minutes ऐड हो जाएंगे. सो ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम, 43 मूव्स कंप्लीटेड. सो उसके बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है. चार टेस्ट मैच भी हम बचा लेंगे, गेम भी बचा लेंगे. डोंट वरी, कोई टेंशन, स्ट्रेस मत लो भाई, स्ट्रेस मत लो. राकेश भाई आई थिंक हमें चेस भी ओपन में करना चाहिए. कभी भी बारिश आ जाए भाई बच गए. वी शुड आल्सो प्रे फॉर रेन यार इन ये चेस तो, टूर्नामेंट्स. इस पर बहुत ही सैड गेम है ना, जहाँ पे रेन आ गया और गेम बंद हो गया. ऐसे नहीं चाहिए. हाँ ट्रू ट्रू. एवरी स्पोर्ट इज यूनिक इन भाई. अर्जुन के 27 मिनट कैसे हो गए भाई? ये कुछ तो बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है. 30 मिनट्स मिलने चाहिए था ना अर्जुन को. नहीं नहीं भाई, 30-29 है एक्चुअली, वो गलत दिखा रहा है वहां पे. आई डोंट नो वो कहाँ से उठा रहा है. ये वही क्लॉक है जो प्लग के 8 घंटे दिखा रही थी, तो आई विल नॉट ट्रस्ट दैट क्लॉक. हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि टेस्ट मैच तो नहीं बच रहा, नो ओवर्स लॉस. सो लुक्स लाइक बैड डे फॉर इंडिया ओवरऑल, मतलब नहीं नहीं भाई, बारिश जस्ट पड़ती है इंडियन ना तो स्पोर्ट्स. पिच गीली होती है. और पिच गीली होती है तो बॉल फिसलती है, बॉल फिसलती है तो भाई बोल्ड होता है. वेट करो भाई, इंडिया बचा लेगी गेम. एंड बट ओनली कैन अर्जुन डू समथिंग मैन. अर्जुन का ज्यादा स्ट्रेस है मुझे भाई, वो तो मैच बच ही जाएगा. हाँ यार, आई होप एक भाई रोज एक ना एक इंडियन तो जीत रहा है ना. तो हाँ. मेरे को चाहिए कि एटलीस्ट वो ट्रेडिशन चालू रहे and अर्जुन जीत जाए कुछ तो करके. या बहुत इंपॉर्टेंट गेम चैट. Meanwhile, as we know, Arvind has drawn his game. Prague has lost today to Rapport, who played probably one of the best games of his life, and I would say the best game of the tournament so far, to crush Yeah. Prague with the black pieces. And now Arjun in a equal endgame, playing with the two pieces, slightly practically better, but most likely the game still a draw. Tiku bhai, let's go to Nodirbeck's game. Big update. He is a piece down now. Oh, This is huge. so this is not a theoretical draw, right? Like a fortress or something. Not really. No way. White is winning. White is completely winning. So if But that you know, happens, वो रुक हाँ बिशप वर्सेस रुक आ सकता है इसमें. टिकू. हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू. सो दैट इज ग्रेट न्यूज. तो होपफुली याकूबov कन्वर्ट्स, ताकि नोदरबेक हमसे एक पॉइंट आगे ना निकल जाए. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम,
but I think he will convert this. And standings may Northern will go to, he will stay on 4 points. Maksudlu is already joined Northern on 4 with a draw, भाई and एक Arjun सेकंड, at ये least परम कहाँ से आया? वो 2 गेम जीता परम ना कहाँ भाई. से आया? भाई वो कल 3.5 पे पॉइंट्स आ गया था ना. He was at the bottom of the standings. हाँ, पराग को हराया, उससे पहले किसी और को हराया, एंड नाउ ही इज एट टॉप विद नोदर. सो अर्जुन को ड्रॉ तो चाहिए, जो तो मिल ही जाएगा ऑफ कोर्स. एंड ही विल आल्सो जॉइन नोदर एंड परम इन फर्स्ट प्लेस. Wow. Yeah, so three-way tie होने का chances unless and until Nordenbeck does, yeah, Abdul Sadar doesn't saves the game. So, whew, आज हॉकी में इंडिया जीता, चलो बढ़िया. कहाँ कहीं बस भाई, अब तो स्पोर्ट्स से स्पोर्ट दर दर भटकना पड़ रहा है कि भाई कहीं से कोई गुड न्यूज मिल जाए. by the way, Sai Kamala in the chat और मेरा same question है. What is the status of Arvind's game? नहीं, इट्स अ ड्रॉ. इट्स अ ड्रॉ. मतलब आई नो ड्रॉ हुआ है बट ऑफिशियली तो नहीं, या फिर कैमरास में क्या चल रहा है? कैमराज में किंग दोनों सेंटर में पड़े हैं, सो इट्स अ Have कंफर्म ड्रॉ. वो चेस कॉम पे अच्छा कुछ अच्छा, तो इशू है आई थिंक चेसकॉम मे पे बी. डालना है. Yeah, maybe they didn't repeat thrice. Like they might have repeated a couple of times and like agreed to a draw, and maybe that's why it's not showing it. Which हाँ. issue hoga? But it is a draw, chat. It is over. So the only game going on is the Arjun game right about now. And to be honest, mere hisab se they have enough time, and that's the main drawback. That's why I think maybe you will not see any mistakes, and it should be a draw. But okay, you never know. Chess में बहुत fancy चीज देखी है हमने. True. And Arjun just trying to figure out, knight d7. Yeah, there's also an idea. Tiku, if you can show chat, knight f7 check, king Hmm. bajume, and then you go knight d6. This is a Hmm. risky line. This is what Arjun is about to play something. Tiku, do you think he'll go for this risky line? I mean, if there's any chance of winning, then yes, he will take risks. That's always what he does. That's his style of playing, right? He will take the risk if possible. So that looks like a risky option. You can get the win, but आपके हारने के भी chances थोड़े खुल जाते हैं उसमें. Yep, yep. And now you're moving the king in the center, king e4 by Arjun. भाई मतलब अर्जुन कुछ भी he finds moves जो दिमाग में आती भी नहीं. King e4. Okay. So what's the plan? The plan is knight f3 check and I win the pawn, yeah? Simple plan. Yeah, this is like a No, very good no risk because plan. no, but king g4 hai, knight f3, king g4 actually. So it's not really, because there's no discover attack actually. I Because I can attack the just bishop play anyway. bishop e2 also, no? एक move पहले. Rook a2. Now can I go bishop? हाँ, मैं bishop को c4 में भी ला सकता हूँ, right? But then there is no discover attack. So yeah, king will come to हाँ g4 फिर on the check. को उस Oof. तरफ से खेला था, but yeah, let's see what Norderbeck, what Yamokir plays. Rook a1 on the board, Tiku. Yeah, rook a1 attacking the bishop. And I think this is a Bishop simple e2 played. draw. Players Played, blitzing played, now. played. Yeah. I think the point is ki the only way Arjun kind of wins this if they reach time pressure. I think that's the way. So it's in Arjun's favor if he can just kind of not allow any simplifications, maintain the pressure. Let's dance around. By the way, King f6 only moved for black apparently. What? Yeah, that's fair. King g4 King chat, f6 played. white to play. King g4. What's the problem with King g4? Me. नहीं, आप बहुत आंसर Should I? करते हैं. आप नहीं बोलेंगे, आप बहुत आंसर करते हैं भाई. आपके पेपर में 100 आए थे, बाकी लोगों को बोले दीजिए प्लीज. In Arjun, yeah, Vikram bhai, we checked out that knight f7 line. Was थोड़ा risky. इसके लिए Arjun didn't go for that. Yep, and knight d2 chat would be the discovered check, and यहाँ पे rook को bye bye. So king can't come to g4, king s6 played, and now the problem is if you take on f4, I'm gonna take on b3, and that's a good trade for black. b5 के बाद passed pawn निकल सकता है. So Arjun cannot take on f4. He has to bring the knight back to d2, and उसके बाद we might see another repetition फिलहाल के लिए. Yep, chat, you're correct. Rook d2, rook मर रहा है.
Yeah, and Arjun, I mean, has to be. अरे एक विकेट गिर गई, क्या बात है आई टोल्ड यू चैट, बारिश भाई, आते यू ही आर विकेट राइट गिरती रहेगी भाई। अभी देखो मैंने पता है 2015 2005 और 5 गिली। प्रेडिक्ट किया था कुछ। 225 और 5 प्रेडिक्ट किया था आपने। हाँ हाँ, तो वो देखना वही होगा। अगर ये हुआ ना भाई, एक मेंबरशिप क्वेश्चन तो बनता है चैट के लिए फॉर योर राइट प्रेडिक्शन। वो मैंने किया था, मुझे देना चाहिए ना भाई। हाँ, तो आपके पास है ना लाइफ टाइम, तो आप किसी और को दे दो अभी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ठीक है हाँ। For the knight to play it, so defends the pawn, attacks the rook. Now, rook a1, for example, would be a mistake because I can pick up the pawn and I'm winning or close to winning. So, rook को कुछ, I think rook e1 may be attacking the bishop ताकि वो आप ये ना मार पाओ. करेक्ट। बाय द वे, GW ने चैट जीपीटी से पूछा, व्हाट विच इज योर फेवरेट इंडियन प्लेयर। तो वो Hmm. बोलता है, अर्जुन मोस्ट एक्साइटिंग गेम, Prague is most complete game, Gukesh has ice in his hands and world champion, Nihal Sari needs to clean up just a bit, he's amazing, Arvind is awesome। तो सारे आंसर एकदम डिप्लोमेटिकली आंसर कर चुके हैं लगता फॉर कई बार योर ना फेवरेट इंडियन चैट जीपीटी के पीछे कोई बंदा ही बैठा हुआ है भाई। इतना डिप्लोमेटिक आंसर ही देने हैं। वो तो इंसान भी दे देते भाई, क्लियर कर बताओ ना भाई, हु इज बेस्ट। कोई ना भाई, अभी सब पता लग जाएगा जब जैसी एआई टेक्स ओवर द वर्ल्ड। सब पता जा किसने कितना थैंक यू बोला चैट जीपीटी को। Meanwhile, chat, going to the game again. Still no moves from Sindarov. He has enough, more than enough time on the clock. So no pressure, but full pressure. Yes, like वो नाइट फोर्क भी आ नहीं रहा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ब्लैक टू एक्चुअली ब्लंडर ऐसे इन वन इन अ हम्म। वे। किंग और रुक बहुत दूर है, इनको मिलाप कराओ भाई, तब जाके कुछ फोर्क हाँ शॉट हाँ, लगेगा। एग्जैक्टली। अब गौरव तिवारी बोल रहे लॉर्ड शार्दुल एक ओवर में 5 विकेट लेंगे। कुछ भी हो सकता है चैट, वेट करो। एनीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर, एंड दिस इज एक्चुअली वॉर भी हो सकती है कभी भी यार, आज की दुनिया में कुछ पता नहीं है भाई। बट एनीवेज, फिलहाल के लिए चैट नाइट D2 ऑन द बोर्ड। या राकेश भाई, बोर्ड पे गेम पर व्हाट्स एक नजर व्हाट्स द चालू है, ये लॉन्गेस्ट किक हुआ है। लॉन्गेस्ट गेम यू एवर प्लेड क्लासिकल? तो ग्रेट क्वेश्चन है, पता इतना भी ग्रेट नहीं है भाई। नहीं। मैं याद नहीं है, मतलब 6 साढ़े 6 घंटे खेला था एक बार मैंने। बिकॉज वो तो करके हारते हो ना, फिर तो और ही बुरा लगता है, मतलब इतना गेम खेल। हाँ, this is the kind of game, right, which could last the longest, and then if you lose, it really just makes you mad. Then it really just spoils your entire tournament. Yeah, of course. And it feels like you were like one move away from the draw, but not really as well. Yep, yep. Still no moves. अर्जुन अपने steps पूरे करते हुए, um, अर्जुन का वर्कलोड कल से बहुत बढ़ने वाला है। एंड कल की पेयरिंग बाय द वे चैट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कल फिर से इंडियन प्लेयर्स के ब्लैक होंगे। आज वाइट से दे कुडंट स्ट्राइक। सो कल की पेयरिंग्स है नेपो वाइट विद प्रग ब्लैक। भाई प्रग कह रहा है ये ट्रॉमा खत्म क्यों नहीं हो रहा है भाई? So tough, भाई, ये दर्द काहे खत्म नहीं होता है यार, मतलब। सो And प्रग you हैविंग, could easily हाँ, just play even half a decent game and end up losing that one. क्योंकि या और नेपो ऐसा। ब्लैक्स एंड नेपो वेरी डिफिकल्ट। देन सिंदारो अगेंस्ट अरविंद, इंपॉर्टेंट गेम फॉर अरविंद ऑफ कोर्स। एंड रैपोर्ट अगेंस्ट अर्जुन, तो रैपोर्ट कल जलवा अब अर्जुन के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे भाई साहब। So maybe we would draw for Arjun. Is that, some advanced prediction or some good YouTube skills, Tico? What do you think? I don't know because अर्जुन का बहुत इंटरेस्टिंग है। अर्जुन plays Rapport tomorrow, then he plays a Prague,
Who is एंड देन ही white? प्लेस, हाँ, एंड देन ही प्लेस अरविंद. सो अगले तीनों मैच उसके काफी इंटरेस्टिंग है. रैपोर्ट, प्रग, Oh, अरविंद. basically decides Arjun's tournament, मतलब उनका final या rank next three या games. वेरी इंपॉर्टेंट And this लाइनअप is दैट. round six. मतलब भाई tournament is ending the finish zone कल से from round या seven. या थर्ड, two-thirds of the tournament will be over after the chat. Let's hope so कि Indians still have a chance. नोदरबेग हारते हैं तो चांस बना रहेगा. अगर वो गलती से ड्रॉ हाँ, करते हैं, still chances, but थोड़ा मुश्किल रहेगा. So hoping Yakubov converts that one. Meanwhile उस गेम में अभी के लिए चल रहा है राकेश भाई. He's unable to find a way. I think H4 was a big mistake from Yakubov here. but it is not good news for us क्योंकि अपन तो रूट कर रहे हैं याकूबोव के लिए, मतलब. बट अब्दू सातारो द टूर्नामेंट लीडर, अगर ये गेम बचा पाते देन ही गोज इनटू द लास्ट थ्री राउंड्स विद अ हाफ पॉइंट लीड. सो बिग Exactly. गेम. I think he दिस इज. spoiled it. H4 is a bad move because now black at some point can force through an exchange of pawns with G5 at the right moment. And इसका मतलब draw के chances बढ़ते हुए. So I think Yakubov, he might get a rook bishop against rook. I think that's very likely, Rakesh bhai. That is very, very likely here. Yeah, and I think if I remember correctly, he was defending this against Vichy sir in the FIDE World Rapid Team Championship. Just अच्छा. just Hmm. 2 weeks Hmm. ago. Hmm. So भाई उसने तो ब्लिट्स में डिफेंड किया है, ये तो क्लासिकल है. हाँ. So don't या expect, yeah, no, Abdul Sattar to be losing that. या जो विशी सब आर्बिटर आया था वो रील थी एक फेमस है ना. हाँ 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 हाँ, वही वाला. करेक्ट वो या. वाली. Meanwhile, okay, still no moves from Sundarov. What will be expected score for first place? So अभी के लिए let's assume Nudlbek does draw. Assume कर लो max 4.5 out of 6 हो सकता है. So I'm gonna say last 3 rounds, 2.5, 2 points मान लेते हैं. I think 6.5 will be the winner score. ऐसा मुझे लग रहा है. Likely मैक्स. because मैक्स. हाँ उससे ऊपर मुश्किल है. क्योंकि मान लो अगर वो हार जाता है तो बाकी के 3 लोग 4 पॉइंट पे होंगे. 2 out of 3 इज गुड स्कोर. सो पिक्स मोस्टली, अगर नोडिर बैक रन विद इट देन 6.5. या या फिर अर्जुन रन विद इट. हु नोस भाई. अर्जुन का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है बंदा. या दैट इज आल्सो पॉसिबल. चैट, हु डू यू थिंक विल बी द टूर्नामेंट विनर? आई थिंक ऑप्शंस बहुत है, बट परम मकसूदलू को नहीं बोलना चाहिए. ही स्टिल इन फर्स्ट प्लेस. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो चैट भाई, कुर्सी में दर्द हो, थोड़ा दर्द हो रहा है हमको पोस्टर में बैठे बैठे. भाई गलती कर दो भाई, फिर नहीं बैठना पड़ेगा भाई, गलती कर दो. भाई और मतलब पिछले 3-4 मूव बहुत फास्ट हुए एंड सडनली अभी सिंदारो इज थिंकिंग, मतलब दैट लुक्स या थोड़ा वियर्ड. I guess rook e1 is the move, right? Rook e1 is the main move. You attack it here. Now king f3 I have to play, let's say. And let's say you So just what pass if you the move. don't? Yeah, Huh. yeah, yeah. Like king The f3? point is, Hmm. yeah, sorry, even before that, Tiku, rook e1 खेलना जरूरी है क्योंकि व्हाइट का थ्रेट है किंग टेक्स पॉन. Yeah. तो आप रुक ए1 या टाइम पास कुछ नहीं कर सकते. Yeah. Rook b2 भी एक move है. तो I think it's the same idea, but now king d3, I think. And हाँ, ओके. but the rook is getting a bit stuck, yeah. Limited moves for the rook now. So maybe rook e1 is a bit better. It's a bit हवा ज्यादा आएगी भाई, कपड़े खुले पहनो. ओके. भाई कपड़े पहनो खुले. एंड फिलहाल के भाई लिए चैट. कुछ भी हाँ ना, मतलब चैट भी ना. वन मोर विकेट गॉन, क्या बात है. भाई, ओ मेरी ओ प्रिडिक्शन सही ओ होने वाली है माय भाई. आई गॉड. टोल्ड यू. भाई देख लेना तुम. नहीं नहीं नहीं, अबे एक ही विकेट नहीं, एक नहीं गिरा यार. टू जीरो गिर सिक्स गया फोर टू. टू बट टू मेरे डाउन. मेरे गूगल पे तो कुछ नहीं हो रहा है. भाई गिर 2-0. गया भाई. गिर गया भाई, वही तो कह रहा हूँ. 2-2. भाई भाई 225 फॉर 6-5 मैंने कहा था. लेट्स सी. फिलहाल के ओ लिए माय गॉड. भाई चेस को भी करने को मिल जाए. ओ माय गॉड. ओके चैट, फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन. Oh my God! Sintarov has just blundered the game away. भाई visualizing it, भाई manifesting it. Let's see.
Manifestation. Come on. अबे नहीं बे. Not that Pope. By the way, he's about to play, I think. And rook e1 seems to be the move. Basis how he was touching the rook, but he holds his hand back. Can we go full screen, Levi? Maybe if you have the meeting, the full screen रख दो. Rook even played. Yep, Best yep. move by the young Sindarov. So now Arjun, I think, has to take a call, right? I think he has to play quickly as well. Let's put Sindarov under some time pressure there. थोड़ा बहुत force करते हैं सोचने के लिए. Yeah, King F3 very quickly played. I like that कि time बिल्कुल waste नहीं किया. And now my threat is to move the bishop and take the pawn. So how does Black tackle this? How does Black tackle this is the question now. मैं अगर किंग से रुका तो लाइक किंग g5 फॉर एग्जांपल. King where राकेश भाई? Oh नहीं नहीं, किंग g5 सोच रहा था, but that allows you to get in 94. Okay, Arjun still sitting confidently. I'm not sure if he will be able to convert this one. He actually feels very confident to convert this. Material भी काफी ज्यादा equal है ना, मतलब there's nothing really. And you guys, if you're just joining us, Prague lost today and Arvind drew in round 6. Come on, come on, come on. Oh, Noderbeek is back. Really? भाई क्या बात कर रहे हो यार? ड्रा मत. नहीं यार, आई थिंक इट विल बी रुक बिशप अगेंस्ट रुक. आई थिंक वही मैंने बोला ना, रुक बिशप रुक होगा एंड याकूबोव विल हैव सम चांसेस स्टिल. So don't worry. Let's. That game is not under control. I mean, not any game is not under control. But yeah, शो होगा देखा E7 जाएगा. played by best move in the position. बहुत ही Yeah. उम्दा खेल रहा है. Come on. My root gone. What the hell? 211 for 3. Are you क्या kidding बात me? कर रहे हो भाई? मेरी प्रिडिक्शन सही हो रही है भाई. भाई पहली बार जिंदगी में टिक होगा, मतलब आई डोंट नो, आई एम ट्रस्टिंग गौरव तिवारी भाई जी मेरे को ब्लाइंडली. मैं आई द हीरो ऑफ वो इमरान हाशमी की मूवी. अभी जन्नत. गाना भाई गाना बजेगा क्या मेरे बैकग्राउंड में पीछे? भाई भाई साहब व्हाट, नोडिरबेक हैज ब्लंडर्ड. क्या बात व्हाट, कर रहे हो? नोडिरबेक इज लूजिंग. नहीं अच्छा भाई. ये भाई, ये दोनों का नाम नोडिरबेक है. दोनों का नाम होते हैं. ट्रू तो ट्रू ट्रू. भाई चैट यार. भाई अगर या 225 आई से डोंट 5 हो थिंक गया. हाँ भाई 225 में आ गए थे. मैं तो बोलता हूँ 1 साल की मेंबरशिप देनी चाहिए चैट को. भाई मुझे मिलनी चाहिए भाई. कम से कम मैं अवध भाई से पिज्जा तो मांगूंगा भाई, इतनी बढ़िया प्रेडिक्शन की तो स्ट्रीम पे. कम से कम 20 लोग तो एक्स्ट्रा इसलिए बैठे हैं स्ट्रीम 211 पे. फॉर 2 ही दिखा रहा है. हाँ अभी 2 ही दिखा रहा मेरे है. को 211 फॉर 2 दिखा रहा है. हाँ चैट बट कोई मुश्किल है भाई. अपडेटेड स्कोर फेक, नो विकेट. है यार चैट में तो पिज्जा का फ्लेवर मतलब चूज भी कर लेना कौन सा पिज्जा खाने वाला हूं मैं. बट ओके, नाइट C4 प्लेड बाय द वे. सो नाइट एंगस अटैक्स. मैक आइसैक बोल रहा है, सॉरी टीकू, मैक हाँ हाँ. एंगस मैक आइसैक बोल रहा है, गो टू द अदर गेम. व्हिच गो टू अदर दी गेम? अदर गेम. नोडिरबेक वाला. भाई पर कुछ हो नहीं रहा था We यार. can, yeah, nothing happening. Knight c4 on the. Let's come back या instead. सो पॉन Knight अटैक एंड नाउ c4. I think it's forced, right? Now you have to play B5, I think. If you sit around, I will take this pawn, I will take this pawn, and then you resign. Yeah. I think they both know it. Draw incoming, Tiku. Yeah, Sindarov pulling up his chair. I think finally he gets that moment. I mean, I think he has given this pawn is not even as important as long as you get something in return. Whether that means getting exchanges. Yeah, he's touching the B pawn, about to play B5.
And that is the best बट move in the देखो position, chat. एक क्वेश्चन है, B5 pawn takes, Hmm. pawn takes pawn, knight takes A5 मारा तो, And king d6 apparently. oh, that is, bishop takes B5 भी मर रहा है. And king d5. Basically, Oh, d4 pawn mar raha hai. And if you play knight B5 c6 to played, save this, B5 then rook played e3 kickoff. check. Yeah, but it Yeah, barely yeah. holds on. It barely holds on, Rakesh bhai. Like if it takes, your line is correct. Like you see how knight a5, king d6 only move. Bishop b5, king d5 King only D5 move. only move. Knight c6, rook e3 only move. So they are very only moves, but it just draws by force though. Oh. And what? Okay, and Chad, I cannot play knight takes pawn pehle because then black will capture on the side. I recapture and then rook a1. Rakesh bhai, that's a blunder. What? अगर ये मार No दिया, way. pawn No way, takes, Chad. rook k1, knight c6 check, king let's say d6, and bishop b5. Bishop White b4. wins. And then So you take on f4 also. yeah. So in this position, pawn takes cb5. नहीं क्या देखे थे हम डायरेक्ट देखे थे ना यहाँ पे आई थिंक Knight f5. हाँ 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 हाँ. knight a5 पे king d6 is the only move to hold. Any chance you think Sundarov has missed that? Any uh, chance? I mean I hope so. Chance तो है ही of course. I'm hoping he has missed it, but and which one would you go for, Rakesh? I think I will go for knight a5 maybe. Because अगर वो और winning है तो knight a5 खेलूंगा ना. नहीं मतलब king d6 is just a draw ना तो like you have ab5 or you have knight a5 both options both have different variations because ab5 में वो forcing line है like king d6 king d5 और इसमें it's king d6 directly so different ways to draw basically. Somehow Nudibek always comes back in lost position the opponent doesn't kill him of course यार भाई मारना थोड़ी है बंदे को. फिलहाल के लिए Yeah, but अर्जुन. that's a great point that he makes. Yeah true. एक टॉप लेवल प्लेयर को ना भाई बहुत बारी हराना पड़ता है. Like they just keep coming back. Yeah. तभी मैं पहली बार में हार जाता हूँ. बार बार नहीं हारता भाई एक ही बार हारता हूँ मैं. Hmm. अर्जुन चलने वाले नहीं है ओके. Almost. I think knight a5 तो मारो यार. Like you never know. Sundar just ऐसे भाग भागते आया और तुरंत उसने मार दिया pawn takes pawn. Then you are suddenly winning. Ah, he takes on b5. No, pawn takes pawn. Okay, I mean, I think either is a draw, so Arjun chooses one option, takes. Immediately recaptured a knight a5. You have to take. And now king d6 only move played in a second by black, by the way. भाई क्या बंदा है यार. उसने देख रखा है भाई. उसने देख रखा है सारा. King f2 would be a bad move, Chad, because rook will just go to a1 and आपने king के ऊपर pawn के ऊपर छोड़ दिया. You don't want to play king f2. Like there's no purpose there. I can just put the rook on a1 in any position you play. So yeah, it's going to be a draw soon, I think. You guys always try Yeah, to bishop find takes only winning. pawn. Shadow Bhai, that's what Arjun is also trying to do. So, I mean, isn't that the purpose? Sorry, Rakesh Bhai, yeah. Yeah, that is true, but जो आपने बोला, but yeah, bishop b5 और king d5 only move. Rook e3 check अगर आपने पहले खेला, that's lost, but yeah, king d5 found by Sindarov. Yeah, rook e3, king f4, you can't take here, so there's no point. King d5 first. And if you take here, I take here. And Rakesh, first glance लगता है शायद कुछ हो सकता है यहाँ पे नहीं? नहीं, but इसके लिए तो दो बार ही मुड़ के देखना चाहिए ना चीजें. फर्स्ट ग्लांस में तो गलत ही लगता. नहीं, what if I But play yeah, I bishop think c4? just How do you play this? can I just go like king c3, rook a1, King rook c3. a3. Yeah. King c3, okay. I bring the knight to c. अच्छा, you just want to play rook b1 and takes ना? अच्छा, कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो actually. एग्जैक्टली हाँ. और अगर आपने किंग रखो नहीं लगाओ पोजीशन, एंड अगर आपने यदि
नाइट C6 के बजाय किंग F3 खेला, तो मैं खेलूंगा रुक A1। हम्म हाँ, नाइट को ढकेल के फिर रुक A3 और कह के बाद दूंगा। नहीं नहीं, फिर तो नाइट हम्म C5 किंग B। हाँ, हो तो जाना चाहिए। मैं तंग कर रहा हूँ किंग। बढ़िया इट्स अ ड्रॉ या इट्स अ ड्रॉ फर्स्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राजू भाई। NM and IM expecting NM and IM with an engine expecting Super GM to miss move भाई engine भी हमारे हेल्प के लिए है so that's why we are stronger भाई technically भाई वो मतलब 800 प्लेयर टेलिंग NMN आई एम मिसिंग यूजिंग इंजन, वो भी है। ओहो स्क्रिप्ट ही बदल दी भाई पूरी पलट दी राकेश भाई कम ने बैक। नहीं नहीं, दोस्त है अरे हमारे। भाई है भाई। ब्रदर भाई को सुना ही सकते हैं। so Arjun आई लव द final एक बैंटर। या Arjun I think final think ले रहे हैं यहाँ पे I think this is where he starts to just take that final thought कि कोई last trap है क्या is there something else here or is it just over so once he completes this thing I think we will see the result which is likely going to be a draw टिकू भाई एंड चैट, टेल मी वन थिंग, लाइक हम सबने देखा ऋषभ पंत ने सेंचुरी मार के वो समर सॉल्ट सेलिब्रेशन किया। वुड वी एवर सी दैट सेलिब्रेशन और समथिंग लाइक दैट इन चेस, कि भाई अर्जुन ने कुछ मारा और भाग भाग के ऐसा सेलिब्रेट कर। भाई एक टेबल मारा था एक बंदे ने उस पर पूरी दुनिया उड़ गई तो आई एम नॉट श्योर बट इन टर्म्स ऑफ आई थिंक गुकेश डिड डू इट नो लाइक ही डिड एक्चुअली डू बंजी जंपिंग सो टेक्निकली उससे या सेलिब्रेट तो या किया एंड वो अलग बात है हम लोग का वीडियो नहीं है वो तो वो अलग बात है बट या ही डिड डू बंजी जंपिंग एंड आई मीन मैग्नस जंप्ड इन अ पूल सो मुकेश नेक्स्ट लेवल पे लेके गया उसको and I'm very like हाँ I'm glad he did not repeat Magnus's thing like he did his own thing that's so nice actually लोग याद रखेंगे उसको the world champion या who या you know went bungee jumping जीजा जी फ्री स्टाइल चेस में 2900 प्लस हो गए भाई। जैक्स कमेंट्स आर ऑलवेज फनी बाय द। yeah मंदिर भाई टिकू मजे इज अ लेते हुए जीएम विदाउट इंजन, क्या बात है। प्रांजल भाई आल्सो लव्स यू टिकू भाई। भाई And हम trades incoming. हाँ Let's stick to the board and then या come to chat. बाय द वे इंजन की रेटिंग आई थिंक 3500 3600 होती है ऑन एवरेज राकेश भाई आई एम गेसिंग Correct, correct. Yeah. सो इंजन की रेटिंग अगर तुम 3500 भी मान लो एवरेज इंजन Uh-huh. दैट इज 700 पॉइंट्स ahead ऑफ कार्लसन एंड कार्लसन और मेरी रेटिंग में 650 पॉइंट का डिफरेंस है सो टेक्निकली इंजन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्लसन इज स्ट्रॉन्गर देन मी तो भाई आई डोंट नो भाई नो नॉट श्योर इंजन मेरा भाई है रे Yeah. छोटा भाई है भाई साथ में हम लोग पले बड़े हैं King D4 on the board now, like we should. I think uh, Rook will come and capture, give sacrifice itself for the B3 pawn. या Tindaro looking super confident, घूम रहे, chill कर रहे, and Arjun just wondering कि भाई कुछ चांस था या इनफैक्ट अर्जुन के खिलाफ चांस था Tindaro के पास with the bishop H4 यप line. यप नीडेड लॉट ऑफ करेज वो नहीं निकाल पाया उस मोमेंट पे एंड अर्जुन को अटैक करने का मौका मिला बट दे वाजंट रियली अ मोमेंट आई थिंक एक ही मोमेंट था व्हेन अर्जुन मेड अ स्लाइट एरर आई थिंक दैट वाज रूक एच 8 जब उन्होंने चेक दिया था उसके अलावा कोई मोमेंट था ही नहीं जहाँ पे एनी चांसेस नाउ किंग C3 followed by rook B1 is an elementary draw I think yeah Yeah. played I think we can see the result in the next yeah 30 seconds. Yeah, bishop c4, and now rook b1. Simplest way. And chat, that will mean a draw for Erigesi Arjun. He will join the leaders, Param Maksudlu and Abdul Salam Nodrbek, on 4 points. And now it's all about whether Nodrbek can win. वो हम कल देखेंगे, of course, we'll get to know. But Arjun का game draw हो चुका है. Rakesh bhai, not a great day for, I mean, this not a bad day also, like because Arvind drew, but not a great day also. Yeah, 1 out of 3. 2 draws, 1 loss. Yeah, 1 out of 3. Not the best score, but yeah, tomorrow we go again. Last 3 rounds of the tournament going, and we'll meanwhile hope कि Abdul Sadarov, you know, hold ना करे वो position.
Otherwise, he will be in the sole lead of the Yeah. tournament at 4.5 points. Yeah, Arjun, meanwhile, doing some analysis. I think they're going to that attacking line with H4. जब तक के लिए मैं नोदरबेक का बोर्ड लगा दूं चैट, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली लॉन्ग गेम. कम से कम 1 घंटा और चलेगी ये. बिकॉज वेरी लाइकली वी गोना हैव बिशप रूक अगेंस्ट रूक, तो बहुत क्रेजी है. एंड दे यू सी It अर्जुन would ऑन टॉप. be super fun to commentate on this. हाँ राकेश भाई, आई थिंक ऐसा करो, ये तो मैं निकलता हूँ. राकेश I भाई, mean, I would also आज तो rather see, yeah. आज तो एक ही स्ट्रीम है. कल से अभी इतना कुछ करने के बाद एक और स्ट्रीम चालू है 1:30 बजे तक. Oh, that's tough, yeah. That's सो राकेश भाई, super कल आ tough. जाना प्लीज दोनों स्ट्रीम्स पे. So meanwhile, chat, you see the results now. It's two draws, and we three draws. Sorry, one loss for Prague, and of course, Noderbek's fighting each other right now. Chat, thank you for joining. I think a decent day, not a great day for Indian players so far. And of course, cricket maybe India struggle kar rahi hai. Hopefully, they save that match. And chat, tomorrow we're gonna be back. And not to forget, tomorrow the Bullet Chess Championship also starts. So कल हम आएंगे Yeah, yeah. 3:30 पौने 4 बजे पहले इस गेम के लिए, उज्बेकिस्तान चेस के लिए. और फिर हम रात को आएंगे, रात को आई थिंक 9:15 बजे के आसपास फॉर द बुलेट चेस चैंपियन. राकेश भाई, क्या लग रहा है अर्जुन कैसे कल मैनेज कर पाएंगे दोनों? 100%. He is a professional and, you know, वो बचपन से करते आ रहे हैं. So I don't think he should face any problems. But yeah, 3 Indians playing in the Bullet Chess Championship. Round 7 of this event also. I'm super excited. Thank you so much, chat. ज्यादा देर like मार के जाना chat, and we'll see you tomorrow. And Tigo bhai, take it away. Yep, thank you chat. बहुत मजा आया इस बात करके आज chat, and we are going to see you tomorrow. कल hopefully we'll see some wins from Indian players. And Prag कैसा खेलते हैं बहुत जरूरी है, because tomorrow he plays, Nepo, important match. And Arjun, of course, the leader of the event among Indians, can he strike tomorrow? He plays, I think, Rapport, getting Prag's revenge from today. Then he plays Prag, and then he plays Arvind. So Arjun के matchups बहुत exciting. Thank you Rakesh bhai. Thank you Niri bhai. We're going to see you tomorrow with 2 broadcasts and हमारे फटे हुए गले. Bye bye chat. Take care and good night.